Yes, please start, sir. Thank you, Brajesh ji. Uh, good afternoon to all of you, our guests and our respected professors and research scholar. Our today's topic is One Day National Conference of Multidisciplinary Research in Tribal Development, Issue and Challenges. Uh, our today's speakers, Dr. Jiten Kumar Singh, Registrar, Jharkhand State Open University, Ranchi, Jharkhand, India, and Advisory Board of Member SSMWA. Our one guest, Dr. Jajveer Singh, Head of Department, Associate Professor, Department of Swasthvitra and Yoga, Lal Bahadur Shastri Mahila Ayurvedic College and Hospital, Bilaspur, Haryana, India. Executive Council Member, SSMWA. Professor Sunil Paraji Tambe, Principal Fine Art, SSVPS School of Art, Dhule, Maharashtra. Dr. Nikhil Narayan, Assistant Professor, Department of English, Patna Women's College, Patna, Bihar. Dr. Mahendra Kujur, Assistant Professor, Department of English, St. Xavier College, Maharav, Dumka, Jharkhand, India. Dr. Rakesh Singh Pakilal, Assistant Professor, Dr. Baba Sahab Ambedkar, Sido Kanu Murmu, Dalit and Tribal Studies Center, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha, Maharashtra. Executive Council Member of SSM. Today's conference uh, topic is tribal development. This conference is supporting Institute of Social Science and Management Studies, Janjati Shodh Peeth, Social Science and Management Welfare Association, रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जबलपुर मध्य प्रदेश। इन सभी के सहयोग से आज का हमारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला जनजाति विकास मुद्दे और चुनौतियां हो रहा है। इसमें हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारे आज का टॉपिक है जनजाति विकास। हमारे देश में जनजाति बहुत बहुलता है। हमारे देश की सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टू 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जो कि अब बढ़कर हमारी कम से कम 11 करोड़ के 10 करोड़ के लगभग थी, जो आज बढ़कर 15 करोड़ के लगभग होगी इस सेंसस के लगभग। आज ट्राइबल से हमारा इंडिया बना है, क्योंकि ट्राइबल है तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में जितना भी सोशलिज्म से लेके सब चीज से जुड़ाव है। ट्राइबल हमारी देश की टोटल नेचुरल चीजों से लेके हर जगह जुड़ा हुआ है। वर्क फोर्स भी हमारी ट्राइबल की है। तो ट्राइबल से रिलेटेड हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे हमें देखना होगा और उन चुनौतियों का हमें सामना करते हुए एक सॉल्यूशन निकालना होगा। ट्राइबल समाज की सबसे बड़ी समस्या है एक उनकी डिस्प्लेसमेंट। आज हमारे देश में विकास बढ़ रहा है, विकास बढ़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही। विकास होगा, लेकिन उस विकास के साथ हमारा जो वन क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, ट्राइबल के बंधु हैं, उन सभी को वहां से डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। वहां रोजगार से लेकर सभी चीजों, उनका सामाजिक संस्कृति का क्षरण होता है, सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती है। तो सबसे पहली समस्या तो उनकी है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी है एजुकेशन। ट्राइबल का हम देखते हैं हर साल भर्ती और सब खुलती है, लेकिन उनकी पद खाली रह जाते हैं। क्यों खाली रह जाते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो इतना अच्छा पढ़ नहीं सकते हैं। सब चीजों की समस्याएं हैं, सरकार की योजनाएं बहुत है, लेकिन उन तक प्रभावी रूप से ट्राइबल के पास पहुंच नहीं पा रही है। तो शिक्षा के कारण भी वो हो रहे हैं। दूसरी है कि ट्राइबल हमारे स्वास्थ्य, उनको स्वास्थ्य के लिए भी प्रॉपर हमारे सही जगह पर, हमारे जितनी भी ट्राइबल जगह है वहां पर स्वास्थ्य संस्थान बहुत कम है, इसलिए वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। जैसे कि बच्चे कुपोषण से ग्रसित रहते हैं। तो ये समस्या या सिकिल एनीमिया से लेके बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती। तो इन सब प्रकार की हमारी बहुत सारी चैलेंजेस है।
इन सब चैलेंजेस को हमारे को देखना है, ताकि हमारे को 2047 का जो विकसित भारत बने, उसके लिए जनजाति विकास भी बहुत जरूरी है। बिना जनजाति विकास से हम कहीं नहीं कर सकते हैं। तो जनजाति के लिए हमारे को एजुकेशन से लेके हर चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, जो एक तरह से हमारे को डेवलपमेंट में उनको पार्ट बनाना पड़ेगा। यदि हम उनकी जगह से, उनकी क्षेत्र से उनको हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, या तो हमारा कोई सब नेचुरल सेंचुरी बना रहे हैं, या कोई सी फैक्ट्री लग रही है, या खनन हो रहा है, तो क्यों ना हम उन जगह उनको उस पार्ट में, डेवलपमेंट में उनको भी हिस्सा बनाएं, हम उनको भी पार्टनरशिप दें, क्योंकि वो उनका खुद का स्थान है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हम आज इसी कार्यशाला में हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब मैं कार्यशाला का शुरुआत करते हूँ। कार्य के मुख्य स्पीच के लिए हमारे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, रजिस्ट्रार, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, आपका वेलकम। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। सभी विद्वान साथियों का और जिनके सहयोग से ये इतने बड़े पटल पर, ऑनलाइन पटल पर हम पूरे देश को एक साथ जोड़ने की जो परंपरा, जोड़ने की जो क्रिया, जोड़ने की जो सिलसिला ब्रजेश कुमार जी का और उनके तमाम सहयोगियों का, SRF फाउंडेशन का, जिनके सहयोग से हम देश के विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न हिस्सों से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सभी जगहों से लोगों को जोड़ने का जो यह कृत संकल्प है, मैं सबका बिरसा मुंडा की धरती, झारखंड की धरती से हम झारखंड जोहार करते हैं और सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष, कल ही की डेट से हमारे झारखंड में सरकारी छुट्टियां घोषित हुई और यही एक विशेष मुद्दा रहा है। बिरसा मुंडा का जन्मस्थली हमारे शहर के मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनके अथक प्रयास से जनजातीय विकास और इनके कौन से मुद्दे हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं, एकदम ज्वलंत उदाहरण, ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो आज हमारा जो प्रमुख ऑर्गेनाइजर, जो संयोजक, जो महाविद्यालय, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अवकाश के दिनों में और ऑनलाइन मोड में जोड़ने के लिए, ऑनलाइन मोड में जोड़ने के लिए देश के तमाम विद्वान, शिक्षक साथी, शोधार्थी सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि सर ने अभी बातचीत कर रहे थे कि नहीं, देश की सबसे ज्वलंत मुद्दा आदिवासी का जो विकास नहीं होने का, या इनकी जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जल, जंगल और जमीन, जिसके नाम लेने से ही आदिवासी न चाहने के बाद भी वो एक दूसरे के करीब आने का भरसक प्रयास करते हैं कि आदिवासी का सबसे अहम मुद्दा, और पूरे भारतवर्ष में यदि हम आदिवासी की बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं, तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 705 से 710 तरह के ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, जिनकी लगभग एक जैसी समस्या है। वह समस्या, वह जो मुद्दे हैं कि हमको विकास चाहिए, विकास चाहिए तो विकास के क्रम में हमको जमीन चाहिए, विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, तो उनके लिए भी हमको जमीन चाहिए। लेकिन जमीन के बदले में चूंकि उनका एकमात्र जो जीविकोपार्जन है वह अपना खेती बाड़ी करना, शिकार करना
जंगलों के चीजों को ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना। तो अब हम देखेंगे, जैसा अभी सर बता रहे थे कि इनकी सबसे बड़ी जो मुद्दा है, इनकी जो सबसे बड़ी चैलेंजेस है, वह चैलेंजेस क्या है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि विस्थापन, तो विस्थापन की एक जबरदस्त नीति होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक विस्थापन अगर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम सबको या भारत सरकार के तमाम महामहिम को ये चाहिए कि यदि हम यहां से दूसरे जगह उनकी जमीन ले रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये हमारी 100% सबका दायित्व बनता है कि हम उनको पहले जमीन के बदले जमीन दें, जमीन के बदले नौकरी दें, जमीन के बदले उनको बसने, रहने या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी मुद्दे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हर जगह पर समान रूप से, ताकि हम यदि उनका जमीन लेते हैं, हम यदि उनकी जमीन को विकास के लिए ले रहे हैं, तो प्रॉपर उनको बसाना ये हम सबका दायित्व बनता है। तो पूरे भारतवर्ष में यह एक जबरदस्त मुद्दा है जो विस्थापन। डैम बनाना है तो सबसे बड़े भूभाग पर ये जल, जंगल, जमीन जो जब हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे आदिवासी भाई बहन पर इसका असर पड़ता है। तो ये विस्थापन एक जबरदस्त मुद्दा है। दूसरी जो हम बात करेंगे विकास की, तो शिक्षा व्यवस्था पर भी भारत सरकार को, राज्य सरकार को, हम सबको, हमारे जो शोधार्थी, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको चाहिए कि आदिवासी का हक, आदिवासी का शिक्षा व्यवस्था, आदिवासी का चिकित्सा व्यवस्था, उनके लिए विस्थापन का जो मुद्दा है, उनके यहाँ जो बच्चों की एजुकेशन का जो रेशियो है, उसको हम कैसे आम लोगों की तरह, हर लोगों की तरह, सामान्य लोगों की तरह हम उनके बाल बच्चों का भी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग या और भी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, ये उनके जगहों पर भी जाकर अवस्थित कराना है, उनको जागरूक करना है। क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या वाले लोग हैं वह आज भी जंगलों में, बीच घनघोर जंगलों में वो रहना पसंद करते हैं। आम लोगों से वो दूरी बना करके इसलिए रहना चाहते हैं कि वो हम लोगों को, क्योंकि हमारा जो घर है, वो हमारा जो राज्य है, ये बाहुल उन्हीं का है। यहाँ पर जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है और यदि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यदि स्थिति की बात करेंगे तो सामान्य से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरे मित्रों, क्या इस पर ठहर करके इस तरह के यदि जनजातीय विकास की बात अगर करते हैं, इनके मुद्दों की बात करते हैं, इनकी चुनौतियों की बात अगर करते हैं, तो सबसे पहले हम सबको ये वैश्विक मंडल पर हम सबको इस पर क्या करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। और बहस सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से नहीं। हम चाहते हैं कि इसका विकास जमीनी हकीकत पर हो। इनके जो जहां पर इनका वास होता है, सुदूर जंगलों में जाकर बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, खेलकूद की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था इनके घर तक पहुंचे। यह बहुत अहम मुद्दा हो गया है और ये आप धीरे धीरे जागरूक होते चले जा रहे हैं। इनके बीच से भी एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच सब लोग आ रहे हैं। और अब यह सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात नहीं, यह देश की बात नहीं, अब वैश्विक पटल पर वो अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो महिलाओं की स्थिति है। आप देखेंगे
कि महिलाओं की जो स्थिति है, जब प्रसव और पीड़ा की बात करते हैं तो सुदूर गांव में, चूंकि इनका जिंदगी जीने का जो अंदाज है वो हम और आपसे बिल्कुल अलग थलग है, इसलिए वो आज भी हमारी सुविधाओं को नजरअंदाज करते हैं। वो हमारी बुनियादी सुविधाओं को भी वो लेना नहीं पसंद करते हैं, हम देना भी नहीं चाहते। इसलिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरे देश भर में जिस तरह से इसकी और चीजों की हम जो जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी इन तरह के कार्यक्रमों को, और खास करके ब्रजेश जी के पूरे टीम को मैं कोटि कोटि साधुवाद देना चाहूंगा कि जो देश की सबसे अहम मुद्दे हैं वो सब मुद्दे को लेकर, और ये हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग, जिनका सबसे बड़ा भूभाग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति में हम सबको अच्छा फर्नीचर चाहिए, तो ये लोग क्या करता है कि जमीन को बचाने का काम, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि नहीं पेड़ पौधा नहीं काटने देंगे, तो ये सब प्रकृति को बचाने का काम करते हैं। जनजातीय विकास कि नहीं, अगर हमको ऑक्सीजन, मैं भाई साहब, मैं सभी विद्वान साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक समय था, 20-21 साल की बात आप जब करेंगे तो हम शुद्ध हवा के लिए तरसते थे, और अपनी आंख के सामने अपने मित्रों को खोते हुए मैंने देखा है। तो पूरे दुनिया की एक जो ज्वलंत मुद्दा है, वह मुद्दा क्या है कि हमको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, और हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए हम करने के लिए नहीं तैयार हैं। तो वृक्षों को बचाने का काम, पानी का संरक्षण करने का काम, सब काम हमारे आदिवासी भाई बंधु लोग करते हैं। तो यदि हमारी जिंदगी की सबसे अहम मुद्दे, हमको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्धता का परिणाम, शुद्धता का परिचायक हमारा आदिवासी समाज है, और इनके पास है, तो इनकी समस्याओं से भी हम सबको रूबरू होना चाहिए। जितनी सुविधा हमको चाहिए उतनी सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए। उनको भी, उनके पास जबरदस्त बेरोजगारी की समस्या है, जबरदस्त आर्थिक समस्या है। विस्थापन तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इमीडिएट यदि कोई बीमार पड़ते हैं तो वो जंगली जड़ी बूटी इत्यादि का इस्तेमाल करके, क्या उनके गांव में बीच जगह में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लाइब्रेरी, क्या उनके घर तक के लिए आवागमन के लिए सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, या इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड उसको नहीं चाहिए? सब चीज चाहिए। तो आज हमारे यहाँ की एक जबरदस्त मुद्दा है, वह मुद्दा है कि जितनी सुविधा हमको चाहिए उतनी सुविधा हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी चाहिए। महिलाओं की स्थिति में बता रहा हूं कि कम समय में वो शादी विवाह जल्दी कर लेते हैं, खाना पीना शिकार करना इनका मुख्य पैसा है। क्यों नहीं हम इनके गांव में जाकर, इनके आसपास जाकर इस तरह का कार्यशाला करें, उनको अवगत कराएं कि नहीं, आप भी देश का महान काम कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप दुनिया की तमाम चीजों को, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, राजनीतिज्ञ हो सकते हो। धीरे धीरे इसकी बू अब वहां तक जाने लगी है। तो मित्रों, हमारे यहाँ जल, जंगल और जमीन, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और ये 3 मुद्दे का समाधान भारतवर्ष में बड़ी जबरदस्त ढंग से चल रही है। हमारे यहाँ का आदिवासी भेल, गोंडा, मुंडा, भुटिया, संताल, चूंकि मैं जिसकी बात अंतिम में किया, हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा जिन आदिवासियों का वर्चस्व है, जिन आदिवासी भाइयों बहनों से हमारा प्रत्येक दिन का संपर्क होता है, वो संताल है। और हम अपने घर के बगल में ही रोज देखते हैं कि
15 किलोमीटर 20 किलोमीटर सुदूर जंगलों में उनका घर हुआ करता है, जहां पर अब भारत सरकार की नीति, सब जगह धीरे धीरे अब सड़कें बन रही हैं, सब जगह धीरे धीरे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो रही है, बिजली की व्यवस्था हो रही है, नेट और इंटरनेट की व्यवस्था हो रही है। दुनिया अब विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। आज हमारे और आपको देखकर वह भी स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। हमारे और आपको देखकर जिसके सहारे, जिनके जरिए हम सब एक दूसरे से जो आमने सामने बैठकर बात और बहस कर रहे हैं, इनका भी वो उनके हाथ में भी मोबाइल आ गया है। तो अब वो समय नहीं रहा, समय बदल रहा है। इसीलिए जनजातीय विकास, इसका विकास जितना होना चाहिए, हम सब के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से जबरदस्त विकास का अवसर हम लोगों को आ रहा है। और कई एक जगह पर चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, तो वो चैलेंजेज को अब बिल्कुल सहज, सरल, सहज तरीके से एक एक चीज जो केंद्र सरकार, दिल्ली में जो चीजें मिल रही हैं, वो चीज आज हमारे एकदम अपने राज्य का, अपने जिले का आखिरी छोर तक जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनको छला जाता है, जिनको बराबरी का हक नहीं देते, तो आज धीरे धीरे समय बदल गया। वह भी अपनी आंखें खोल रहा है, वह भी धीरे धीरे, आप नहीं देंगे तो वो जुझारू हो रहे हैं। तो ये सब समस्या है मित्रों। तो मैं एक बार पुनः हमारे इस कार्यक्रम में जो अवकाश के दिनों में और जो संयोजक, जो आयोजक, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं सबको, हमारे जितने विद्वान साथी, प्रिंसिपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मैनेजमेंट के लोग, पूरे देश के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि इसकी आवाज, इसका समाधान जो होगा, वो वहां के जो लगभग हम बोले ना कि हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में 705 से 715 तरह के जनजाति लोग हैं। ये सभी राज्य के, सभी जिलों के आखिरी छोर तक इसकी आवाज जानी चाहिए। लिखित में इसका बुकलेट जानी चाहिए कि जो आपके मुद्दे हैं, जो जहां पर हम लोग प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी इनकी आवाज वहां तक उठनी चाहिए। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि सीढ़ियां उनके लिए हैं जिनको छत पर चढ़ना हो। तो ये धीरे धीरे अब विकास की राह पर बढ़ना शुरू किए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है, रात को भी समझता वह भोर है, आदमी अब भी कमजोर है। कमजोर आज नहीं है, यह सिद्ध करके दिखाना होगा कि कोई भी आदिवासी अब गिड़गिड़ाता नहीं है। वह हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर देश को मजबूत करने की कोशिश करता है। सोनू कुमार जी, आप पिछले बार भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। और आप जैसे लोग, आप जैसे विद्वत जैसे लोग, इस कार्यक्रम की जो भी चीजें होती हैं, वो देश के आखिरी छोर तक ये आवाज जानी चाहिए। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पैनल में काफी एक्सपर्ट, काफी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे विदा लेने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आयोजक, जो संयोजक, जो शोधार्थी, जो रिसर्च स्कॉलर, जो बड़े बड़े प्रबुद्ध जीवी, बुद्धिजीवी लोग जो इसमें जुड़ते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इसका निचोड़, इसकी आवाज वहां तक जानी चाहिए। तो मैं एक बार पुनः आप जैसे विद्वत जनों से मिलकर एकदम
दिल तरोताजा हो जाता है, उत्साह भर जाता है कि आप लोगों को देख करके मैं कुछ कह पाऊंगा। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से मेरे जैसे अल्पज्ञ को आपने पैसेंसली 10 मिनट धैर्यपूर्वक सुना। मैं इसके लिए आप सबको कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष रूप से ब्रजेश सर और उनके तमाम सहयोगियों का मैं विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और कोटि कोटि वंदन करता हूं। और इसलिए वंदन करता हूं कि ये कार्यक्रम आखिरी मुकाम तक जाए और आपकी जो सफलता का राज जनजातीय विकास मुद्दे और चुनौतियां कि कैसे इसका समस्या है, हम इसका कैसे समाधान होगा, और समाधान वो पूरे केंद्र तक जाना चाहिए, सुझाव वहां तक जाना चाहिए। और जब एक जगह पर कई विद्वान, कई पढ़े लिखे लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो मुद्दे आते हैं और मुद्दे का समाधान भी हम और आप जैसे लोग मिलकर के ही इसका कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। चूंकि ओम प्रकाश जी और भी जो मेरे सहयोगी हैं, आशा दीदी लोग, मैं सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिसका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणापूर्ण था ताकि हम लोग सीख सकें। और आपने जो कहा कि आप अल्पज्ञ नहीं, हम सभी लोग, आप तो अच्छे ज्ञाता है, हम सभी लोग अल्पज्ञ हैं, अभी सीखने की स्थिति में हैं हम सभी लोग। और आपने जिस प्रकार से हमें बताया ताकि और हमें आपका बार बार मार्गदर्शन मिलता रहे। आपने जैसे बताया हमारे प्रकृति का संरक्षण, जंगल जमीन, इन सभी चीजों पर एक समानता का होना चाहिए अधिकार, ये सब चीजें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, थैंक यू। ये कार्यक्रम एकदम आपका समय से थोड़ा ज्यादा समय तक चले और बेहतरीन तरीके से चले। ढेर सारी शुभकामनाएं जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर जजबीर सिंह जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य वित्रा एंड योगा, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिलासपुर, हरियाणा, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं SSMWA के, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जजबीर सिंह। नमस्कार सर। Good afternoon to everyone. I am Dr. Janjatiya Singh. Would like to express my sincere gratitude for inviting me as a speaker at the one-day international conference on the multidisciplinary research in tribal development issues and challenges. I am honored to be given the opportunity to share my research and insight with the esteemed gathering of the experts and the scholars. And I'm very thankful to Mr. Brijesh Kumar for considering me the prestigious event, and I look forward to presenting my paper and engaging in the fruitful discussion and the fellow participants. सर, डॉक्टर साहब की आवाज क्लियर नहीं हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. सर, अब आवाज क्लियर है? जी सर, जी सर। Okay, sir. My presentation topic is Ayurveda and the tribal development and bridging the indigenous wisdom and modern policy challenges. And first of all, जल जंगल जमीन के संरक्षण में सदियों से सदैव तल्लीन प्रकृति के सच्चे सेवक आदिवासी भाई बहनों को जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। First of all, the abstract of this study, that of the tribal community are the custodian of the rich ethno-medical knowledge rooted in the ecological literacy, and Ayurveda holistic framework offer a scientifically validate the pathway to uplift tribal health, livelihood and the environment resilience, and the presentation process on the
Ayur tribal integration model linking health system, biodiversity conservation and sustainable livelihood, and policy gap, development challenges, and the future opportunity are critically examined. And the introduction of this study that of the India host of the 705 scheduled tribal community representing the 8.6% of the population, and many tribal region faces of the persistent challenges, malnutrition, endemic infection, poor health infrastructure, and Ayurveda complement the tribal medical tradition through the holistic diagnosis that of the prakriti base and nature centric of the therapeutics, and the prevention health through the lifestyle and the seasonal regimen, and the Ayurveda tribal knowledge resonance that of the both of the system priority of the nature embedded of the healing and the ecologically balance, and tribal ethnomedic medicine mirror that of the Ayurveda practice, such as of the use of the forest herbs and the ritual healing practice and the seasonal health adjustment, and Ayurveda recognize of the indigenous knowledge under Lok Parampara, that of the folk traditions, and of the policy landscape, that of the tribal healthcare research program, that of the CCRS initiative for the documentation and the service delivery, and the Ayush tribal affair of the conservation, that of the strengthening of the Ayush outreach in the tribal belt, and national Ayush mission that support of the community wellness center, and persistent gap of the limited integration, weak monitoring, and inadequate research linkage. That of the issues and the problem statement of the rapid loss of the indigenous herbal knowledge due to the modernization and fragmented of the health system, Ayurveda and the tribal healing operate in the silos, and the limited livelihood for the medicinal plant due to the market exploitations and the lack of the legal protection for the tribal intellectual properties, and the tribal versus the Ayurvedic health approaches, that of these are the parameter, that of the diagnostic approach according to the tribal health system, that of the experimental, that of the community based and intuitive, and the Ayurveda that of the prakriti based system, and the dosh analysis, and the medicinal sources as per the tribal health system, that of the forest and herb and the rituals, and as well as of the Ayurveda classical formulation and botanicals, and the treatment philosophy, that of the harmony with the local ecology, and the as well Ayurveda, that of the balance of the dosh, dhatu, and the agni, and the knowledge transfer, that of the oral traditions, and the as per Ayurveda, that of the textual and the experimental and the sustainability approach, that of the scatter of the growth of the biodiversity respect, as well as of the Ayurveda, that of the conservation of the medicinal flora, and that of the research object of the study, that of the explore of the Ayurveda tribal interference in the health and the social development, and identify the systemic challenges hindering of the integration, and the develop of the Ayur tribal integration model, and recommend sustainable policy framework for the implementation. That is also did of the Ayurveda principle balance of the doshas and the ethical ecology, that of the Panch Mahabhuta, and that of the herbal care assess, and the tribal knowledge system that develop the documented that of the development catalyst, that also the outcome which provide the improved health, livelihood, and the sustainability. And the literature review of highlight that of the over the 3,000 tribal medicine plant species out of 800 overlap with the Ayurveda and tribal healer, that of the Vedas and Bhagavats, cater to cover of the 65% of the rural and the forest population, and studies show the improvement of the livelihood and the forest biodiversity with of the community herbal program. And the overlap of medicinal plant uses, that of the category and the number of the species, tribal plus Ayurveda, that commonly 800, and the tribal exclusive species, that of the plus 3,000, and Ayurveda exclusive species, that of the 1,400. And the methodology of the study, that of the conceptual, analytical, and approach, and the policy mapping of the Ayush and the tribal welfare framework, and review of the ethnobotanical and Ayurveda literature, and systemic modeling with of the thematic coding. And the conceptual framework, that of the ATIM, that
Also of the 4 pillar of the integration, that of the health, that is the community wellness, clinic, preventive Ayurveda, and livelihood, that of the herbal cultivation, MSME, development and ecology conservation of the medicinal biodiversity, and governance, that of the convergence of the ministry and the local body, that also the data present and proposed impact of the indicator for the IU tribal integrations, and that of the conceptual model integrative pathway of the Ayurveda and the tribal health system, that of the traditional oil system, that of the Ayurveda principle, that of health, livelihood, and the environment, as well as the tribal development outcomes. That of the operational step, that of mapping the regional medicinal resources, skill training in the herbal cultivation, good manufacturing practice, and the value addition and development of the Ayush mobile health unit, and develop of the tribal herbal product cluster, and establish of the IP protection and the benefit sharing of the models. And the simulated projected that of the outcome, that of the health improvement, 85% plus in preventive coverage, and income growth, that of the 54% plus through the herbal value chain, and biodiversity conservation, that of the more than of the 50% of the forest species regeneration, and governance efficiency, that of the more than of the 64% of the institutional of the coverage, that also that of the ATIM outcome of the radar of the chart shows. But the livelihood of the transformation, that of Ayush-based rural entrepreneurship and tribal women lead of the herbal cooperatives, and GI tagging and branding of the tribal products. And these are the average household income trend after the Ayurvedic livelihood of the integration, that after the over the 5 year across of the pilot district, that income generation, that of the increase, that of the 4,000 to increase in 5 year, that 65,000, that of the average income increase due to the Ayurvedic intervention, use of the Ayurvedic intervention, and of the ecologically and sustainability, that of the adoption of the Ayur agroforestry models, and revival of the scatter of the groves of the biodiversity reserve, and the carbon sequestration benefit of the herbal plantation, that of the eco restoration of the loop of the Ayurvedic agroforestry, that of the herbal plantation, soil enrichment, climate resilience, increase forest yield, and increase forest yield, that of the community nursery. These are the eco restoration loop of the Ayurvedic agroforestry, that of the governance inside, that of the strengthening of the panchayat driven health monitoring, and cross ministry coordination with Ayush plus tribal affairs and the forestry ministry, and digital ethnomedicine documentations, and the institutional actors, and the functional role, that of Ministry of Ayush, that mainly function of the policy alignment and funding, and that output, that of the integrated wellness program, and Ministry of Tribal Affairs, that of the community mobilization, that output participation and capacity building, and CCRS and ICMR, that of the research validation and standardization of formulation, that is the output, and the local panchayat, that of the implementation and monitoring, that is output accountability, and the feedback, and NGOs and CBOs, and that provide the training and awareness, and output of the that of the grassroots engagement, and the culture revitalization, that of the preservation of the rituals linking to the biodiversity, annual herbal fairs, and cultural festival, and the youth engagement through the apprenticeship with of the traditional healers. That of these are the challenges and the solution, that of the challenges, knowledge erosion, that of the strategic solution, that of the digital and community documentation and market exploitations, that of the tribal herbal cooperatives, and policy fragmentation, that provide of the joint task force and unified missions, and validation issue, that of the CCRS, ICMR collaboration, that of the research, that of the future research direction, that of the empirical validation of the community RCDs, and on the Ayurveda preventive output in the tribal region, and longitudinal ecology 10 to 15 year tracking of the biodiversity and the soil health under of the Ayurvedic agroforestry and socio-economic modeling, AI tool, linking of the herbal trade, income and gender empowerment, and integrative education, that of the pilot tribal
wellness school, branding of the indigenous healing, and the Ayurveda and digital homeland. This is that of the NLP based of the documentation and preservation of the tribal or healing of the knowledge. And these are the discussion of this study, that of the Ayurveda tribal knowledge, synergy boost of the culturally rooted sustainable health and tribal area phases of the dual disease burden. Ayurveda offer adaptable preventive model and success need of the public health, the integration healer trainings and the policy recognition and the community lead of the mapping and the herb documentation, strengthening of the health autonomy and the support of the Atmanirbhar Bharat through the herbal livelihood and the eco-cultural tourisms. And the conclusion of this study, that of the Ayurveda and the tribal medicine wisdom together form a robust framework for equitable development, ecological conservation, and cultural resilience. The 18th IM model offer a scalable pathway for of the national level implementation and ethical bioprospecting and the community lead of the governance are essentially for the long-term sustainability. And these are the references used in my study. And thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जिस प्रकार से आयुर्वेद का ट्राइबल से संबंध जोड़ा है और जो बताया है पूरी तरह से, वो बहुत सही है। और आयुर्वेद के थ्रू ट्राइबल लेवल में किस प्रकार से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट और केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय से जुड़ी बहुत सारी चीजें करके बताए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जजबीर सर। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर प्रोफेसर सुनील पराजी, प्रिंसिपल फाइन आर्ट SSVPS स्कूल ऑफ आर्ट धुले महाराष्ट्र। प्रोफेसर सुनील पाराजी। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से धुलिया में मैं आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ जो धुलिया जो डिस्ट्रिक्ट है और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा आदिवासी समाज के लिए फेमस है। और मैं एक कलाकार होने के नाते मैंने 2018 में मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में शो हुआ था। उसमें मैंने आदिवासी कला के ऊपर ही मैंने सीरीज बनाई थी। आप मेरे हैंडल पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने जो अभी आज का जो मुझे जो संदेश दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन ने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस स्पीच के लिए। तो मैं आदिवासी कला के बारे में आपको बताऊंगा कि आदिवासी कला जो है, ललित कला जो है, उसमें संगीत है, चित्रकला है, शिल्पकला है। ये सब बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट रहते हैं आदिवासी एरिया से, तो उनका काम जो है, जो कलाकारी जो होती है, बहुत अच्छा होता है। वो बहुत सिंसियर होते हैं और उनके इनबॉर्न उनका आर्ट भी होता है, जो हमारे अलग दूसरी जगह से जो बच्चे आते हैं उनमें उतना हुनर नहीं होता है। इनका ये आदिवासी बच्चों में उनका हुनर होता है। तो भारत अपना देश जो है, जो विविधता से नटा हुआ है और उसमें अलग अलग भाषा है, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता है। उसमें आदिवासी जो समाज जो है वो लगभग 700 से आगे जाति जनजाति में आती है। तो आदिवासी समाज जो आपकी पारंपरिक कला जो है, जो उसमें कला ज्ञान है, सांस्कृतिक भाषा विविध सब जो है, वो सब अलग अलग उसमें हम ये कर सकते हैं। आदिवासी कला का महत्व जो है, जो आदिवासी कला जो है केवल सौंदर्य सजावट माध्यम नहीं है, बल्कि सामुदायिक पहचान है। सामुदायिक पहचान, आस्था, मान्यता का प्रतीक है। उसमें अलग अलग जो समाज आता है, उसमें गोंड है, भील है, वारली है, संताल है, सनरिया, उराव, संताली, टोडा और नागा देशी जनजातियां इसमें आती है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ठाणे जिले में एक वारली समाज, आदिवासी समाज है। उसमें जो वारली चित्रकला बहुत फेमस है और वो वारली चित्रकला अभी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसमें जो आर्टिस्ट है जीविया समय से, वो पूरे वर्ल्ड वाइड, और उनको बहुत पुरस्कार अपने भारत सरकार ने दिया है। उसमें पद्मश्री है, पद्म भूषण है। तो ऐसे अलग अलग
उनको पुरस्कार मिला और उन्होंने वारली चित्रकला को बहुत आगे से ये किया है। तो वारली चित्रकला जो है जिसमें त्रिकोण चौकोन रेखाओं के द्वारा वो बनाए जाते हैं, उसमें घीरू जो बोलते हैं, एक रेड कलर का पत्थर आता है, उसका ब्राउनिश कलर का एक लेयर लेते हैं और उसके ऊपर जो चावल होते हैं उसको पीस के पेज बना के व्हाइट कलर से वो चित्रकला की जाती है। बाद में गोंड जो कला है वो रंग अलग अलग रंगों के लिए और आकृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बाद में भील चित्रकला जो है उसमें बिंदु द्वारा चित्रकला तैयार की जाती है। इस काय सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए सर। सर अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ, और उसमें हस्तकला भी आदिवासी कला में आती है। जो लकड़ी से धातु से जैसा टोकरा है एमपी में, ब्रास में और मिट्टी के बर्तन, विविध आभूषण वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। और यही नहीं तो ललित कला में जो नृत्य है अलग अलग आदिवासी जो कला है उसमें अलग अलग नृत्य है। उसमें संताली है, गरबा है, कर्मा, मुरिया, बास्तर नृत्य आदि अलग अलग समुदाय ये नृत्य करते हैं। तो आदिवासी के अलग अलग सब जगह जो है अलग अलग हमको कलाएं दिखती है। आदिवासी संस्कृति का मुख्य स्तंभ है जो प्रकृति आधारित जीवन शैली, उनका सामुदायिक एकता है, परंपरागत ज्ञान प्रणाली है, लोक कथाएं और मौखिक परंपरा है। उनकी प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली जो है वो आदिवासी समाज को पूजनीय मानती है। जंगल, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, कृषि सभी उनके जीवन का एक अविभाज्य अंग है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आदिवासियों का ज्ञान आधुनिक समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। समाज की संरचना जो है वो आदिवासी समाज सामूहिक समानता और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ये सामाजिक संरचना आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। लोक कथाएं और मौखिक परंपरा जो है उनकी, वो आदिवासी समाज में इतिहास, ज्ञान, शिक्षा, सांस्कृतिक मान्यताओं का संचार पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से होता है। इन मौखिक परंपराओं को लोकगीत, कथाएं, पूजा रिवाज का संरक्षित किया जाना अनिवार्य है। आदिवासी भाषाओं का महत्व और संरक्षण जो है भारत के विश्व की सबसे बड़ी भाषा विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और आदिवासी भाषाएं इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु यूनेस्को के अनुसार भारत की 196 भाषाएं संकटग्रस्त में है और जिनमें कई आदिवासी भाषाएं भी है। ये भाषाएं लुप्त होने से शिक्षा में मातृभाषा का उनका अभाव दिखता है। शहरीकरण और प्रवास, मुख्य धारा समाज के साथ सांस्कृतिक टकराव, पारंपरिक रोजगारों का लेप, सरकारी आधिकारिक उपयोग से कमी हमको दिखाई देती है। इनका जो भाषा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा होना जरूरी है। भाषा शब्दकोश, ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण करना जरूरी है। डिजिटलाइजेशन करना जरूरी है और युवा पीढ़ी को भाषा से जुड़ने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम हमको तैयार करना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में जो है जो कला संस्थाएं और जो अलग अलग कॉलेज जो है उसमें ट्राइबल लैंग्वेज रिसर्च सेंटर खोलना बहुत जरूरी है। इसका और अभी सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब जगह नेट पहुंच गया है, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा कि किधर हम
पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे भी हम इधर से मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिजिटलाइजेशन बहुत होना जरूरी है। इसके लिए चित्रकला, हस्तकला, लोकगीत, भाषाएं सभी का डिजिटल रूप से संरक्षण होना चाहिए। सामाजिक मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता इस माध्यम से आदिवासियों में आना चाहिए। और ये इनकी जो कला है वो हम जतन करना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र उनके लिए तैयार करना चाहिए। इसमें वो प्रिजर्वेशन उनका हो सकता है। और उनका मेन जो मुद्दा है आर्थिक सबलीकरण ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आदिवासी समाज जो है वो सब पहाड़ों में शहर से बाहर, सिटी से बाहर रहता है। इसलिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे कलाकार और इतना अच्छा नॉलेज उनके पास होता है, लेकिन आर्थिक पिछड़ी से वो आगे नहीं आ पाते। तो वो गवर्नमेंट के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से जरूर होना चाहिए। आदिवासी कलाकारों को उचित बाजार उपलब्ध करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी कला जो है वो उनके लिए करते हैं, लेकिन जब वो समाज के लिए करना चाहेंगे, उनके जो एग्जीबिशन स्टेट लेवल पे, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे एग्जीबिशन होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको कुछ तो भी उसमें इनकम और उनको समाज में उनकी जो कला जो है वो प्रसारित प्रेजेंटेशन कर सकेंगे। उनकी जो शिक्षा और शोध जो है विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन, ट्राइबल स्टडीज एक महत्वपूर्ण अकादमिक क्षेत्र के लिए एक विकसित हो रहा है। उनके जो चुनौतियां है वो सरकारी योजनाओं का गांवों तक न पहुंचना है और बाजारवाद द्वारा आदिवासी कला का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं अभी आपको वारली चित्रकला का एक आर्टिस्ट का नाम लिया था कि SSMWA से, अभी वो गुजर गए, लेकिन ठाणे जिला में वो बहुत वारली जो समाज है वो बहुत अच्छा, आपको सब पता होगा कि वारली चित्रकला, लेकिन कई लोगों ने उनको जापान में लेके जाके उनका फायदा उठाया, क्योंकि उनको उनकी सिर्फ भाषा आती थी, उनको इंग्लिश भी हिंदी भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उधर जाके उन्होंने सिर्फ पेंटिंग बनाने के लिए और उनको एक छोटे से प्राइस पे उन्होंने वो उनके आर्ट खरीदा। इसलिए वो समाज कम्युनिकेशन न होने से उनके कला को ज्यादा वैल्यू प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि ये कला बहुत फेमस है, बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उनका थोड़ा सा धुंधलापन ये, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं जा सकते। युवा पीढ़ी जो है अभी की उनकी युवा पीढ़ी की परंपरा को दूर होना, अभी युवा जो पीढ़ी अभी सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो जो युवा जो आदिवासी है वो बाहर जाके दूसरा कुछ करते, उनकी कला को आगे नहीं बढ़ाते, इसलिए वो उनकी कला को आगे बढ़ा के वो आगे उनका करियर सेट कर सकते हैं। और उनका आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भी इसको जिम्मेदार है। और जो भाषा जो है, भाषा का तेजी विलुप्त होना है, उनकी जो आदिवासी कला जो है वो भाषा में थोड़ा विलुप्त हो रही है। तो ऐसी ये आदिवासी कला में थोड़ा चुनौतियां है। आदिवासी कला, संस्कृति और भाषाएं भारत का संस्कृत धरोहर है और आत्मा है। इनका संरक्षण केवल सांस्कृतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, प्रकृति और सामाजिक संतुलन के संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। यदि सरकार, शिक्षण संस्थान, शोधकर्ता और स्वयं आदिवासी समुदाय मिलकर संवेदनशील और वैज्ञानिक प्रयास करे, तो आदिवासी धरोहर के आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और अधिक अच्छा इसमें काम कर सकती है, कला में काम कर सकती है। थैंक यू, आपने मुझे ये प्रेजेंटेशन का लेक्चर का मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइजेशन का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस प्रकार से एक आदिवासियों का एक सांस्कृतिक पक्ष है वो जो बताया, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चुनौतियां और कैसे अवसर है, ये एक बहुत बड़ी चीज थी। इसमें आपने हस्तकला से लेके संस्कृति, चित्रकला से लेके सब चीजों पर बताया। आपने जिस प्रकार से बताया कि एक यूनिवर्सिटी में ट्राइबल लैंग्वेज डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि उससे
लैंग्वेज जो हमारा क्षरण हो रहा है, संस्कृति क्षरण हो रहा है, इन सभी के बारे में वो पता चले और उन पे डेवलपमेंट हो सके, रिसर्च हो सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर निखिल नारायण जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना बिहार को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर निखिल नारायण जी। Good afternoon, sir. I hope I'm audible, sir. यस, ऑडिबल मैम। Good afternoon, everyone. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to talk on tribal development and the policies related to it. So due to lack of time, I think I'll talk about the main points of the lecture because we already, I think, are running short of time. My topic is tribal development and cultural sustainability, balancing modernity and tradition. So I have divided my lecture into 10 main points. And each point will talk about the most important ideas related to tribal development, how we can balance modernity and the tribal life, because we know that already we are in the era of globalization, post-globalization, where modernity has already encroached into tribal land. We cannot stop that process. We can only think about how we can integrate or we can bring in a harmony between tribal development and the modernity as we experience it, because as the chief guest rightly said, we know their way of life is completely different from ours. So the first most important point is, I think, understanding what is tribal development, because for tribal communities, their development should include cultural, linguistic, and ecological dimensions, and not just economic growth. For us, it might be economic growth. For them, it is completely different. For them, they have to develop their community also. The second is that the tribal identity is closely related to land and forest. So therefore, we have to develop their community. We have to also think about the progress of the ecology, how we can protect the forest, how we can protect the water, what can be done about it. The second important point is cultural erosion, which is already happening on a large scale. We have progress encroaching into lands like mining, deforestation, plantations, the urbanization which is happening in forests, we know, are quickly disappearing from our land. And if you think about tribal development, we know in the tribes, in the forest, we have certain places like there are sacred forests, there are sacred spaces where even many of the tribals don't go, only few people go there. So how can we protect these sacred sites? How can we protect the traditional livelihoods which are associated with the forest? Like, for example, a simple example is collecting honey from the forest. So how can we bring about a balance between the modernity, the lifestyle as we experience it, and their lifestyle? The third is language loss, which is the most important thing which is happening right now, because many tribal languages are already disappearing. They are endangered because there is lack of protective efforts. Like, people don't take effort to preserve them by either recording the languages or writing books about these certain languages which need to be protected. Because tribal, if you think about tribal language, it is mainly based on oral histories. We have folk songs, folk narratives, songs. So efforts, I think, should be taken to preserve these oral songs and folklore, which will go a long way in protecting the endangered languages of the community. And therefore, it will be associated with the tribal welfare. The next point is identity, rights, and self-governance, because when we think about Nadivasi, when we think about tribes, the most important thing coming up is stereotype, because we think like Adivasi hai to jungli hai. So this type of stereotyping is one of the other issue, one of the most important issue that I think a tribal person faces. And then even though there are certain acts, like we have the PESA, that is the Panchayat Extension and Scheduled Areas Act of 1996. We also have the Forest Right Act of 2006, which we know that it is not implemented fully because bureaucratic clashes, when it comes to the grassroots level, nothing happens actually.
So how can we meaningfully participate the community, and how can the government also take necessary actions like to implement it in a proper way? The next one is traditional knowledge, how to preserve traditional knowledge, because for example, the Adivasis healing techniques are completely different from us. We might go run to a doctor when we have a cut or a wound. They depend on medicinal practices which have been passed on from one generation to another. So how can we preserve those healing traditions? How can we look into their agricultural practices? What are the water practices, water management practices they do? What are the forest management techniques that they have, etc.? These are things we can also learn from them. Then the next point is the impact of modernity and globalization, which we know that because of globalization, there is youth migration. The youth from the forest, they migrate to the urban cities, and then there is a loss of community living, and the language, the traditional skills are lost. Because of consumerism, their lifestyle changes, and therefore their health deteriorates. These are some of the things. The next thing is community-led cultural revitalization. So steps can be taken to document their oral histories, the folklore, the rituals, which I think initiatives have started happening. People have started recording their languages, indigenous practices. It can be done through either through literature, it can be done through social media, it can also be done through local art movements, or like NGOs can take up this task. Even tribal youth initiatives, like we can start, for example, a community radio or digital storytelling techniques. The next important part is the role of education. So we know that the tribal education technique is completely different from ours, because they have indigenous knowledge system. So how can we balance this modern knowledge? Like what we study is the Western knowledge system. So how can the Western knowledge system integrate this the indigenous knowledge system? So we can think of a different syllabus prepared, which can inculcate the indigenous knowledge system also. Then the last one is the role of governance and policy. As we have already done that. We have talked about how the government should take necessary steps uh, to work on the grassroots level. And so the last point is, if we have to balance tradition and modernity, we have to be culturally sensitive and locally grounded, and we have to adopt technology that adapts to tribal needs rather than imposing uniform system on everyone, because we have to understand they are different. There cannot be a uniform system which is applicable to everyone. So this is from my part. And I wish all the best to all the participants who are participating in today's conference. So thank you, everyone. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल डेवलपमेंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसके आपने बहुत सारे 10 की फैक्टर्स बताए, उनमें आपने नॉलेज सिस्टम और हमारे एजुकेशन में हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आपने बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निखिला नारायण जी का। अब नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर महेंद्र कुजूर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सेंट जेवियर कॉलेज, माराव, दुमका, झारखंड। Yes, okay. So good afternoon, everyone. So respected, respected organizers and esteemed participants, fellow academics and dear students, a warm greetings to you all, and a Jharkhandi Johar. So today I am feel and honored to speak at this national conference on the topic, and that is also very immense important, that is tribal development issues and challenges. So this subject becomes even more relevant when we reflect the legacy of one of the India's the greatest tribal icon, that is we call Dharti Abba, Bhagwan Birsa Munda, okay, and whose life remains a guiding light for the tribal empowerment, okay, dignity and self-reliance. So India is the home of, like we know already, with the
Dr. Jitendra sir has already mentioned that almost 505 to 510 recognized tribals, scheduled tribes are there, and that constitute almost of 8.6% of the population. So the tribals are not just communities, so they are like a guardians of the forest, you see, and keepers of ancient knowledge and the protectors of the cultural diversity. Okay, so these are the things, but they continue to still face the systematic, what is inequality, marginalization, and socio-economic deprivation. So, before discussing the issues, it is important to understand the ideological foundation of tribal development, and that foundation was led not none other than Bhagwan Birsa Munda. So, one of the youngest freedom fighter, okay, we have in Indian history, who fought not only for political liberation, but also for socio-cultural identity and economic rights of the tribals of Chota Nagpur. So that became the icon. So he was born in November 15th, 1875. So just yesterday we celebrated 150th his birth anniversary. See, in Jharkhand, place called Ulhatu. So from where he led this very revolutionary movement, okay, and that is known as Ulgan. Ulgan means that it's a great revolt. Okay, so four very important things that he fought. That was land alienation, the exploitation, Jamindari and British forest policies, and the cultural erosion and the denial of autonomy to tribal communities. So, Birsa Munda strongly believed that the land is life for the tribals. Okay, Jameen hi Jeevan, that's what he meant. Therefore, one of the very famous slogan that he had given to us today, still we pronounce and say that, like Abu Dishum, Abu Raj, means our land, our rule. Our land, our rule. So, therefore, he visualized, the future society, how would be like with the dignity, okay, with the self-respect and economic self-reliance, and without fear of disposition from their ancestral land. So, due to this particular movement only, the Britishers, they put and they enact a Chota Nagpur Tenancy Act in 1908, and that protects the tribals and the rights. Okay, so even today, these techniques, okay, tribal youth development planners are still there. So this is how this particular act is protecting the tribal land strongly. So, despite years of planning for the tribals, continue to face serious structural challenges, So, that our Bhagwan Munda had already seen in the beginning, like the land alienation and the displacement. In the beginning only, Jitendra sir has told that how displacement is playing a vital role to destroy the communities. Because development projects are there, we know that, like mining, dams, industrial corridors, okay, and the forest conservation schemes, etc. This leads to the mass displacement, okay, mass communication, the mass displacement is a very vital role playing. So, just 40% of those displaced for development projects in India are only tribals. And this is a population of just less than 9%. So it really, government has to think a very constructive way, not in a destructive way. The Bhagwan Munda, what so still remains today. Because one of the Birsa Bhagwan's message is, land is not a commodity, okay? It is the soul of the tribal community, okay?
the soul of the tribal community. So this is how we have to protect, and we have to live with the spirit that Bhagwan Munda had given to us today. And our tribal livelihood continues to depend on, like the minor or the forest, okay, the traditional agriculture, hunting and gathering still today, and the cattle rearing and the seasonal labors. So we have to strengthen the Forest Act that was implemented in 2006. Okay, and another thing that is like plays a vital important to empower, that's education. So still today we face the high drops of the students, especially the girl students, when we look at in the schools, and we are lacking this, this early mother tongue. When we ask the students, when we have this from a tribal belt, they won't know their mother tongue. See? So we have to strengthen to see the dream of Birsa Munda comes true. Education has to be really put into the forward today, and we have to strengthen in that manner. Then only the dream of our Lord, the Bhagwan Munda, will come true. And on the next aspect, we can see that the health care, really we lack the limited health cares are there, and that takes people into the back foot. So the culturally identification also plays a very important role, because Birsa Munda had always said that we have to protect the culture. Okay, so we have to protect, in a sense, whatever we have now, and at that time it was, we have to protect it. So what I see in the first freedom fighter, our Bhagwan Birsa Munda, that we have to look through his lens, okay, what he was seeing there. Like he was saying about the land and the forest rights must be strengthened, okay. So what he was saying that, okay, we have to protect this land laws, because land is the only thing that is our life giving. It is giving the life. And suppose the land is being taken, what will this our people will do? Where they will go? They will be nowhere at all. So that was the backbone of the things. So from the top to the bottom, so the development has to from the top to the bottom right now, from where our the tribal people really live there. We have to see their life, how they are living, because the emergence of Bhagwan Munda, how it came. He wanted to protect. See, just in a very young age, he's the youngest one, just not even 25 years when he led this journey, when he led this movement. So what I see in his message, that very four important things just to take away from today, from his life, as we celebrated 150th anniversary, that is the protection of the land. So that is was the first point that he had emphasized, the protect the land and preserve the identity. So identity is the must, because now, because of this displacement, our people are losing the identity, and that we had got already. And the empower the community. So the tribals really live in a community. If they are separated, there will be no more community at all. And stand united for justice. So we have to fight for the justice. We cannot see injustice. And this was said by our Bhagwan Birsa Munda. Why? See, so one of the very greatest things what we should look at, that is of the true tribal development is not just about schemes, remember this, but about dignity, okay, and not just about welfare, but about rights, and not just about integration, but about empowerment. We have to empower. So through his life, okay, 5 important qualities we can take away, that is self-esteem, what I say, leadership ability today, and set goals, discipline, and best strategies.
So for the young today, for the youth, we need to have these 5 important qualities to learn from our Lord Birsa Munda. And what he said, 3 things remember. Still today it's there in the tribal communities: Jal, Jameen and Jungle. So whenever there is a protest, you know what is the slogan? Jaan denge, Jameen nahi denge. So that should be our motto. We should give the life. As in a very early age, Bhagwan Munda has given his life, showing the path to the youngsters today. So we have to preserve our land, we have to preserve our identity, and we have to preserve our culture. And whatsoever we have to say for anything, if somebody is taking our land, jaan denge, jameen nahi denge. So with this, I honor Lord Bhagwan Munda, Birsa Munda, and I honor him. So Jai Hind, Jai Jharkhand, Johar. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हमें बताया बिरसा मुंडा जी के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, उसके अलावा जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, जमींदारी प्रथा पर डिनाइल, ऑटोनॉमी सिस्टम, ये सब हमारी पुरानी चीजें थी। इनके कारण ही हम आज तक प्रॉब्लम में रहे हैं। तो इनका सॉल्यूशन हमें धीरे धीरे करना होगा। और इसके लिए आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर राकेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राकेश सिंह जी। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जनजातीय विकास मुद्दे और चुनौतियों के लिए मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए सबसे पहले मैं ब्रजेश सर और आपकी पूरी आयोजक समिति को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे मेरे से पहले जितने भी वक्ता ने बोला, अधिकांश जनजातियों के जो विकास मुद्दे और चुनौतियों से संबंधित सब बोल चुके हैं। तो लगता है मेरे लिए कुछ बचा नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा उनके विकास से संबंधित एक चीज कहना चाहूंगा। हम जो जनजातीय हैं, जिनको हम लोग आदिवासी, जो अकादमिक भाषा में आदिवासी शब्द प्रयोग करते हैं, ये कौन है? क्योंकि जो ये जनजातीय हैं बहुत शुरू से यहाँ पर निवास करते आ रहे हैं, ये आदिवासी, और तब भी उनका विकास नहीं हुआ। भारत के आजाद होने के बाद भी आज करीबन 78-75 साल से ऊपर हो गए हैं। और कल हमने बिरसा मुंडा के जन्मतिथि पे गौरव दिवस मनाया, जनजातीय गौरव दिवस। उसके बाद भी अब हम लोग 1947 विकसित भारत तक हम विकसित जनजातियों के विकास और चुनौतियों पे ही बात करते रहेंगे। तो जो ये जनजाति है, आदिवासी समाज है, सबसे पहले तो उनका विकास कैसे होगा? सबसे पहले विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका जो मूल रूप से जो एक हम लोग शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, दलित और जनजाति आदिवासी एक भाव आता है हमारे मन में, उसके कारण से वहां से भी विकास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो समाज में जो उनका प्रतिनिधित्व या फिर समाज में उनकी जो भागीदारी मिलनी है, वहीं से शुरुआत नहीं हो पाती है। जब तक समाज में उनकी भागीदारी, उनका नेतृत्व लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कैसे उनका विकास हो पाएगा? जब हम लोग जनजातीय समस्याओं के बारे में, उनके मुद्दे, उनके विकास कैसे होगा चर्चा करते हैं, हमारे पास जल, जमीन, जंगल और उनकी संस्कृति और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे ही हमारे पास मुख्य बिंदु रहते हैं। और जो समस्या मुद्दे की बात कर रहे हैं तो एक नैरेटिव यह बनता है कि जनजातीय लोग के सबसे पहले एक यह आता है कि जनजाति जो है शराब सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, शराबी होते हैं। एक नैरेटिव ये भी बन जाता है। तो जो शराब पीना है, उसमें जो मदिरा पान है,
वो उनके कल्चर, उनके संस्कृति में वो चीज है। क्यों? क्योंकि जो मदिरा है वो अपने देवी देवताओं को, जो कुल पूजक है, उनको चढ़ाते हैं और उसके माध्यम से वो उसका जो प्रसाद ग्रहण है उसके अनुसार से लेते हैं। और जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको हम अनुसूची, भारतीय संविधान के अनुसूची में जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पढ़ते हैं, ये 1950 में सूची बनी और उस सूची के अंतर्गत जनजाति और अनुसूचित जाति के उसको रखा गया। और 2011 के जनगणना के अनुसार से हम देखते हैं कि जो प्रतिशत है 8% जनजातियों का भारत में है। और जो भारत के जितने भी जो जनजाति हैं उनकी समस्याएं एक है। जो हमारे पूर्व वक्ता, हमारे जो कुल सचिव सर बोल रहे थे, वो सही कह रहे थे कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो मध्य भारत का जनजाति हो, चाहे उत्तर भारत का जनजाति हो, या फिर हम लोग पूर्व की जनजातियों की बात करें, समस्याएं एक ही है, जल, जमीन, जंगल, उनकी संस्कृति। तो उसको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले हमें जनजातियों को आधुनिकता की तरफ खींचना पड़ेगा या उनको आधुनिकता की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। उनकी संस्कृति को बचाने, संरक्षण करने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है और उन्हीं के जो लोग हैं, जनजाति के लोग, वो लोग उस चीज को संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आधुनिकता भी लाना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आधुनिकता, क्योंकि जहां हम लोग बिरसा मुंडा रांची के बारे में पढ़ रहे हैं, वहीं झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा का भी नाम आता है, जो हमारे भारतीय संविधान जो संविधान समिति थी उसमें भी वो सदस्य रहे हैं। अगर हम उनको देखते हैं तो पूरा आधुनिक रूप में जो आज हम जनजातियों को देखते हैं उस रूप में देखते हैं। उनका जो पहनावा, जो कल्चर है, वो हम लोग उस रूप में देखते हैं। और अक्सर जो उनका जो सामाजिक जनजाति विकास की बात कर रहे हैं, तो मूल चीज है उनकी रोजगार, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का अवसर देना। क्योंकि अब उनको किस तरह से हमें सामाजिक न्याय या अवसर देना है समाज में, भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण उनको इसलिए दिया गया कि वो जो है उस आरक्षण के माध्यम से उनको एक अवसर मिले और उस अवसर के माध्यम से वो जब अपना उस कहीं पर भी वो रोजगार के लिए प्रयत्न होते हैं या कुछ ऐसे अच्छे जगहों में जाते हैं, तो वो जो है अपने समाज का भला कर सके या समाज के विकास के बारे में सोच सके। तो हम क्या देखते हैं, क्या मूल रूप से क्या उनके साथ में विकास की जब बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आदिवासी या जो जनजाति समाज है वो शिक्षित नहीं है, बहुत शिक्षित हो चुके हैं। अब उनको भारत सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा शोध करने के लिए भी उनको फेलोशिप मिलता है। उस फेलोशिप के माध्यम से भी वो आज सिस्टम में आने के लिए उनको अवसर मिलता है। लेकिन अभी जब कुछ पूर्व में भी जब बात हो रही थी कि शिक्षा के कारण उन लोग को उस आधुनिकता में नहीं होने के कारण उनको वो अवसर नहीं मिल पाता है। तो अवसर कैसे नहीं मिल पाता है? हम लोग जब देखते हैं उस जनजाति जो समाज के लोग जो उस पोस्ट के जो भागीदारी हैं, उनमें भी वो पोस्ट एलिजिबल भी है, उतने लोग भी आए हैं कैंडिडेट, उसके बाद भी वो पोस्ट एनएफएस हो जाता है। तो उस एनएफएस होने के बावजूद हम जनजाति और किसको ढूंढेंगे, अब किसको अवसर मिलेगा? इसी तरह से उनके विकास में एक रुकावट ये भी है। और क्योंकि हम जब विकास की बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण जो जनजाति हैं और जो शहरी जो जनजाति हैं उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि जो जनजाति है या कोई भी समाज हो, जब तक मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग नहीं बन पाएगा वो विकास ऊपर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारा जो समाज का जो मेन सोर्स है, जितने भी जो घटनाएं घटती है, जो भी विकास, जो भी परिवर्तन होते हैं, वो मध्यम वर्ग के परिवारों के द्वारा ही होता है, या मध्यम वर्ग जो क्लास है, वर्ग, उसके अनुसार से होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब तक, अब मध्यम वर्ग कैसे बनेंगे? जब तक उनको यहाँ पर अवसर नहीं मिलेगा, शिक्षा का अवसर मिल रहा है, जब उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना विकास कैसे कर पाएंगे? अब हम देखते हैं कि जनजातियों में, समाज में जो उनकी कुछ संस्था होती है,
उनमें कुछ ना कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अपने संस्कृति के बचाव के लिए होता है। जैसे मैं अभी वर्धा महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं कभी कुछ ऐसे इलाके में जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ जय सेवा समिति, विकास समिति ये लिखा। इसका मतलब क्या है, जनजाति जो वर्ग है, आदिवासी जो लोग हैं, वो लोग खुद हैं, तो उसमें सरकार को भी जो उनको बेनिफिट देना चाहिए वो मिलना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ, इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 और 332 में राज्य विधानसभा और लोकसभा में भी उनको आरक्षण दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक में जब अपना प्रतिनिधित्व जब कर लेंगे तो आप अपने समाज का विकास कर सकते हैं। और जब संविधान बनाया गया था तो शायद यही सोच के आरक्षण बनाया कि उन लोगों को भी अवसर मिले और अपना कार्य को कर सके। और जो चुनौतियां हैं, जो शिक्षा की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है दूरदस्त इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव होता है, या फिर वहां पर अच्छे शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य है, वहां पर अच्छे ढंग के हॉस्पिटल नहीं होते हैं, या फिर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील का हॉस्पिटल है, वहां पर सरकार उन्नयन करने के लिए वहां पर अच्छे मशीनें भेज देते हैं, लेकिन वहां पर उसको चलाने के लिए डॉक्टर वहां नहीं जाते हैं। तो सरकार को भी या फिर जो वहां के जो प्रतिनिधि हैं उन लोग को ऐसा करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कि स्वास्थ्य से संबंधित उनको सुविधा मिले, वो अपने उस क्षेत्र से बाहर उनको जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो उन कुशल डॉक्टरों को, चिकित्सकों को भी वहां पर भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे हम सुनते हैं कि पीजी करते हैं तो उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल का होता है कि उनको उसी राज्य में नौकरी करनी है। तो जब उनको नौकरी दे रहे हैं तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आपको दूरस्थ क्षेत्रों में जाके वहां पर अपनी सेवा देनी है। मैं ऐसे कई साल पहले एक जनजातीय क्षेत्र में गया था, वहां पर एक हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन है, और अल्ट्रासाउंड मशीन जो है जब से खरीदा वैसी पैक का पैक है। क्यों है? तो पता चला कि वहां डॉक्टर ही नहीं पहुंचे, तो मशीन का क्या करेंगे। तो इससे क्या हो गया, धन भी जो खर्च किया, सरकार का पैसा भी बर्बाद हो गया और वहां पर विकास भी रुक गया। तो इस रूप में सरकार को कहीं ना कहीं इस रूप में देखना चाहिए कि वहां कुशल डॉक्टरों को भी, शिक्षक को, जो भी क्षेत्र में आ रहा है वहां पर उनको भेज सके। और विस्थापन का जो मामला होता है जनजातियों में, आदिवासी समाज में, विस्थापन करने से उनकी संस्कृति को खतरा होता है कि कहीं दूसरे समाज के साथ मिलने से उनमें संस्कृतिकरण हो जाता है। तो इसीलिए उनके बचाव के लिए या संस्कृति को बचाव करने के लिए जब विस्थापन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा क्षेत्र उनको दिया जाए जहां पर वो लोग अपना पुनर्वास निवास कर सकें और वहां पर दूसरा हस्तक्षेप भी न हो। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे हस्तशिल्प है, उद्योग है, जो वन उत्पाद हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, सरकार को भी ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उन लोगों को एक प्रोत्साहन के लिए, काम करने के लिए राशि दे और उन्हीं से ही वो अच्छे दामों में खरीदे, जिससे भी उनको जो पैसा रुपये जो संचय करने का जो मौका उनको अवसर मिले, क्योंकि वो चीज उनको उस दाम पे नहीं मिलता है तो बिचौलिए जाके वहां पर फायदा उठाते। और एक चीज जनजातियों में एक ये चीज है कि जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि उन समाज के लोगों में एक ऐसी प्रकृति देन है कि जो जड़ी बूटी होता है वो अपना इलाज खुद कर लेते हैं, लेकिन वो इलाज क्या है, जैसे उनको सर दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है या आंख को कुछ पीड़ा हो रहा है, तो उस समय जो वो जड़ी बूटी लेते हैं, खाते हैं, उससे उसको कुछ समय के लिए राहत मिलता है। लेकिन उनको आधुनिकता रूप में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनको आधुनिकता की भी ओर बढ़ना है, उसका मतलब यह है कि उनको शहरी डॉक्टर के पास भी जाके अपना इलाज चेकअप कराना चाहिए। जैसे हम आदिवासी क्षेत्रों में ये सुनते हैं कि वो अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु कैसे हो गई? पता चलता है कि जो डॉक्टर देखता है उनको बीपी था और उनको अटैक पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ ऐसा अपना जड़ी बूटी दवाई खा रहे थे और उस कारण से वो उसको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के या कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको आराम मिलता, फिर वो वही चीज खाता, फिर वही चीज।
तो उसको वो चीज आराम नहीं मिलने से वो जो अज्ञानता है जो आधुनिकता में उस चीज में वो भी करनी चाहिए। तो यही चीजें हैं और काफी निर्धारित समय से कोई चीज हम पीछे भी रह गए हैं। तो यही चीज है कि मैं यही कहूंगा कि आधुनिकता की ओर भी आना है उनको, और जितने भी जो शिक्षा है और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो सरकार उनके प्रति जो कार्य कर रही है, समाज में जो अन्य वर्ग के लोग हैं उसको भी प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि उनको सामाजिक प्रोत्साहन नहीं मिलने से जो हम लोग भेदभाव बोलते हैं, वो भेदभाव के कारण भी उन लोगों में जो मानसिक जो विकास करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में कि जो उस वर्ग के समुदाय के जो लोग होते हैं और अन्य वर्ग के जो समुदाय होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट हमको दिखाई देता है। वो क्यों? क्योंकि वो उसी भाव में जीते हैं और उसी भाव में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये चीजें था। तो इसके अलावा मुझे ये मौका दिया, पुनः मैं आयोजक समिति और ब्रजेश सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बहुत सारी समस्याएं बताया और उनका सॉल्यूशन बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आज के कार्यक्रम के प्रथम चरण समाप्ति की ओर है अब। उसके बाद हमारा टेक्निकल सेशन स्टार्ट होगा। प्रथम चरण में एक चीज और कहना चाहता हूं कि आदिवासी के मुद्दों पे 2-3 चीजों पे और फोकस करना है हमें। कि एक तो आदिवासी हार्ड वर्कर है। आज देश के जितने भी डैम से लेके जितने ब्रिज बने सब में कहा या कोई सी भी आपकी लाइन डली या कुछ भी डला, उसमें पूरे खून पसीना डला है किसका? ट्राइबल्स का। तो मेहनती है, मात्र उनको तकनीक से जोड़ना है, सही तरीके से टेक्निक से और एजुकेशन से जोड़ के आगे बढ़ा जा सकता है। और हमें इसके साथ ही में समापन के लिए डॉक्टर जजबीर सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर समय दिया हमारे लिए, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने जो व्यस्ततम समय निकालते हुए उन्होंने जय जोहार से लेकर सभी चीजों पर उन्होंने बताया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आर्ट से रिलेटेड एक सेगमेंट पर पूरा फोकस किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। निखिला नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र कुजूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर राकेश सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रेजेंटेशन सेशन के लिए मैं ब्रजेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो टेक्निकल सेशन को देखें। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओम प्रकाश सर। अब हमारे ये सेकंड सत्र रहेगा जो पेपर प्रेजेंटेशन सेशन रहेगा। तो हमारे पास आज 60 प्रेजेंटेशन है जो लिस्ट है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 सभी का मैं नाम अनाउंस करूंगा। इसमें हम बेस्ट प्रेजेंटेशन का भी अवार्ड देने वाले हैं, इसमें 3 रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और उसी पे हमारा बेस्ट पेपर का भी रहेगा जो हम आफ्टर कॉन्फ्रेंस उसको अनाउंस करेंगे। जो आज के हमारे 3 बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेंगे, जिसके पास पीपीटी रहेगा तो पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नहीं तो वो बिना पीपीटी के प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप सभी का पेपर प्रेजेंटेशन सेशंस में स्वागत है। जो आज का जो फर्स्ट सीरियल नंबर है 1, डॉक्टर संजय कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से है। डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर संजय कुमार। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर ऋचा सक्सेना, डॉक्टर ऋचा सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मोरेना ग्वालियर। ओके, शायद ज्वाइन नहीं है। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 3, डॉक्टर लाव्या प्रभास। यस सर।
I'm present here. Assistant Professor of Bioscience, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं सर। आपका टॉपिक है ये रिव्यू ऑफ स्टडी ऑन एजुकेशनल स्टेटस ऑफ ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। प्लीज स्टार्ट सर, 5 मिनट का समय रहेगा, आप 5 मिनट में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। Am I audible, sir? Okay sir, okay, please continue. Sir, thank you very much for today's my presentation on a review study on educational status of tribes in Chhattisgarh. So this is the content of my today's presentation, and here I start. We already know that tribal population has a significant contribution in total population of India. हम सभी दोस्त लोग जानते हैं कि इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन की अच्छी खासी संख्या है, एंड इन इंडिया छत्तीसगढ़ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ कंट्रीब्यूट अबाउट 80 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन इन आवर स्टेट, जो कि लगभग टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ का 30% है। मतलब छत्तीसगढ़ में लगभग 30% जनसंख्या ऐसी है जो कि रूरल एरिया में है, जंगलों में वास कर रही है, और उनको ट्राइबल या शेड्यूल ट्राइब्स का कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है। So this is my review paper. I have reviewed about 27 research paper, जिसमें से 4 पेपर ऐसे हैं जो बहुत significant knowledge, significant information देते हैं regarding status of education among ट्राइबल पॉपुलेशन, जिसमें सिंह, ब्रह्मानंद, इंद्रजीत जी, चंद्राकर एंड चंद्राकर है। सो उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे जो शेड्यूल ट्राइब जो है वो संविधान के अनुसार आर्टिकल 366(25) में इंक्लूडेड है, और हम सभी वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे लिए राइट टू एजुकेशन हर आदमी के लिए पूरे देश में 2009 को लागू कर दिया गया है। बट इज इट रियली एप्लीकेबल टू द ट्राइबल पॉपुलेशन? ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में कि आदिवासियों को क्या शिक्षा मिल रही है तो किस लेवल में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अराउंड 21 ट्राइबल कैटेगरीज है, जिसमें से 10, जिसमें कमार, अबुझ माड़िया, बैगा, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, मुरिया, हलवा, धुरवा, कोल आदि ऐसी 10 ऐसी आदिवासी ट्राइब्स हैं जिनको आज भी ये नहीं पता कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है। और आज भी उनमें से एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो नाम लिखना या लिखने के से संबंधित कोई भी काम करने के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती है। तो इसलिए उनको स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रखा है। नाउ अब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन देखें। गवर्नमेंट जानती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ को तो ट्राइबल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सो देयर आर सो मैनी गवर्नमेंट स्कीम जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, जिसमें एकलव्य मॉडल, नवोदय, समग्र, पीएम पोषण जो कि छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनको खाने के लिए सामग्रियां दी जाती है। और साथ साथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 7th नंबर में ई विद्या और 11th नंबर में स्वयं प्रभा। ऐसे स्टूडेंट जो कि गांव देहात या जंगलों में वास कर रहे हैं, जहां स्कूल, कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से, ई रिसोर्सेज के माध्यम से भी बिना टीचर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। स्कूल एजुकेशन 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो शिक्षाएं हैं उसको ऑनलाइन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। लगभग छत्तीसगढ़ में 22,356 करोड़ हर साल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है स्कूल एज वेल एज हायर एजुकेशन की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हमको लग रहा है, पर आगे चल के हम देखें कि इन सब के साथ स्कीम जरूर लागू कर दी गई है, पर प्रॉब्लम, जैसे अभी हमारे जितने सीनियर गेस्ट थे उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम बहुत सारी है। हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली नक्सलिज्म की एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। हमारे रिव्यू पेपर्स में ये बताया गया है कि नक्सलिज्म की वजह से स्कूल एज वेल एज हायर एजुकेशन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकेंड है पॉवर्टी, हेल्थ इश्यूज, जोग्राफिकल अप्रोच, और सबसे इम्पोर्टेंट है वुमेन रिलेटेड इश्यूज। आज भी हमारा आदिवासी समाज में मैक्सिमम जो वुमेन या फीमेल कैंडिडेट्स है वो एजुकेशन की तरफ आज तक बढ़ ही नहीं पाए,
जिसका मेन कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। उनके पास जानकारी नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स की, गवर्नमेंट प्रोसेस की, ताकि वो अपने एजुकेशन को बढ़ा सके। सो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़। पर एक अच्छी बात हम ये देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो सामान्य आदमी में शुरू में 91 से 2011 के बीच में 12% बढ़ा और 2001 से 11 के बीच में 12% बढ़ा, वो शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा था। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 14% और यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 13%। तो नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में शेड्यूल ट्राइब की तरफ गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से लिटरेसी रेट जो है वो एक अच्छी रेट के हिसाब से, अच्छी दर के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आज भी एक क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट रेट अगर आप देखेंगे स्कूल एजुकेशन से ग्रेजुएशन की तरफ तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। 40% से ये 2% की तरफ आता है। इसका मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन में केवल 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के ऊपर जा पाते हैं। सो दिस इज रियली अ वेरी सीरियस इश्यू अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन और एजुकेशन सिस्टम इन ट्राइबल पॉपुलेशन। अब लास्ट में मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि दो चीजें रिव्यू पेपर में मैंने मिसिंग देखी, जिसमें एक है कास्टिज्म की बातें उन्होंने बहुत लाइटली बताई या फिर नहीं बताई, एंड सेकंड वाज द डिस्कशन अबाउट करप्शन, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा जो था वो मिसिंग था। पर कुछ एजुकेशन सिस्टम जो हम बात कर सकते हैं इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है या अभी थोड़ा सा बदल चुका है, पर ये उतना नहीं है कि एक ट्राइबल का कंट्रीब्यूशन देश के विकास में हम नोट कर सकें। सो फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। हम सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी एजुकेशन इन ट्राइबल पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। So finally, I thanks to organizer for giving me such a wonderful opportunity. Thank you, sir. So anyone who wants to ask any query or question, then please. Hello, sir. Yes, any question or query if you want to ask. If anyone want to question. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Good presentation. Thank you very much, sir. Thank you very much. Providing me such a good opportunity. Thank you very much. Next, serial number 5, Dr. Samina Qureshi. Dr. Samina Qureshi. Dr. Samina Qureshi. Okay, next serial number 6, Dr. Archana Gupta. Next serial number 6, Dr. Archana Gupta. Okay, next serial number 7, Dr. M. Sayyed. Dr. M. Sayyed Ali. Okay, next serial number 8, Dr. Parmanand Patidar. Dr. Parmanand Patidar. Okay, next serial number 9, Sujata Kumari. Sujata Kumari. Okay, next yes, serial sir. number 10. Yes, sir. Sujata Kumari. Yes, Sujata Kumari में शिक्षिका. Yes, sir. Yes, sir. जी सर. स्टार्ट में आपका टॉपिक है जनजाति महिलाओं का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, चुनौतियां और समाधान. यस, पेज स्टार्ट में ओनली 5 मिनट. जी सर. जी सर. धन्यवाद सर. आदरणीय मंचासी सदस्यगण, निर्णायकगण, सभी विद्वान और उपस्थित सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम. बाबा बैद्यनाथ देवघर, बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ देवघर और संथाल परगना की सांस्कृतिक राजधानी देवघर से मैं सुजाता कुमारी
जैसा कि सर ने बताया कि आज के मेरे संगोष्ठी का विषय है, परिचर्चा का विषय है जनजातीय महिलाओं का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, चुनौतियों और समाधान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब समस्याएं होती हैं तो साथ में अवसर और समाधान भी लेकर आती हैं, और यह हमारी जनजातीय समुदाय पर भी निर्भर करती है। संथाल परगना की विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ की महिलाएं, जनजातीय महिलाएं अब शिक्षा के रूप में जागृत हो चुकी हैं। देवघर के ही डिप्सर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का नाम लेना चाहूंगी, जहाँ की दुमका, पाकुड़, रांची आसपास की जनजातीय महिलाएं डीएलएड, बीएड और एमएड की प्रशिक्षण लेने के लिए आती हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। अब चूंकि महिलाएं जागृत हो गई हैं, वो शिक्षा को, अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। एक समय था कि महिलाएं का संघर्ष सड़क से लेकर और आज के वक्त में संसद तक पहुंच चुकी हैं। ये महिलाओं की शैक्षिक जागृति का ही परिणाम है, सुखद परिणाम है। देवघर और संथाल परगना क्षेत्र आदिकाल से ही जनजातियों का बसेरा रहा है। दुमका जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु कानू भी तो वो जनजातीय परिवार से ही आते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में भी कई महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों, ब्रिटिश सरकार का, और अपने सहयोगियों का साथ दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर डाले। ऐसी कई उदाहरण हमारी महिलाओं के हैं जिन्हें हम नहीं भूल सकते हैं। आज की महिलाएं शिक्षा के रूप में जागृत हो चुकी हैं, वह अपने अधिकारों को समझने लगी हैं, उनको सम्मान मिल रहा है। जहां जागरूकता है वहां अवसर है, जहां समस्या है वहां समाधान है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी शिक्षा की आवश्यकता है, जहां उनकी रोशनी नहीं फैली है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं तो उनकी पहचान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप में बदल रही है और वो अपनी भूमिका सशक्त कर रही हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं है, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, खेल मैदान से लेकर प्रशासनिक सेवाओं तक, हर जगह जनजातीय महिलाओं की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह उनके साहस, यह उनके साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास का परिणाम है। मैंने स्वयं भी देखा है, अपने आसपास महसूस भी किया है कि शिक्षा ने भेदभाव की दीवारें तोड़ी हैं। आज कई अवसरों पर हम एक पंगत में साथ बैठकर भोजन भी करते हैं। यह केवल सामाजिक बदलाव नहीं बल्कि मानसिक दूरी होने का भी संकेत है। शिक्षा ने उन्हें अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया है, निर्णय लेने की क्षमता दी है, समाज में सम्मान पूर्वक खड़े होने की शक्ति दी है। अगर मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो सशक्तिकरण केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं होता, वास्तविक सशक्तिकरण मानसिक स्तर पर होता है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण देता हम महिलाओं को, कोई भी महिलाएं हैं, चाहे जनजाति हो या साधारण महिलाएं हैं, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सुरक्षा का भाव, निर्णय क्षमता और सामाजिक स्वीकृति। यदि मन मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है। लेकिन चुनौतियां अभी भी शेष हैं, अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारी महिलाओं तक शिक्षा की मशाल, शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। और कुछ जनजाति महिलाओं की ये भी अशिक्षा ही इसके कारण बताएंगे कि कुछ जनजाति महिलाएं जो अशिक्षित है, जो शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाती हैं, उनके जीवन में रोज कमाओ रोज खाओ वाली भावना है, वो बचत नहीं कर पाती हैं, वो भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य को वो गढ़ने के लिए सक्षम पूरी तरह नहीं हुई है। औषधि के रूप में वो अपनी जड़ी बूटियों का ही प्रयोग करती हैं। बीमार पड़ने पर उनके अंदर आज भी जागरूकता का अभाव है। तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिनके द्वारा उन्हें जगाया जा सकता है।
और यह जन जन तक, भारत के जगह जगह तक, हर गांव, हर कस्बे तक इस मसाल को पहुंचाना अति आवश्यक है। और इसके लिए हमारे समाज, देश की सरकार के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी की भागीदारी, समाज की नीति और हम सबों को मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उनका समाधान भी ढूंढना चाहिए कि शिक्षा की अधिक से अधिक पहुंच बढ़ाई जाए, उनके कौशल का विकास किया जाए। ग्रामीणों में कलाकृतियों की कोई कमी नहीं है, उनके अंदर जो हुनर है उस हुनर तक पहुंचाया जाए, देश के कोने कोने तक, और उन्हें वो मान सम्मान, वो पुरस्कार दिया जाना चाहिए जिनके वो हकदार हैं। और मानसिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए, आर्थिक निर्भरता के रूप में उनकी मदद करनी चाहिए और समाज का सहयोग हर जगह उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और अंत में ये यही कहना चाहूंगी कि जनजाति महिलाएं मेहनती हैं, साहसी है और समय के साथ अपने अधिकारों के लिए बेहद जागरूक हो चुकी हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका को हम नहीं भुला सकते हैं। और जब शिक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक सहयोग एक साथ आते हैं तो जनजाति महिलाएं सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज भविष्य को बदल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय जोहार, धन्यवाद। Thank you, ma'am. थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Good presentation. थैंक यू सर। इस अवसर के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, थैंक यू, मैम। नेक्स्ट सीरियल नंबर 10, डॉक्टर तपस्यम जहा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 11, श्रीमती रंजना रावत। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 12, डॉक्टर सुनील भास्कर। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 13, सैयद शहनाज रीमा। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 15, टी सुधा विजी। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 16, डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Dr. Mohammed sir, Assistant Professor of Botany, the new college, Chennai, Tamil Nadu. Yes, sir. Yes, please start, sir. Sorry to interpret. I am serial number 15. Can I proceed after Mohammed Rahmatullah? Okay, ma'am. Okay, thank you. Good afternoon, everyone, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. I am Dr. Mohammed Rahmatullah, working as assistant professor in Department of Botany, the new college, Chennai. Today, I would like to speak on ethnomedicinal orchids and indigenous healing practices of the Darjeeling Himalayas, prospects for tribal development and biodiversity conservation. The Orchidaceae is one of the largest angiosperm families, containing about 763 genera and 28,000 species. In India, this family shows highest species diversity. The Darjeeling Himalayan region is very rich in orchid diversity. Here in Darjeeling Himalaya, there are mainly two tribes, Lepcha and Bhutia. Lepcha and Bhutia tribes possess unique medicinal knowledge. So the indigenous knowledge is declining due to modernization and lack of documentation. So more recently, these orchids are very famous in cut flower industry. They have become multi-million-dollar cut flower industry. 80% of the global population depends on this traditional medicines. So in India, these orchids were used since Vedic period. They are
mentioned in Sanskrit literatures, Nigantus and Amarkosha. In Ayurveda, very famous drug mixture of components, Ashtavarga. So in Ashtavarga, out of 8, 4 are from this Orchidaceae family members. So objectives, the main objectives of my study are to document the ethnomedicinal uses of orchids, to analyze preparation methods, how the tribal people are preparing these medicines with the help of these plants, and disease categories, for what diseases they are used, to apply quantitative tools such as fidelity level, preference ranking, and Jacquard index, and to assess the threats and conservation needs for the protection of orchids, and explore prospects for tribal development. So review of literature. Orchids have been used as, these plants have been used as herbal remedies in different continents like Asia, Africa, America, Australia, and other European continents. However, these plants did not get much significance that they deserve for medicinal values. The available literature on this medicinal studies is limited and scarce. The pseudobulbs of, for example, the pseudobulbs of Bulbophyllum nailogarens are marketed under the brand name Purusharatna. It is mainly used in the restoration of adolescence. So these are some of the medicinal orchids and important plant parts which are used in treatment of different ailments. So study area for field studies were carried out during 2016 to 2024 in the forests of Darjeeling, Himalaya. So while carrying out this ethnomedicinal study, local people, forest officials, and some students residing in the study area helped in identifying the orchids. So this is the study area. This is Darjeeling, Himalaya. Before it was entirely under Darjeeling district, but after 2017, the Darjeeling district is divided into 2 parts, Kalimpong district and Darjeeling district. So these are the different plants collected from this study area. So ethnobotanical studies were carried out in tribal hamlets of Darjeeling district as well as Kalimpong district. So the ethnomedicinal data was collected with the help of the open-ended interviews and the key informants from Lepcha and Bhutia tribes and some rural inhabitants. So the following questionnaire, ethnobotanical data acquisition questionnaire, has been used for collecting the ethnomedicinal data. So fidelity level helps in the determining the relative healing potential of medicinal plants. It is calculated by using the formula FL is equal to IP by IU into 100. And preference ranking is calculated with the help of this. Each informant was given a group of plants to arrange according to specific criteria and was asked to give numerical values. So Jacquard index was used to compare the ethnobotanical data of the present study area with that of the previous ethnobotanical studies carried out in other Himalayan regions. Here Jacquard index is equal to C. C indicates the common number of species in both areas, earlier and present study area. A is the total number of species recorded by earlier worker in other study area, and total number of B is total number of species recorded in the present study area. So coming to results and discussions, 36 species, orchid species belonging to 19 orchid genera were recorded from different forest regions of Darjeeling, Himalaya. Out of 36, 20 are having ethnomedicinal value. So different types of in the study area is having different types of forest or vegetation type, and these are the orchids collected from this different forest regions. So these are some of the photographs of the plants collected from the study area. So out of this 78% are epiphytic, means 78% of the plants are growing on host plants, whereas 22% are terrestrial. So key informants from Lepcha and Bhutia are displayed in this table. They helped in giving the ethnomedicinal data. So this is the Lepcha and Ancestral Museum.
So these people actually helped me giving in the ethnomedicinal data of these tribes. So the age of informants range from 30 to 80 years and 60% were above 50 years. Elder healers retain maximum knowledge. Knowledge gap is seen in the younger generation. We identified five different types of healers, such as traditional healers, spiritual healers, herbalists, midwives, and each healer possesses unique method in orchid-based treatment. Role of women healers. Women possess stronger ethnomedicinal knowledge. So, because these women will be actively involved in the daily forest activities and resource gathering. Similar patterns of data were also observed in Africa and Morocco, where women healers have more ethnomedicinal knowledge when compared to the men. So, secrecy and knowledge transfer. See here, the ethnomedicinal knowledge is shared orally within only the families, because they have fear of misuse leads to secrecy. Because fear of misusing the data leads to secrecy. Lack of documentation threatens continuity. Here it is important to mention that, worthwhile to mention that literate persons gave less information about the medicinal plants when compared to illiterate persons. Why? We investigated what are the reasons. They told less knowledge among illiterate persons is due to lack of interest and low revenue in traditional medicine. So similar observations were also recorded in this region by other researchers also. So here these traditional healers are following polyherbal practices. Not only orchid, they are giving some additives such as garlic, ginger, turmeric, onion, and honey. They believe that synergistic effect increases healing potency. So these are the mode of preparation and parts used from the ethnomedicinal plants. Each preparation has very unique process, and they are involved in treatment of various ailments. For example, this Dendrobium ephyllum, fresh plant is grinded along with onion and a small amount of water, and it is externally applied on the wound with the help of a clean. They believe that this this fluid extract is powerful in treating snake bites and scorpion bites. Here, most of the tribal healers use leaf. 55% of tribal healers use leaf, and 40% they use in paste form. And here, most of the tribal healers use for the medicinal plants for skin-related problems, treatment of the skin-related problems. So fidelity level, here we observed that in our study, we observed that Dendrobium ephyllum is widely used for snakes or scorpion bites, because it has given 100% fidelity level. So preferencing ranking of factors supposed as threats to ethnomedicinal orchids, we asked tribal peoples to arrange the plants based on the threat. They arranged deforestation. They gave deforestation first ranking, followed by landslides, because the fragile ecosystem of this dazzling Himalaya is subjected to landslides due to deforestation. Deforestation and landslides are the major problem for the survival of these ethnomedicinal orchids. So preference ranking, we asked out of 20 orchids, which plant is more extremely powerful. They indicated that whole plant of Dendrobium is used in skin diseases, apart from snake bites and scorpion stings. So Jacquard index, we started to, after collection of the ethnobotanical data, we compared our present study data with the previous Himalayan region work, such as Meghalaya, Western Himalaya, Sikkim, and Nagaland. We observed that less similarity, which indicates that unique cultural heritage of Darjeeling Himalaya. So the following conclusions were drawn from this present study. The Darjeeling Himalaya holds indigenous knowledge of medicinal orchids preserved by Lepcha and Bhutia communities. Traditional healers, especially elderly women, play a key role in conserving and transmitting this knowledge through secrecy and generational gaps
threaten its continuity. So leaves were the most frequently used plant pot, reflecting their availability, regeneration capacity, and concentration of bioactive compounds. So the comparative analysis confirms, using Jacquard index confirms that unique ethnomedicinal heritage of Darjeeling Himalaya. Integrating ethnomedicinal knowledge with modern research offers strong prospects for drug discovery, tribal livelihood enhancement, and biodiversity conservation. So prospects for tribal development. So traditional knowledge documentation, recording and preserving Lepcha and Bhutia medicinal practices, creating community-owned knowledge database to loss of heritage. So apart from this, community-based orchid cultivation, training tribes to cultivate medicinal orchids sustainably is very important, and establishing village-level orchid nurseries and small entrepreneurial units are very important. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Mohammed, sir. Good presentation and good speaking. Okay, sir. Next serial number 7. Next serial number 15. T. Sudha Viji. T. Sudha Viji. Yes, sir. Yes, please start में. मोहम्मद सर आपका पीपीटी ऑफ कर लीजिएगा. There is. So myself Sudhavali, PhD scholar from Anna Adesh College, Chennai. My topic is about the impact of the digital divide on women's opportunity and progress. And PPT not so, man. Oh, but it's showing me sharing. It's over PPT not so. Please check. Can we see the PPT? No, madam, your screen is visible. Oh, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Are you able to see the presentation? Yes, madam, please start. Okay. Come. Okay. Myself Sudhavali, PhD scholar from Anna Adesh College, Chennai. So my topic is about the impact of digital divide on women's opportunity and progress. So as you can see the interaction part, where there is a rapid push towards the digitalization at nowadays, we can see, but at the same side where we can see that there are still who are were insufficient with this digitalization skill and the power to use those things and all those things. So this imbalance results in an unequal digital environment where the privileged continue to advance while the marginalized are, especially women, who remain excluded. So this digitalization had widened socio-economic gaps rather than bridging them. So the next is understanding the digital divide.
This digital divide gap is actually between those who have and those who have not using this information communication technology. It includes gaps in device ownership, internet availability, digital skills, and meaningful usage of other things as well as. This divide is no longer only a technical issue anymore because, and today you can see due to this digitization, there is social inequality influencing people's ability, work, communication, and participation in the digital economy. All these are being insufficient due to this unavailability. And challenges and realities. As a challenge and reality, we can always compare this rural and urban because where the urban will be in advanced and as well as if we see the rural, they will be equally disadvantaged because of all this availability of internet and digital skills, all those things. And also you can see that economic inequality is being a very concerning one due to this digitalization, where the low income household often prioritize men or boys to get a digital skill than women. Where another thing is household discrimination, where women frequently receive less access to shared digital resources because always there will be some other commitment or responsibilities for women to keep on doing than men, taking care of children, whole household, going to work and everything. So this gender-based restrictions, we can always see anywhere in the place. These factors combine to deepen the digital gap. And next, as per the National Family Health Survey, which is done on 2019 to 21, we can literally see the percentage here. Only 33% of women in India is having access to the digitalization, where the men count is higher than them with a 57% of men. And women and digitalization in India. So this digitalization and women is exclusion is influenced not only by lack of device, but also by the structural factor, because always this cultural norms discourage or restricts women's usage of technology. Low literacy levels reduce their confidence in navigating the digital platforms. Local language content is limited, making it difficult for many rural women to engage in online. Restrictions on mobility and lower decision-making power limit opportunities for technological adoptions. And next we can see the barriers facing by women, this educational barriers, where as I said, due to low education or no education, their lack of confidence is being a barrier due to this education, and they are not able to get all these resources which we can get from the digitalization. Another one is financial literacy, where they are not able to have a smartphone or something for themselves, where they have to depend on the father or the family or the husband, someone else, due to this financial literacy thing. Or if they have to learn something new skill or something, again they have to depend on all those factors. And next one is social cultural activity. As you can see in that picture itself, we can see women have so many responsibilities. So after doing all these chores, where there won't be a time for them to sit and learn for a skill, or to at least have a free time with them for the digitalization. And the language and economic barrier is another big concern and issue, where we have to show more concern. And also there are some initiatives brought by government and also from private sectors. This first one, digital PMDIGA, which is Pradhan Mantri Gramin Digital Chaksra Abhiyan, which is brought by central government to make the rural citizen be a digital literacy, because now it has been, everything has been a digitalization, e-governance, e-health, everything. So making a rural people to be a digital literacy is one of the main factors. So this is one of the main things, where especially this is for the disadvantaged group, how to access internet, how to use the phone, how to hack some government's schemes online, all those things were taught through this scheme.
Mostly the scheme is brought to cover the one member from each household who is being a non-user of this. Next one, you can see the Mission Shakti, which is for women's safety and empowerment. This is like a umbrella scheme, which is there are two sub schemes inside this. One is Sambal and one is Janjatiya, where the Sambal focuses on safety and security, one-stop center for the women, women helpline, Beti Bacho, Beti Padho, all these are coming under the Sambal sub scheme, where in Samritya they focus on safety and affordable stay for the working women or studying women, like a hostel. So this is what Mission Shakti is used. And after that, this Internet Shati, where it is a community-driven digital literacy to empower the rural women, especially rural women. But it is brought by Google India and Tata Trust, but as of now, it is not running because our government scheme, which I said first, Pradhan Mantri, that has been overtaken and they are doing the job now. But they are still doing it at a minimal level where the need is more. And next one is Mission on Education, MIEICT, which is brought to bridge the digital gap, digital skill gap in education. Like we have now the popular Swayam portal, Swayam Prabha, NDL, spoken tutorials, all these are brought under this scheme. The next one, the last one is BharatNet, where it brought a broadband connectivity to all the rural people. Only because of this BharatNet, now the all over the rural area also able to access the e-governance, all those things and everything. So now, as a conclusion, I want to say what are the way forwards we can do to improve these things, improve infrastructure and digital literacy, ensure safety and security in digital space, especially for the women, because nowadays we can see what all the threatenings we can get from digitalization and everything. Focused intervention for marginalized women, as well as we have to focus on how to make them digital literacy and along with safety and security, and improve the digital tools and make women participate virtually, make it easy for them to understand them and everything. Equitable access to all without any discrimination is the main thing we have to focus on, continuing it into the way forward. Thank you. Thank you, ma'am. Good presentation on the CPT. Next, serial number 17, Dr. Rakhi Vanskar. Dr. Rakhi Vanskar. Next, serial number 18, Reena Vandre. Reena Vandre. Okay, next serial number 19, Monica. Monica. Okay, next serial number 20, Jyoti Pawar. Jyoti Pawar. Okay, next serial number 21, Dr. Asha Kumari. Yes, sir. Dr. Asha Kumari. Yes, sir. मनोविज्ञान श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी बिहार. Yes, sir. Yes, sir. ओके वेल, प्लीज स्टार्ट. सभी को मेरा प्रणाम. टॉपिक है भारत में जनजातीय समुदायों में शिक्षा की स्थिति एवं विकास. भारत एक बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश है. यहाँ जनजातीय समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में वे अभी भी पिछड़े हुए हैं. शिक्षा के द्वारा ही सर्वांगीण विकास संभव है, किंतु जनजातीय समाज की भौगोलिक स्थिति, गरीबी, भाषाई अवरोध और सांस्कृतिक भिन्नता उनके शैक्षिक विकास में बड़ी बाधा है. जनजातीय क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालय दूर हैं और वहाँ संसाधनों की कमी है. कई बच्चे विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें परिवार की आर्थिक सहायता करनी पड़ती है. शिक्षा का माध्यम प्रायः हिंदी या अंग्रेजी होने से
स्थानीय जनजातीय भाषाएं उपेक्षित रह जाती हैं, जिससे बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। साथ ही कई शिक्षकों का जनजातीय संस्कृति से अपरिचित होना भी शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में जनजातीय शिक्षा को बढ़ाना और उनका विकास करना, इसके लिए ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जिनमें उनकी भाषा, संस्कृति आदि पाठ्यक्रम में हो। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी भाषा में दी जाने की व्यवस्था हो। ऐसा शिक्षक हो जो जनजातीय संस्कृति से पक्षपात रहित हो। हाल के वर्षों में सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की है, जिनसे जनजातीय शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है। कई गैर सरकारी संगठन भी स्थानीय भाषा में शिक्षा देकर बच्चों की रुचि बढ़ा रहे हैं। फिर भी अभी चुनौतियां शेष हैं, जैसे डिजिटल सुविधाओं की कमी, बालिका शिक्षा में असमानता और सामाजिक जागरूकता का अभाव। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि शिक्षा को जनजातीय संस्कृति और भाषा में जोड़ा जाए तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अंततः कहा जा सकता है कि जब शिक्षा को जनजातीय जीवन और संस्कृति का अंग बनाया जाएगा, तभी वास्तविक शैक्षिक उपलब्धि संभव होगी। शिक्षा जनजातीय समाज के लिए सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों का माध्यम बन सकती है। धन्यवाद। जी सर। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर आशा कुमारी मैम, गुड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सीरियल नंबर 22, डॉक्टर संतोष एकनाथ। डॉक्टर संतोष, डॉक्टर संतोष। डॉक्टर संतोष। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 23, हसन राजा। हसन राजा। नेक्स्ट सीरियल नंबर 24, नीलम उइके। नेक्स्ट सीरियल नंबर 25, राजेश कुमार। डॉक्टर चित्रा वर्मा। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 27, डॉक्टर रीना नीलिमा लकड़ा। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 28, डॉक्टर 29, डॉक्टर गुरराम वीरा। डॉक्टर गुरराम वीरा। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 30, ब्रिजभूषण वर्मा। यस सर। यस, ब्रिजभूषण वर्मा सर, रिसर्च स्कॉलर, स्टेट एसोसिएट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। यस सर, यस सर। जी सर। छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति में राजनीतिक सहभागिता। जी सर, जी सर। आज के इस नेशनल सेमिनार में उपस्थित सम्मानीय समस्त सर, मैडम और ऑर्गेनाइजेशन संगठक को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए, मेरी प्रेजेंटेशन के लिए मुझे अनुमति प्रदान की गई। मेरा टॉपिक है सर, छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति में राजनीतिक सहभागिता। चूँकि जो विषय है जनजातीय विकास का, और विकास का पहला क्रम जो हमें दिखाई देता है लोकतंत्र में, वो होता है कि आपकी सहभागिता कितनी है राज्य को और उस विकास में। क्योंकि प्रत्येक समाज को चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक राज्य में व्यवस्था बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे विभिन्न देशों में चलती आ रही है। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसके पूर्व राजतंत्र था, कुछ देशों में निरंकुश तंत्र भी चलता है।
समाज के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, व्यवहार है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही तरीका से निर्देशित करने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी तरीके से उसे परिभाषित किया है। जैसे आमंड और पावल विद्वान है, उन्होंने कहा था कि जो सिस्टम में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें समाज के सदस्यों की यदि संलग्नता है, यदि उसका जुड़ाव है, तो उसको सहभागिता या पार्टिसिपेशन कहा जाएगा। उसी तरह से हार्टिंगन और नेल्सन जैसे लोगों ने भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में यदि लोगों अपना भूमिका निभाते हैं, तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या राजनीतिक सहभागिता कहा जाएगा। चूंकि हम लोग देखते हैं कि विभिन्न तरीकों से हम राजनीतिक सहभागिता में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। सामान्यतः जनजाति या आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में सामुदायिक किस्म की गतिविधियां होती है, जिसमें वो एक ग्रुप के रूप में अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ज्यादा माने जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की व्यवस्था हो। तो मिलजुल करके कार्य करने की एक परंपरा होती है, ये एक अलग तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि व्यक्तिगत तौर पे या सार्वजनिक मुद्दों पर कुछ सुलझाने के लिए हम लोग अपने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क करते हैं। और जब व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के या उस कुछ आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जुलूस के माध्यम से, धरना के माध्यम से, या कुछ मतभेद है तो बहिष्कार इत्यादि के चीजों का हम लोग सहारा लेते हैं, यह भी एक प्रकार का राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति ही माना जाता है। और नागरिक जो सहभागिता होती है, उसका मुख्य जो बल होता है, उसमें कोई भी नागरिक जो है वो अपने सार्वजनिक नीति है या निर्णय है, उसको कहाँ तक के वो प्रभावित कर पाता है। चूंकि हमने इससे जो शोध जो साहित्य है उसका पुनरावलोकन किया, तो उसमें कुछ विद्वान जनों ने इस विषय पर अपना रुचि दिखाया था। जैसे कि अनुसूचित जनजातियों की जो राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन में यह पाया गया था कि शिक्षा है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसमें जो परिस्थितियां होती है राजनीतिक सहभागिता को निश्चित तौर पे प्रभावित करती है। और यह उन निष्कर्ष में निकला था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक राजनीतिक समझ का स्तर थोड़ा कम है। उसी तरह से हमारे जो कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति है, उसका जब स्टडी किया गया, तो वहाँ पर पेयजल का अभी भी जो स्तर है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस पर प्रीति मिश्रा मैम ने 2022 में जो अपना अध्ययन किया था उसमें पाया गया। तो एक और केस स्टडी में जो अध्ययन किया गया था, उसमें यह भी बताया गया कि बैगा जनजाति में सामाजिक जागरूकता की और भागीदारी अभी सीमित है। उसका कारण यह बताया गया था कि वो जनजातियों के भीतर में अन्य जो जनजाति है उनकी भूमिका ज्यादा है और बैगा जनजाति की कम। इस अध्ययन से हम इस जो शोध अध्ययन का हमारा उद्देश्य है कि हम बैगा जनजाति का राजनीतिक सहभागिता पता कर सके, और दूसरी बात की राजनीतिक जो अभिरुचि है उसका बैगा जनजाति में कितना इफेक्ट है, लोकल बॉडी में उन लोग किस स्तर पे नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इन तीन चीजों पे मैंने इस अध्ययन किया है, और इसके लिए मैंने 2 सोर्सेस का उपयोग किया। एक साक्षात्कार के माध्यम से अवलोकन करके और ग्रुप डिस्कशन करके। दूसरा मेरा सोर्सेस था कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो प्रतिवेदन जो प्राप्त हुए हैं, इंटरनेट में जो जानकारी प्राप्त हुई, उनके माध्यम से, सेकेंडरी सोर्स के माध्यम से मैंने ये जो अपना रिपोर्ट तैयार किया है। और इसके लिए मैंने दैव निदर्शन पद्धति के माध्यम से लगभग 300 उत्तरदाताओं का चयन करके कुछ तथ्य आंकड़े हैं जिसको आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें राजनीतिक सहभागिता से संबंधित जानकारी के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और परिवार या पड़ोसी मित्रों के माध्यम से जब हमने जानकारी मांगा कि आप लोगों का राजनीतिक चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी क्या है, तो उसमें लगभग परिवार और पड़ोसी के माध्यम से ही हमको लगभग 57% मामले में सहमति दिखाई दी गई। बाकी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन लोगों की अभी उतना जुड़ाव नहीं है, उसके माध्यम से उन लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। दूसरे तौर पर हमने देखा कि ग्राम पंचायतों के बारे में उनका जो जानकारी है, तो लगभग 30% के आसपास लोगों ने इस पर अपनी सहमति बताई। बाकी जिस प्रकार से व्यवस्था चलती है उसी के अनुरूप उन लोगों का काम रहता है। अभी उतनी जागरूकता जो है
पंचायत स्तर पे भी हमको ज्यादा दिखाई नहीं दी। वो उसी तरह से राजनीतिक रुचि देखने में यदि हम देखें तो धीरे धीरे इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 60 से 65% लोग आजकल जिस प्रकार से लोकतंत्र का जो स्वरूप बदला है और जमीन में जा कर के जो हमारे जो बंधु हैं वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इन लोगों का जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बढ़ा है। उसी तरह से यदि हम इस लोकल निकाय की बात करें तो अभी का जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें जनपद में 2 जनपद सदस्य बने बैगा जनजाति से। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आज तक के इस प्रकार की चीजें हमको दिखाई नहीं देती थी। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो अभी प्रतिनिधि के रूप में आसानी से चुनाव लड़ने के लिए तो उम्मीदवार उन लोग सामने नहीं आ पाते हैं पंचायती चुनाव में, क्योंकि उनका जो तरीका है वो सामाजिक तौर पे ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा चीज़ यह है कि जनजातियों में विभिन्न प्रकार के जनजाति होते हैं, तो वहाँ पर अन्य जो जनजाति हैं बैगा के अलावा उनकी राजनीतिक सहभागिता ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत बैगा जनजाति की, और जिसके कारण से अभी तक जो योग्य नेतृत्व करता है हमारे सामने दिखाई नहीं देते। इसके अलावा जो बेसिक नीड्स जो होती है, बेसिक आवश्यकता है, उस पर भी बैगा जनजाति पे काम करने की आवश्यकता है। यदि हम उसको जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को अच्छे से क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित तौर पे वो राजनीतिक सहभागिता के महत्व को समझेंगे और राज्य में उनका नेतृत्व जो है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये मैं अपना इस पीपीटी के माध्यम से सुझाव भी मैंने कुछ दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सरपंच पंच तक के ही सिमट तक के रह गई है। विधानसभा सीटों में उनका जो सहभागिता है भी दूर की बात है, वहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि विधानसभा में विधायिका है, कानून बनने का काम होता है, और जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक के आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, आपका नेतृत्व नहीं होगा, तो लोग आपके बारे में, आपके हितों के बारे में काम करने में थोड़ा सा परेशानी जरूर जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ यदि बैगा जनजाति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उम्मीद करते हैं कि जो सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है वह मुख्य धारा में आए और जिससे लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा का संचार हो। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Prajbhushan Verma, sir. Good presentation. Thank you, sir. Next serial number 31, Dr. Peeth Nayak. जी सर, आई एम रेडी सर। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? No, sir. Dr. Peeth Nayak, sir, Associate Professor of Law, KBN University. सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर स्क्रीन आ गया सर? No, sir. नहीं आया सर? अभी दिख रहा है सर स्क्रीन? No, sir. मैं एक बार ट्राई करता हूँ, आ गया तो ठीक है सर। सर अभी? Yes, sir. आ गया सर, आ गया। आ गया सर, ओके, ठीक है। So my presentation is on the topic of tribal rights in India, the constitutional safeguards that are there, the judicial directions, corporate social responsibility, and the emerging challenges that are there for the tribal rights. So overall, this is the flow of the paper. Coming to the objectives of the study, one is to analyze the constitutional and statutory framework, then examining the Supreme Court and High Court directions, evaluating the role of CSR in tribal development and the controversies related to it, and also identifying the contemporary challenges that are there, and then suggest actionable recommendations for the different stakeholders.
The research methodology is basically from the field of law. I've used legal doctrinal approach, which analyzes the constitution, the statutes, and also the case laws relating to the field. Then secondary data is obtained from some government reports, scholarly articles, and different tribunal orders. I have covered a couple of case laws. Prominent among them is the Asdev Anand dispute, which was decided only 2 days back by the High Court of Madhya Pradesh. And also there are qualitative and interpretive policy oriented suggestions that are coming out of the study. The constitutional framework, as we all know, the articles deal with 14, 15, 16, and 46. All these deal with the fundamental rights. We also have articles 330 and 332, and also the Forest Act and other things. So there are political safeguards which have been provided for the development and protection of the tribals. There is also administrative autonomy in the 5th and 6th schedules. 5th schedule applies to the central part of India and 6th to the northeastern states. So even there is provision for them to even create their own acts. So which is generally done by the central government and only by the state governments. But the 6th schedule allows some of the tribal areas in northeastern India to create their own acts also. So it is based on that even the judgments and other things are passed. Then there is provision for the financial support under Article 275. There is a tribal subplan also, wherein specific activities for the development and benefit of the tribals can be taken up. Cultural safeguards are provided in Article 29. Then there is the Forest Act also, and the directive principles are always there, which is applicable for the entire country, and with special provisions can be made under that. But they cannot be implemented directly to the courts. Now coming to some of the judgments of the Supreme Court. In Samanta versus Andhra Pradesh, mining in scheduled areas was declared unconstitutional, and even today there is a restriction of 1 kilometer area to be left where mining cannot be taken up. Then Niyamagiri case, Gram Sabha consent was considered determinative. Without the consent of Gram Sabha of the tribals, no activities can be taken up there. In Sarananda case, which was decided 2 days back, it has created a new kind of problem where the rights within the sanctuaries, the land which was given to the tribals for their exclusive use, it was the rights were taken back by the state government, and High Court has upheld that taking back of the rights. This is the first time that rights given to the tribals has been taken back by the government, and it has been upheld by the High Court of Madhya Pradesh. Then also we find that inheritance laws, because most of the tribals, they generally follow the Hindu law also, but according to the Hindu law, the women or the girl children also have right in the properties, but in case of the tribals, it has been held that the customary law will prevail, and the daughters do not have right in the property. They cannot claim equal rights. This is basically meant to prevent fragmentation of the land. And when it comes to tourism also, there has been regulation in the Ajay Dubey case where it has been said that tourism must not disturb the life, and it should not also create an imbalance in the tribal society. Coming to the CSR, we find that companies have taken up CSR activities. They have provided schools, health centers, skilling and market linkages. But the challenge is it is more of tokenism. It is being done more as a manipulation, and it is creating dependency, and it is also disrupting the cultural aspects of the tribals. This is a challenge that CSR is facing. And also the matter has gone to the courts also, where judicial scrutiny has taken up. They have said that CSR cannot substitute constitutional rights, and in the name of CSR, companies cannot take up their own benefits as a garb under CSR. Now coming to the case which has created a lot of problems, and it has also brought about in the highlight the rights of the tribals. In this case, if we look at the timeline, the CFRs were granted in 2013. It was revoked by the state government in 2015. National Green Tribunal gave a clearance in 2019, and this involves the Adani Group, where they wanted to have mining of the coals for their power plant,
and then they produced documents saying that they had got consent from the villagers, but it is alleged that all the consent was manufactured in 2022 by some of the peoples who went to the Supreme Court. A case was filed in the Supreme Court in 2024. The matter was pending, but only 3 days back, 13th November, High Court has ruled in favor of the corporate, saying that the revocation of CSR is valid by the state government. So this shows that there is a lot of tension which is happening in the area because of mining on one side, which for the development sake, and the consent by villagers being disputed, and the harm for the ecology being the third dimension. So now coming to the broader challenges, mining and infrastructure, displacement of the people, the ecological damage, this is very obvious. Tourism is there, where commodification of culture has been highlighted. Even at the start of the program, it was highlighted like how the paintings, Worli paintings were commercialized in other places without proper sharing of the profits, etc. by the speaker. And there is also intrusion into sacred places by people in the name of tourism, which can disturb their culture. Education has language barriers and dropout rates are very high. Culture, erosion of oral traditions, weak IP protection, intellectual protection is there. It was also highlighted by one of the earlier speakers with respect to medicine. Healthcare, there is poor access, high mortality, and rising non-communicable diseases. There is a lot of displacement, and rehabilitation is not being taken up properly, and resettlement is also an issue. And new challenges which everyone faces, including the tribals, is the climate change, erratic rainfall, forest degradation. These are bringing in new challenges, and there is also a digital divide. Digital inclusion also is bringing in some problems in terms of losing of the culture. Now, the findings of this study are constitutional safeguards are strong, but implementation is poor. Judicial directions are there which reinforce rights, but compliance is uneven. CSR is providing benefits, but legitimizing extra activities under the name of CSR is also visible. We find that from the Hasdeo Arvind, that fragility of tribal rights is there. Tribal rights are being violated. Then challenges are in multi-dimension. We have seen from this earlier broader challenges aspect. And then tribal communities are critical actors in preservation, and it is they who have to take up preservation. Coming to the conclusion part of it, the tribal rights, constitutional safeguards are there, but they are under pressure. CSR is useful, but it cannot be a replacement. Courts are emphasizing the rights as being non-negotiable, but implementation is required. Sustainable preservation requires multiple stakeholder action. Tribal communities must lead in governance, culture, and adaptation, and they have to stand up for their rights, and it is the duty of all the others to help the tribals in maintaining their rights. Thank you. I am open for any question and answers, or suggestions are also welcome. Sir, I am done with my presentation. If there is any questions, sir. Thank you, Dr. Peeth Nayak, sir. Good presentation and good picture. Thank you, sir. Next serial number 32, Dr. E.T. Raj Sharma. Dr. E.T. Raj Sharma, sir. Yes, Dr. E.T. Raj Sharma, Assistant Professor of History, MBS University, Ajmer, Rajasthan से हैं. Yes, please start with. Thank you very much, sir. I am Dr. E.T. Raj Sharma from MDS University, Ajmer. The topic of my paper is Adivasi Consciousness and Mobilization, an anthropological analysis of Birsa Munda's Ulgulan. Birsa Munda occupies a central place in the history of India's tribal resistance. His movement, known as Ulgulan or the Great Tumult, was a powerful expression of Adivasi resistance against British colonialism, missionary influence, and exploitative agrarian systems in the Chota Nagpur Plateau. The rise of Birsa Munda as a charismatic leader symbolizes a profound shift in Adivasi consciousness.
marked by cultural revival, socio-religious reform, and political assertion. The aim of this research is to analyze how this consciousness emerged, spread, and ultimately mobilized thousands of tribal individuals. The hypothesis of this research is based on the question that what socioeconomic and cultural conditions enabled the rise of Adivasi consciousness under Birsa Munda, and how did religious reform and cultural revival shape the nature of Ulgulan that anthropological processes helped mobilize the Munda community during the rebellion. Theoretical framework said the analysis draws on four important theoretical traditions. The first is subaltern studies framework. Ranjit Guha's concept of autonomous domain of subaltern politics helps understand Ulgulan as a movement with its own internal logic independent of elite interventions. The Munda rebellion was rooted in local grievance, cosmologies, and cultural practices. Second, millennial movements. Peter Worsley's theory explains how oppressed communities often develop prophetic leaders who promise a new moral and political order. Birsa's declaration of Birsa Raj fits this pattern. Anthropology of tribal identity. And anthropologists like Warrior Elvin and Nirmal Tete emphasize distinctive indigenous worldview shaped by land kinship and spirituality. These elements form the basis for collective identity. Adivasi identity in Jharkhand has been significantly reshaped since the Ulgulan, both through direct legacies of Birsa Munda's movement and through ongoing struggles over land, culture, and political autonomy. Revitalization of cultural and political identity. The Ulgulan sowed the seed for a strong sense of Adivasiyat, a concept rooted in collective identity, rights over land, water, and forest, as well as cultural autonomy. This legacy has remained strong in Jharkhand, where today's Adivasi movements continue to demand recognition of their distinct Sarna religion, protection of ancestral land, and resistance of assimilation by dominant cultures or faiths. Modern subsume Adivasis under other categories instead for grounding the narrative of being original inhabitants deserving of protection and recognition. Impact of post-Ulgulan legislation and statehood. Ulgulan's emphasis on Jal Jangal Zameen, that is for water forest land, directly influenced landmark legal protection like the Chota Nagpur Tenancy Act, intending to safeguard Adivasi land rights. However, land alienation development include displacement and threats of internal colonialism have persisted, sparking large-scale protested and mass mobilizations, especially when policies are seen as diluting Adivasi rights. The creation of Jharkhand as a separate state in 2000, deliberately on Birsa Munda's birthday, was itself a major assertion of Adivasi identity and their historical fight for self-rule. Cultural continuities and new challenges. Despite resilience and adaptation, including Adivasi empowerment in urban spaces and evolving expressions of Adivasi identity. Challenges like dispositions, cultural erasures, and struggles over the recognition of distinct religion and traditions continue. Birsa Munda's life legacy have become touchstones for cultural revitalization, inspiring newer generations to reclaim and reinterpret Adivasi heritage in contemporary settings. The fight for recognition, such as effort to include the Sarna religion in the Indian census and resistance to outsider narratives like Vanvasi versus Adivasi
reveal how Ulgulan remains an active force shaping Adivasi identity and politics. The political assertion of Adivasi identity continues through electoral choices, legislative battles, and ongoing cultural movements. In summary, since Ulgulan Adivasi identity in Jharkhand has evolved for primarily localized struggle to a broader movement for cultural survival, land rights, religious recognition, and political self-determination, all anchored in the enduring inspiration of Birsa Munda's legacy. Cultural resistance theory said that according to James Scott, resistance often takes cultural forms, songs, rituals, myths, and symbols. Ulgulan was deeply embedded in everyday cultural expressions. Socioeconomic background of Munda community is the Munda tribe traditionally followed the Khunt-Katti system of land ownership, where clans collectively owned and cultivated land. British colonial rule disrupted the system through introduction of zamindari and jagidari intermediaries, settlement of outsider caste decus as moneylenders and landlords, harsh forest laws restricting access to resources, and Christian missionary influence altering socio-cultural norms. Poor taxation policies, indebtedness, forced labor, and loss of ancestral land intensified grievances. The traditional Munda Manki administrative system weakened, creating a vacuum of authority that Birsa would later fill. Emergence of Birsa Munda as a leader. Birsa's early exposure to missionary schools gave him literacy and awareness of colonial structures. However, he later rejected missionary influence and proclaimed visions that marked him as a divine messenger. Birsa as Dharti Aba. Birsa presented himself as Dharti Aba, means the father of the earth, a spiritual and political leader destined to restore the golden age of Adivasis. His teaching emphasized on purification rituals, rejection of Christian practices, abstinence from alcohol and witchcraft, return to traditional Munda religion Sarna, and ethical discipline and community solidarity. A religion political synthesis, Birsa's message intertwined divine authority with political mobilization, enabling him to unite scatter tribal clans into a collective movement. Adivasi consciousness in Ulgulan, the movement strength lay in its ability to form a shared community identity. Cultural revival as resistance. Birsa called for a return to traditional customs, scared grooves, rituals, and communal land practices. This revival challenged missionary and colonial influence. Land as identity. For Adivasis, land was not a commodity but part of their social and spiritual universe. Losing land meant losing identity. Birsa's call to reclaim ancestral land became a rallying cry. Birsa Raj as vision. Birsa predicted the establishment of Birsa Raj, a just order free from British oppression. This vision generated hope and collective energy. Anthropological analysis of mobilization. Symbols and rituals. Gatherings at Dombari Boru were infused with scared symbols, drums, flags, songs that systematized resistance as a scared duty. Please conclude. Okay, sir. Okay, sir. As we see that in resistance, not only youth is involved, mobilization of women is also important. Birsa Munda consciously involved women as integral participant in the Ulgulan movement. Women organized and managed logistics, engaged in military drills, and administered the new rebel base at Dombari Buru.
They also acted as informants, preachers, cooks, bodyguards, and even fighters, making them the backbone of the movement. Birsa's religious and even fighters social reform emphasizing purity, self-discipline, and equality. Uh, thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak. नमस्ते सर. नमस्ते सर. Thank you, ma'am. Good presentation. Yes, Thank you, sir. Parmanand. जी सर, मुझे भी शोध वाचन करना था. क्या तो सीरियल नंबर है सर आपका? सीरियल नंबर तो पता नहीं सर, अपडेट नहीं हो पाया सर इसमें. अभी आप वेट करिएगा, अभी हम लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं. जी जी. लास्ट में मैं सभी को ओपन सेशन में समय दूंगा, अगर जी. जिसको प्रेजेंटेशन करना है तो लास्ट में भी ज्वाइन रहे. अभी मेरे जी. पास और भी नेम है, उसके बाद मैं सभी को चांस दूंगा. जी सर, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 33, पारस कुमार महावर. पारस कुमार महावर. नेक्स्ट सीरियल नंबर 34, प्रोफेसर जी मारी सुनंदा. प्रोफेसर जी मारी सुनंदा. नमस्कार सर. प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तेलंगाना. यस, प्लीज स्टार्ट मैम. आपका टॉपिक है ट्राइबल एजुकेशन इन तेलंगाना. Can I share my PPT, sir? Yes, yes, please share me. Sir, is it visible? It's PPT not visible, ma'am. Screen is visible or PPT not so. Sir, I'm trying to share it, sir. Sir, can you see it? No, madam. No problem, ma'am, without PPT presentation. Yeah, okay. Okay, sir. So I'm Professor J. Mary Sunanda, working at Dr. B.R. Ambedkar Open University in Department of Education. I thank all the organizers for giving me this opportunity. My title is Tribal Education in Telangana. So in my presentation, I have added who is a tribe. You know, since morning from 12 o'clock onwards, we have been listening to tribes and how the Bhagwan Birsa Munda's 150 anniversary, birth anniversary is being celebrated. He was born in 1875 and Ambedkar sir was born in 1891. So sir is senior to him, how he should be venerated. We should all know about it. Okay, so in my presentation I have who is a tribe. Tribe means how do we understand a tribe? Not by his caste, but some characteristics are there. They are referred to indigenous community. Tribes, after independence, they are recognized by our government for special care, protection, assistance, and here I say hand-holding. Very people are saying that all the government schemes are not reaching to the majority of the tribes. Then we need a hand-holding. Okay, so therefore continuous assistance. This I have added in my last slide also.
So it comes to your notice that how many tribes are there. Throughout our India, we have so many, 75, something like divisions are there. Most of them are there living in different parts of our India. And the tribes names are given in the website, like they are the Koya largest tribal group, followed by Lambada, Banjara, and you have Chenchu, and you have Gujars. You have so many tribes, there are the names, but unfortunately, some of them are not documented also. For every 1,000 of male are 977 female. When we come to know about the occupation, many people do not know. They were born in forest. They lived in forest. They lived in forest as hunters. Then after so many years, they became food gatherers. Then after food gathering, there is a very interesting story, If you look into some of the case studies, the interesting stories are there that really inspires us to live, to get motivated, and to help them also. Then after food gathering, what they did, they started cattle and sheep rearing to eke out their life. Okay, so money is important, isn't it? So the topic is education. In education, if you look at that, the literacy rate among ST boys is 71.7 and among girls is 54.4. Now it has increased to 2011. 2011, so like this, they are having now. We know what facilities are given to them. There are so many facilities given to them. We can we come across in newspapers, we come across in so many theses, we come across them what you call so many textbooks, government reports, etc., etc. Educational facilities are given. Then, like we all know, they are eligible to contest in the election. They are also to practice the traditional knowledge, and their reservation. They have reservations in educational institutions. Recently, what you call on 14th of November or 15th, 14th of November, IGNO has hosted a web meeting. In that, it was mentioned that the challenges of STs in three different ways. She said it is relocation, resettlement, and rehabilitation. Okay, so these things we know very well. Okay, so they lose connect with the nature. They lost connect with the nature. The one best complaint from ST, community. This community is they lost connect with the nature. They lost the connect with the traditional knowledge, and villages of them, forests are not accessible. Okay, so the government schemes, as we all know, with regard to education. I used one word, hand-holding. Hand-holding means what? Like giving a hand to each child, adult, male, female, etc. In Telangana, there are, sorry for yeah, like adding this information. In Telangana, we have 10.4% of tribes. This is differently stated by different people. Some are saying only 2011 statistics are there. Now 2024 statistics are also available, but some major information is not there available in the sites reports. The key schemes of government are like, we all know many of them have mentioned Ekalavya model schools, post-matric scholarship, hostel facility, ashrama schools, tribal research institute. In Telangana, exclusively Gurukula schools, tribal university is now started, vocational training centers, coaching for students, book bank schemes, etc., etc. Okay, so now what are the problems faced by them? Somebody by my Mahendra sir, I think. Please conclude, ma'am. Please conclude. Now, in the eyes of each student,
each adult, each individual, each citizen, what is needed for them is we need to understand, and then we should give them such facilities. Okay. The problems faced by them are like low level of confidence and motivation, less parental support, language barriers and cultural barriers, no access to schools, colleges, and other higher education institutions, teaching and learning materials are not available, too much of parental expectations, less income, etc. Okay, so the constitutional provisions like all fundamental rights and directive principles of state policy are there for them also, applied to them also. In my conclusion, what I say, while I was searching for some information in the newspapers, magazines, and other related articles, the comprehensive and truthful information is not there. Database is not there. Some 50 girls received some education in Telangana. There is no database what they are doing now. So, in conclusion, I would like to say that that should be included, that should be very proper. And then the mother tongue based education will reduce or restrict the employability and job prospects of the students. This is what Jayati, Chatterjee, etc. they came to know about their findings of their study. So in government, hurdle. There is a lot of gap between the policy and practice just because of the attitude and preferences. Their attitude also is somehow it is not matching to our what you call the policies, practices, and helping them to come into the mainstream. The case studies say that a careful handholding of the interested students is the need of the hour. The Please generalization conclude, is ma'am. Please also conclude. important here. The traditional knowledge of the tribal should be documented and it should come to the national level, and they should be, awarded with some incentives. People have who lived in the forest, they have very good traditional knowledge. Like they have the knowledge of the herbs. They have the knowledge. This is what I've heard so many people saying why they do not go to the doctor. So in each and everything, in medical assistance, in educational assistance, in other types of assistance, they need a hand-holding approach to bring them into the mainstream and make them shine in the in the map of on the map of India. Thank you for your patient listening and hearing. Thank you for giving me this opportunity to say a few words on this occasion. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, Professor G. Mari Sunanda, ma'am. Good presentation. Thank you, sir. Next serial number 35, Dr. Ramesh Ram. Dr. Ramesh Ram, sir. Okay, next serial number 36, Dr. Rajiv Kumar Gupta. Dr. Rajiv Kumar Gupta, sir. Okay, next serial number 37, Om Saran. Om Saran. Sir. Next serial number 38, Dr. Yes. Mukher. Yes, sir. Present, sir. Present. I want to do the presentation now. Okay, sir. Dr. Pradeep Mukharbhai, sir, independent researcher, West Bengal. Yes, please start, sir. Only 5 minutes. Okay, sir. Can you do the screen sharing? I mean, I'm doing it from mobile. It will be difficult for me to do the screen sharing of my PPT. थोड़ा PPT शेयर कर पाओगे सर? आपने भेजा है सर? हाँ भेजा है, कल भेजा है शाम को। कल शाम को भेजा है मेरा मेल से। हेलो। हाँ। ओके सर, ओके।
कल शाम को मेल से भेजा है। ठीक है सर, मैं अभी आपको इसके बाद करता हूँ सर, अभी नेक्स्ट। सर मैं चालू कर देता हूँ, बिना पीपीटी से मैं कोड देता हूँ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके सर, ओके, प्लीज स्टार्ट। अच्छा ठीक है, तब तक आप पीपीटी लगाइए, मैं बोल देता हूँ, चालू कर लेता हूँ। ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी प्रेजेंट ओवर हियर एंड थैंक्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड मूवमेंट स्टडीज मैनेजमेंट स्टडीज, to all members of Janjatiya, Shodh, Peeth, Radiant Group of Institutions and Social Science and Management Welfare Association, and to specifically to all the distinguished guests and delegates present over here in this session. Also, special thanks to Mr. Brajesh sir for giving me this chance. Today, Dr. Pradipta Mukhopadhyay, will present a paper titled on a study on development of tribal medicines for development of tribal culture and tribal societies. The foremost objective of the study has been to find out how the usage of tribal herbal medicines can be utilized in a better manner for the overall development of the rural or tribal people. The second objective of the study is to find out whether development of tribal herbal medicines developed from various herbal and plant species found across our country can go on to help in developing the standard of living of the rural or tribal peoples of India. Okay, first I will discuss about the traditional medicines. Traditional medicines refer to those types of knowledge, skills, experience, practices which are used for proper maintenance and upkeep of physical and mental health of human beings. Some of the different types of traditional medicines in India are: one is Ayurveda, one is Siddha, one is Unani, another is homeopathy, and another is naturopathy. In this regard, the most common advantages of using traditional medicines can be they are much more cheaper than the costly allopathic medicines. In most cases, the traditional medicines also emphasize or helps in natural healing of the human body. Then I will discuss about the herbal medicines. The term herbal medicines refer to that type of medicinal systems which uses different types of plants or different parts of plants to treat various types of illness or diseases for maintenance of human health. Some important points about using herbal medicines or using herbal natural herbs are: in most cases, all natural herbs are not safe. So before using it, people should check the safety aspects of the doses used. Then before using any natural herbs as medicines, it is always advisable to consult a qualified doctor. Some benefits of using herbal medicines are: application of right doses of right herbs can be extremely effective in providing proper treatments to various different types of illness and diseases. Then proper and specific uses of right doses of herbal medicines has lesser side effects. After this comes the tribal medicines. The tribal medicines refer to those system of traditional healthcare systems which uses various types of natural resources to treat human illness and diseases for well-being of the tribal people's health, and is normally dependent on the knowledge which has been acquired through observations, practice and experiences, and is generally passed down to next generations through oral mode. Some disadvantages of using herbal medicines are as follows. The first and foremost problem of using herbal medicines is the lack of proper established scientific proof of their effectiveness. Then comes, due to lack of proper regulatory authorities and improper testing and approval procedures, many traditional herbal medicines can face safety related problems. Thereafter comes the third point, which is due to lack of established standardized manufacturing process, actual impact of a particular type of herbal medicines can vary. Then comes the most important thing, which is tribal economics. Tribal economy refers to that type of economic systems in which economic activities normally deals with local or nature related activities like fishing, hunting, forest and other natural resources to satisfy the basic demands of food, shelter and other needs of the local or rural people. Some characteristics of tribal economics are: this type of economics in most cases
depends on natural resources like forests and other natural resources to satisfy the basic demands of food, shelter, and other needs of human beings. Tribal economics in most cases depends on the local and social beliefs, traditions, cultures, and practices. Some basic problems of tribal economics are: the most basic problem of tribal economics are the overall ignorance of the local, rural, or tribal people about the various different government schemes for the betterment and advancement of rural and tribal people. Improper and inadequate skills and other knowledge later deterred the local, rural, and tribal people from doing proper marketing of their products, which is actually a hindrance to the development of the tribal markets. Then comes the research gap. There are a lot of literature review has been done on this subject, which shows that there has been some published materials regarding development of tribal medicines or development of living standards of the tribal peoples, but there has been no such publications regarding whether development of tribal herbal medicines can go on to help the development of the tribal communities according to along with increasing the standard of living. The research methodology which was followed in this study was basically been explorative in nature to find out whether the development of tribal herbal medicines can go on to increase or improve the standard of living of the tribal people, and the required information has been collected by applying both the methods of direct and indirect methods of data collection. A specific questionnaire was developed to collect field information. Thereafter, some offline interviews was conducted on some rural and tribal people to know their ideas and views about the normal herbal medicines which they use for the treatment of their lives. Certain indirect methods were used, which was to collect the secondary data by doing an online and offline research with on various journals, magazines, websites, database, print, and ebooks. The specific findings on this type of development of herbal medicines are: the first important point about tribal herbal medicines has been that there is lack of proper scientific testing procedures to prove the effectiveness of tribal herbal medicines. Some rural herbs can have harmful effects if not treated properly and applied correctly, and can cause serious health problems. Then, due to absence of proper regulatory measures, many types of herbal medicines or remedies can have safety-related issues while applied on the human beings. Some suggestions to overcome these problems: the foremost requirement will be to make proper scientific evidence of many traditional or tribal remedies according to the requirements of the modern biomedical standards. The second point will be to document the traditional and tribal knowledge, to not just preserve the knowledge but also to prevent it from various types of fraudulent activities or measures, which will also help in standardizing the quality control of the herbal medicines. Then we need to invest to develop proper regulating authorities to standardize tribal herbal medicines and make them market ready. Then the next thing is that to try and find out ways to integrate traditional and tribal herbal medicines with the modern medicinal systems to promote the effectiveness or efficiencies of tribal herbal medicines. Then we come to the conclusion of this presentation. This study shows that if proper attempts along with proper level of investments of various resources, which includes finance and labor, etc., are done to develop rural and tribal medicines, then this development or commercialization of tribal herbal medicines can go on to help in development of the different tribal cultures and societies existing across our countries. So this is all about my presentation. Thanks a lot to everybody for listening to me, and thanks a lot to Brajesh sir for giving me the opportunity. Thanks a lot to everybody present in this session. Thanks a lot. Yes, sir, I am done, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good presentation. Next serial number 39, Shama Markam. Shama. Sir, present, sir. अच्छा, okay. Om Saran, sir. Yes, Om Saran, sir. Please start, sir. Yes, sir.
जनजातीय विकास मुद्दे और चुनौतियां पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आभासी पटल पर आयोजित कराने के लिए आयोजक मंडल का धन्यवाद एवं हमें अपना शोध पत्र वाचन का अवसर प्रदान करने के लिए सादर आभार व जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। मेरा शोध शीर्षक है कानपुर के स्वतंत्रता आंदोलन में दंपत्ति युगल श्रीमती देवी एवं Sir, not audible, sir. Please check your mic, sir. ओम शरण सर। जी जी सर। आपका माइक बंद है सर, शुरू से स्टार्ट करता हूँ। यस ऑडिबल सर, प्लीज स्टार्ट। जी जी सर जी। जनजातीय विकास मुद्दे और चुनौतियां, एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आभासी पटल पर आयोजन कराने के लिए आयोजक मंडल का धन्यवाद एवं हमें अपना शोध पत्र वाचन का अवसर प्रदान करने के लिए सादर आभार व जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है कानपुर के स्वतंत्रता आंदोलन में दंपत्ति श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं पंडित रामेश्वर दीक्षित का योगदान। कानपुर का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी में अभूतपूर्व योगदान था। बिठूर के नाना बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे आदि अनेक वीरों ने अपने अदम्य साहस एवं अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन कर अंग्रेजों के मन में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। बिठूर का बीवी घर, जिसे देखकर अंग्रेज सिहर उठते थे, बाद में कानपुर को आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने अपने कौशल का साक्षी बनाया। मजदूरों एवं कृषकों के सम्मानार्थ कई छोटे बड़े संघर्षों का साक्षी कानपुर रहा है। देश प्रांत में जो आजादी की ज्वाला बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के चल रही थी, कानपुर में भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता था। मजदूर मिल मालिकों को, जो कि अंग्रेजों द्वारा संरक्षित थे, से अपने अधिकारों के लिए दो दो हाथ करने पर आमादा थे। कृषक सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध अकड़ कर खड़ा होने का साहस करने लगे थे। कानपुर के ही थाना के अंतर्गत आने वाले एक सामान्य से गांव जुगराजपुर बिठूर में रहने वाले दंपत्ति श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं पंडित रामेश्वर दीक्षित को तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ने आंदोलित किया। उनके हृदय में उस समय की अन्यायी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की भावना एकाएक नहीं उपजी और इसके उत्पन्न होने के लिए उनके मन में कोई राजनीतिक व संस्था की पूर्ति का उद्देश्य भी नहीं था। लक्ष्मी देवी का जन्म कानपुर के ही चौड़पुर क्षेत्र के देवपालपुर नामक ग्राम में हुआ था। लक्ष्मी देवी के पिता पंडित गंगासागर पांडे एक जमींदार के खेत में मजदूरी किया करते थे। किसी गलती पर जमींदार ने उनके पिता को पुलिस से पिटवाया। 7 वर्ष की अवस्था में ईंट का टुकड़ा मारकर इन्होंने अंग्रेज पुलिस सिपाही को घायल कर दिया। अंग्रेजों के इस व्यवहार ने उनको अंग्रेजों की सत्ता का विरोधी बना दिया और अंग्रेजों की सत्ता का विरोध उन्होंने आक्रामक तरीके से किया। पंडित रामेश्वर दीक्षित को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा उनके पिता द्वारा मिली थी। उनके पिता अंग्रेज विरोधी षड्यंत्रों के कारण जेल जा चुके थे। बचपन से ही पंडित रामेश्वर जी अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते। सन 1916 ईस्वी में जब लक्ष्मी देवी एवं पंडित रामेश्वर दीक्षित जी का विवाह हुआ, तब से उनकी विचारधारा संयुक्त होने के कारण अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण आपके निवास स्थान पर पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया। पंडित दीक्षित घर पर नहीं थे। लक्ष्मी देवी अपनी 11 वर्ष की पुत्री के साथ घर पर थीं।
जैसे ही अंग्रेज अधिकारी अंदर गया, लक्ष्मी देवी हाथ में कुल्हाड़ा लेकर उस पर टूट पड़ी। अचानक हुए आक्रमण से वह घबराकर बाहर की ओर भागा और अपने पिस्तौल को निकालकर वीरांगना लक्ष्मी देवी की ओर मुड़ा, लेकिन तब तक कुल्हाड़े का प्रहार हाथ पर हो गया, जिससे उसका हाथ कटकर वहीं पर गिर पड़ा। वह चिल्लाकर शूट करने के लिए शेष सिपाहियों से कहने लगा, लेकिन तब तक वह 7 फीट दीवार कूदकर अपनी बेटी को साथ लेकर जंगलों में छिप गए और काफी खोज पर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। इस तरह से बाद में उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चला। संयोगवश तब तक देश स्वतंत्र हो चुका था और वो रिहा कर दी गई। इसी के साथ मेरा हो गया सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good presentation. Next serial number 49, Shama Markam. Next serial number 40, Dr. Renu Gautam. Dr. Renu Gautam. Next serial number 41, Ravindra Kumar Gautam. Ravindra Kumar Gautam. Hello. Okay, next serial number, yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. मैं Shama. Hello. Yes, please start, ma'am. Shama Markam, research scholar, Barkatullah University, Bhopal, Madhya Pradesh. Please start, ma'am. Only 5 minutes. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Shama Markam from Bhopal, Barkatullah University, and I am a PhD scholar in life science botany. And my topic is ethnobotanical study of medicinal plants for treating anemia in tribals of Manda district, MP. This study outlines the traditional applications of various plant species used by the local population of Manda district of Madhya Pradesh to treat anemia. Medicinal plants are rich in chemical compounds that serve as primary source of therapeutic agents for treating numerous human ailments. Anemia impacts a quarter of the global population and is characterized by an insufficient number of red blood cells or their capacity to transport oxygen, which varies based on factors like age, gender, height, and smoking habits. Iron deficiency is considered the most common cause of anemia. A lack of essential elements and minerals necessary for hemoglobin production can lead to iron deficiency. This review explores the prevalence of anemia, its socio-cultural nutritional causes, and the cause of medicinal practices for its treatment. The aim of this work is to document the medicinal plants utilized by the tribal people in the region. Ethnomedicinal information was collected through random village selection and interviews with vets, local medicinal men, and knowledgeable individuals from the tribal community. Our findings indicates that tribes continues to prefer using plants and treating their ailments due to their easy availability and negligible side effects. And one of the major anemia which are found in tribal people is known as sickle cell anemia. And National Sickle Cell Anemia Awareness and Elimination Mission was initiated in July 1, 2023, and the goal is to eliminate sickle cell anemia till 2047. And World Sickle Cell Awareness Day is celebrated on 19th June. The mission was officially launched on 1st July 2023 by PM Narendra Modi. And the major cause of sickle cell anemia is marriage within the same caste, which is known as endogamy. And the mass awareness campaigns and counseling service to help with lifestyle management and pre-marriage and prenatal decision. And the technology, a national sickle cell portal and mobile app has been launched to enter the access screening data will help to eliminate this problem. Thank you so much, sir. Hello. 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 Thank you, ma'am. Thank you. Good presentation, ma'am.
Thank you, ma'am. Next, serial number 40, Dr. Renu Gautam. Dr. Renu Gautam. Dr. Renu Gautam. Ravindra Kumar Gautam. Next, serial number 41, Ravindra Kumar Gautam. Next, serial number 42, Nidhi Moore. Yes, sir, present. Yes, Nidhi Moore, research scholar, Manipur Global University, Bhopal, Madhya Pradesh. Please start now, only 5 minutes. Yes, sir. Good afternoon, respected chairpersons, esteemed panel members, fellow presenters, and participants. I am Nidhi Moore, research scholar from Mansarovar Global University, Bhopal. Today, I am presenting my paper titled English as a Tool for Tribal Empowerment, Challenges of Accessibility, Inclusion, and Cultural Preservation. Tribal communities in India hold rich linguistic and cultural tradition, yet they continue to face major barriers in education, employment, and access to technology. In this situation, English becomes an important tool not only for communication but also for social mobility, higher education, and participation in modern platforms. The objective of my study is to understand how English can empower tribal communities and to examine the challenges they face, especially accessibility, inclusion, and the need to preserve cultural identity. My research is qualitative, based on literature reviews, policy analysis, and observation of educational challenges in tribal areas. The study highlights 3 key findings. English creates new opportunities. It improves student chances for higher studies, jobs, and digital participation. The second key finding is significant challenges remain: lack of trained teachers, limited exposure, poor infrastructure, and a strong digital divide make English learning difficult. Cultural preservation is essential. English should not replace tribal language. Instead, education must respect and include tribal identity. To address this, I recommend mother tongue based multilingual education, culturally relevant learnings material, teacher training, and improved digital access. English should be introduced with tribal language, not in place of them. In conclusion, English can truly empower tribal communities when it is taught in an inclusive, culturally balanced, and accessible manner. Empowerment succeeds only when development and cultural identity grows together. Thank you so much. Hello, sir. I'm done. Thank you, ma'am. Thank you for the presentation. Next, serial number 43, Mandeep Singh. Mandeep Singh. Next, serial number 44, Ratan Pal. Ratan Pal. जी सर, जी रतन पाल जोगियार सर, शहर जी सर, मैं मासवाड़ा राजस्थान से हूँ। प्लीज स्टार्ट। जी आयोजक संस्थान और आयोजन सचिव को बहुत बहुत पहले मैं आभार देना चाहूँगा। साथ ही जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस सत्र के, आप सभी का आभार कि आप मुझे दे रहे हैं। वैसे मैं उस सिचुएशन में हूँ कि यहाँ नेटवर्क बहुत कम पकड़ रहा है, फिर भी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं कुछ बता पाऊँ आप लोगों को। मेरा जो विषय रहा है भील जनजाति भाषा एवं संस्कृति। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जिसको बांसवाड़ा कहा जाता है, और बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र का एक जिला है, और ये क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा में आता है। यहाँ पर भील जनजाति करीबन 73% रहती है। तो इस जनजाति के बारे में और मैं इस
कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको वास्तविक धरातल की ओर ले जाना चाहूँगा कि जैसा हम जी रहे हैं, जैसा हमने अन्य लोगों के शोध पत्रों को पढ़ा है या अन्य लोगों ने इनके बारे में लिखा है, तो उस सारे अध्ययन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। यह भील जनजाति 4 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है और दूर दूर घर बना करके निवास करते हैं। इनकी संस्कृति तो वास्तव में यही है कि वो कभी भी कस्बा में नहीं रहते हैं, घर बनाते हैं और दूर दूर अपने अपने खेतों में। जब पिता 2 भाइयों को या अन्य भाइयों को अलग अलग कर देते हैं, तब भी ये लोग अपने अपने खेत में मकान बनाते हैं, न कि साथ साथ रहते। इस तरह का इनके जो रहन सहन है। दूसरी बात ये है कि ये लोग शुरू में बहुत अशिक्षित रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों में जब जागृति आने लगी तो ये लोग धीरे धीरे, अब देखा जाए तो घर में कोई भी अशिक्षित नहीं मिलेगा। नई पीढ़ी है वो सब पढ़ने के लिए जा रही है, लेकिन इनकी जो परंपराएं हैं पुराने जमाने से में चलती आई रही है, वो है सहकार की भावना, और वो सहकार की भावना आज भी इनमें मौजूद है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर झाबुआ क्षेत्र पर भी जो प्रथा है, एक हलमा प्रथा, आपने सुना होगा इसका नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है। और इसमें सारे लोग बिना किसी मजदूरी के या बिना किसी मानदेय के एक दूसरे का सहयोग करते जब जिसको जिसकी जरूरत पड़ती है। पहले ये हलमा जो था वो एक तरह से हल के द्वारा सहयोग करने का था, इसलिए उसको हलमा कहा गया। लेकिन धीरे धीरे मकान बनाने में, कुएं खोदने में, मेड़बंदी करने में, तालाब बनाने में या अन्य तरह के सभी तरह के सहयोग में इस तरह की प्रथा रही थी। ये उनका कल्चर रहा है। दूसरा, अगर मैं इनके बारे में कहना चाहूँ तो बहुत से लोगों ने इनके बारे में लिखा है। जैसे इंदौर से प्रकाशित कुछ पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई थी, जिसमें नेमीचंद जैन और श्रीचंद जैन ने लिखा है। नेमीचंद जैन ने लिखा है भील भाषा साहित्य एवं संस्कृति, जो एक महत्वपूर्ण किताब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1965 और 1962 के आसपास लिखा था। बहुत से लोगों ने कई सारी पुस्तकें लिखी है इनकी भाषा के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा, जिसको हम भीली भाषा कहते हैं, जिसको हम बोलते भी हैं, आज अगर हम देखा जाए तो 50 साल से ज्यादा के उम्र के सारे लोग इस भाषा को बोलते हैं। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वागड़ रियासत थी जो राजस्थान के दक्षिण भाग में, तो वागड़ में उसको वागड़ी भीली कहा जाता है। वहीं मेवाड़ क्षेत्र रहा है, महाराणा प्रताप की जो कर्म भूमि और जन्मभूमि रहा है, तो उस क्षेत्र में उसको मेवाड़ी भीली कहा जाता है। ठीक उसी तरह से मालवा क्षेत्र हमारे बिल्कुल पास में है, तो वहां मालवी भीली बोली जाती है, जो भीलों के द्वारा बोली जाती है। शेष निमाड़ी भीली या गुजराती भीली, तो ये सारी जो भीली है वो सब लगभग एक जैसी है। उनमें शब्द एक समान रूप से हैं, उनकी क्रियाएं भी एक समान ही है। तो इस भाषा पे शोध करने की सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय, क्योंकि ये विषय इस तरह का है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर पुरानी पीढ़ी चली गई और इस मातृभाषा को हमने नहीं अपनाया, उसमें शोध नहीं किया, तो ये धीरे धीरे उन लोगों के साथ समाप्त हो जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई इस भाषा पे काम कर रहे हैं तो उसकी जो मूलभूत संरचना है उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके शब्दकोश का निर्माण होना चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है। साथ ही हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनजाति लोग, खास करके भील लोग, जो एक सत्यवादी परंपरा के साथ रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत अंग्रेजों के समय में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, शायद आप सभी लोग इसको जानते होंगे, जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड, और उसका नाम है मानगढ़ हत्याकांड, जहां 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को शहीद हुए थे, अंग्रेजी की गोलियों से भून दिए गए थे। तो ये वो वीर भूमि है। पास में हमारा जो मेवाड़ है, आप सभी जानते होंगे कि वहां मेवाड़ में महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भील, जिनकी वजह से वो हल्दी घाटी के युद्ध में अपना शौर्य दिखा पाए थे और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान उन्होंने बनाए रखा था। तो इस तरह की जो जनजाति है, लेकिन वास्तविक स्थिति आज भी उनकी ऐसी कि वो बहुत गरीब है, पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं है, और ये लोग जो है रोजगार की मांग करते हैं। भले ही ये अनुसूचित क्षेत्र है, भारत सरकार की 5वीं अनुसूची में आता है, लेकिन जो योजनाएं हैं उनका मूलभूत लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर स्थितियां ये हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता, और लागू भी करते हैं
तो जैसे राजस्थान में है या गुजरात में है या मध्य प्रदेश में लोग हैं, कई सारी मांगे होने के बाद भी वहां की सरकारें पूर्ण रूप से उसको लागू करके उनको लाभ देने की स्थिति में नहीं होती है, क्योंकि ये दूर दूर घर बना करके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इनकी भाषा को, इनकी संस्कृति को, इनके स्वास्थ्य को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो है कुपोषित दिखते हैं, लेकिन इनमें स्टेमिना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उचित उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये मानना है कि उनके गीत हैं, उनके भजन हैं, उनकी गाथाएं हैं, उनकी कथा है, उनकी कहानियां जो उनकी भाषा में है, उनका संरक्षण करने की जरूरत है, विमर्श करने की जरूरत है, और इस श्रमजीवी समाज को एक नई दिशा दे करके आधुनिकता की ओर ला करके और उन्हें उनका उचित अधिकार दिलाने की जरूरत है। शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना समय नहीं है हम लोगों के पास में। तो आपने जो समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संचालक महोदय। थैंक यू सर। जी पाल डोरिया सर, presentation. जी, Thank you very much for joining this conference. Next speaker number 45, Advocate Vivek S. Yes, sir. Advocate Vivek, Ms. Yes, Swaroop sir. Yes, Bakwari, I'll be presenting. Yes, I'll be Faculty presenting, of sir. Law, Pune University से हैं. Yes, please start में only 5 minutes. Yes, sir. Thank you. Is my screen visible? Yes, madam. A very good afternoon to the fraternity of intellectuals. I'll just try to show my complete PPT, and then I'll just highlight on few important PPT. So introduction, concept of tribe, challenges faced by tribals, Thakars in Maharashtra, objectives, research methodology, a review of the Marathi film Jait Re Jait, findings and recommendations, and the last slide. So I'll just begin with the first slide. So today I will be presenting a research entitled Echoes of the Forest, Understanding Tribal Life and Identity. The paper is authored by Advocate Vivek Bhargude, Faculty for Law, and co-authored by myself, Ms. Swaroop Wagmare, Assistant Professor in Sociology, Dr. D.Y. Patil Law College, Pune. This study examines the socio-cultural and economic life of the Thakar tribe in Maharashtra and explores how belief systems shape their development and identity. We also reflect on the national award-winning Marathi film Jait Re Jait as a visual ethnographic study. The film was released in 1977, directed by Dr. Jabbar Patel, produced by Usha and Hridaynath Mangeshkar. This is adapted from G.N. Dandekar's novel Thakurwadi, and the film features late actress Smita Patil and an eminent actor Mohan Agashe from the Marathi fraternity. The film received the President's Silver Medal for Best Feature Film in Marathi at the 25th National Film Awards, shot in the natural surroundings of Karmala Forest, Kumbhavali and Thakarwadi. The film's music exemplifies the oral tradition with its authenticity, leaving a lasting impact on audiences. Thakars in Maharashtra. The Thakar tribe is one of the prominent tribal groups in Maharashtra, with a presence in districts like Thane, Raigad, Pune, Nasik, and Ahmednagar. They belong to two major groups, Ka Thakar and Ma Thakar. According to the benchmark survey of TRTI 1996, the Thakar population is about 1.82 lakhs, and according to the census and TRTI reports 2011 is about 5.68 lakhs. The dependence on domestic remedies and traditional healing methods indicates the limited reach of modern healthcare in tribal areas. The objectives of this study: to understand the socio-cultural and economic conditions of tribal communities, to explore their belief systems, to analyze how these beliefs influence or sometimes hinder their development. So these objectives help us to connect cultural patterns to real life and socio-economic outcomes. Coming to the review of the film,
Jaitre Jait is not just a film, it is an ethnographic text that visually documents the lived reality of the Thakar tribe. The film presents the tribe's ecology, rituals, oral traditions, and social values with remarkable authenticity. Set against the natural backdrop of forests, mountains, and tribal hamlets, the film captures how closely the Thakur's life is intertwined with nature. Their beliefs are not abstract, they emerge from their environment, and the film portrays this relationship with great detail. The character of Nagya, played by Mohan Agashe, represents a young man trying to understand moral purity and spiritual righteousness as defined by his community. His father, a Bhagat, teaches him about the divine presence of Lingoba, the queen bee, showing how spiritual meanings are attached to natural elements like mountains and beehives. These beliefs form the foundation of the tribe's moral code. Ideas about purity, sin, righteous living, and the avoidance of certain foods or behaviors. The way the father describes these rules also reveals how knowledge is transmitted orally across generations. The film also highlights the vibrancy of Thakar cultural life through music and dance. The iconic song Amhi Thakara Thakara is a celebration of tribal unity, rhythm, and identity. It demonstrates their collective lifestyle, how recreation, rituals, and daily activities are shared practices that strengthen community bonds. These expressions are an important part of their intangible cultural heritage. A significant part of the review focuses on Chindi, late Smita Patil, a woman whose life reflects the hardships and inequalities faced by tribal women. Her struggles, poverty, and a broken marriage, an alcoholic father, and a social stigma expose the gendered vulnerabilities within tribal society. Yet she also emerges as a strong character, taking control of her life by seeking divorce and choosing her own partner. Naga's gradual disillusionment forms the emotional core of the film. His prayers, rituals, and efforts to stay righteous fail to save his father from a snake bite and do not protect him from losing his eyesight in the bee attack. These incidents symbolize the limitations of blind faith and the conflict between belief and experience. His desire to revenge against the beehive shows a psychological shift from devotion to frustration. The climax where Chindi dies from the bee stings while supporting Naga's revenge is a powerful metaphor. Even though Naga wins by destroying the hive, he loses Chindi, the only person who truly stood by him. Her death represents the tragic consequences of rigid belief systems and the danger of interpreting natural events solely through superstition. It also reflects how deeply ingrained cultural ideas can shape decisions even when they lead to suffering or loss. Overall, Jaitre Jait brilliantly exposes the connection between tribal beliefs, social behavior, and developmental challenges. It helps us understand how belief systems can guide, control, and sometimes limit the progress of tribal communities. The film becomes a window through which we can observe the complexity of tribal identity, the conflict between tradition and change, and the human cost of culturally rooted misconceptions. Findings and recommendations. Our findings show that the Thakar tribe continues to face economic challenges and inadequate access to modern healthcare, leading them to rely heavily on traditional healing. The role of belief systems is strong, but these beliefs can sometimes limit progress, especially for women. To overcome these issues, we recommend greater media focus on tribal education, health, and employment, training paramedical staff for remote areas, providing study materials in tribal dialects, and creating livelihood opportunities that build on traditional skills. Permanent housing, NGO involvement, and awareness program by TRTI, Tribal Research and Training Institute, can significantly improve their development outcomes. Thank you. I hope this presentation provided meaningful insights into the life, identity, and challenges of the Thakar tribe. Thank you. Sir, I'm done. Thank you. Vijay, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Swaroop ma'am, for presentation. Next serial number 46, Aditi.
Yes, sir. Aditi Chaudhary, Yes, sir, I'm present. research scholar, Daulat Ram College, Delhi University. Sir, is my slide Specific- visible? No, madam. Is it visible now? No, ma'am, no. Is it visible now? So, Not my visible. topic, Yes, ma'am. is it yes. visible now? Yes, ma'am. So, respected chairperson and concerned authority, my name is Aditi Chaudhary. I'm from Department of Zoology, University of Delhi, a research scholar. My topic is intracytoplasmic sperm injection, a comparative study. So before starting up with the comparative analysis, what is intracytoplasmic sperm injection? It is an assisted reproductive technological technique where a single sperm is directly injected into the oocyte, helping overcome low count, poor motility, and abnormal sperm morphology. It is majorly significant in treating cases with male infertility and majorly used in cases of failed IVF cycles, unexplained infertility, and are used in cases where sperms are retrieved surgically. This study compares ICSI with in vitro fertilization in cases of non-severe male infertility. It basically examines how sperm morphology affects fertilization and pregnancy outcomes. So this is the step. These are the steps involved in intracytoplasmic sperm injection. So the first step is ovarian stimulation that lasts for 9 to 11 days. So here ovaries are basically stimulated with hormonal injections like FSH. Now ovaries are stimulated to produce multiple mature follicles. After 34 to 36 hours of stimulation, mature eggs are retrieved under the sedation process. A fine needle is inserted into the vaginal wall and eggs are retrieved. Now, meanwhile, the semen sample is collected from the male partner and processed with techniques like gradient centrifugation to collect and isolate motile and healthy sperms. Now, with the help of micropolation, a single healthy sperm is injected into the mature oocyte. Now, these are cultured for 3 to 5 days under controlled laboratory conditions. Then the developing embryo is placed into woman's uterus, and woman is the woman has undergone observation. And the leftover embryos, like not all embryos are inserted into a woman's uterus, only one is inserted. So leftover embryos are preserved with the help of cryopreservation. Now, there are major different causes of male infertility that itself explains for the need and significance of intracytoplasmic sperm injection. So there are different causes of male infertility. Azoospermia, that is no sperm in semen, that accounts for 11.5%. Then cryptozoospermia, that accounts for 3.9%. That basically means the sperm count is very low, it's very low, lower than 1 million sperm. That is considered very low count. It accounts for 3.9%. Now, severe oligozoospermia. So here the sperm count is between 1 to 10 million sperm. It's still very low. Now, then testicular trauma or surgery accounts for 6.8%. Different lifestyle factors also contribute to male infertility. That accounts for 5.2%. And genetic causes accounts for 4.2%. And there are still some unknown causes of male fertility that accounts for 31.5%. So the problem statement is to assess causes of male infertility and compare intracytoplasmic sperm injection with in vitro fertilization in the cases of non-severe male infertility, and to determine how sperm morphology influences fertilization rate, embryo quality, clinical pregnancy, and live birth outcomes.
The major causes of the objectives of the study are to know about the various causes of male infertility, as I showed here, this pie chart that explained the male infertility causes, and to review the need of ICSI and know about its procedure, and to compare the outcomes of ICSI with IVF in cases of non-severe male infertility. Non-severe male infertility, so here we only consider non-severe male infertility cases, not the severe ones, and to review and analyze the influence of individual sperm morphology on fertilization. So the first study considered for the this and the comparative analysis was of Liu. A study was conducted to determine the prenatal outcomes of ICSI versus IVF in couples with non-severe male infertility. So total 21,899 women undergoing their first IVF cycle were considered. This was from 2012 to 2016. So out of the total sample, 18,962 women were undergoing IVF and 2,937 were undergoing ICSI. So it was observed that out of 18,962, around 7,904 live births were seen in cases of in vitro fertilization. And when we talk about ICSI, according to the study, out of total 2,937, 1,266 live births were seen. 6 subgroups were studied, excluding severe male infertility and other health abnormalities. Findings stated that live birth rates for IVF were 41%, 0.68%, and for ICSI it were 43.11%. And clinical pregnancy rates were almost similar. So clinical pregnancy rates were almost similar, yet ICSI showed higher live birth rates. This table basically explains the outcomes of IVFI and ICSI in percentage median. So live birth rate in case of IVF median, live birth rate in case of IVF were 41.68%, and in case of ICSI it was 43.11%. So there was no significant difference seen, and similarly goes for clinical pregnancy rate. But in case of NICU admission rate, IVF showed 7.68%, but ICSI showed 7.26%. So it was lower in case of ICSI with moderate oligoazoospermia. Gestational age was 39.2 in case of IVF, and it was similar for ICSI. Now comparing the variables in case of normal and abnormal sperm morphology. So fertilization rate was higher for normal morphological sperms and was lower for sperms with abnormal morphology. And so therefore different characteristics were higher for normal morphology compared to abnormal morphology. ICSI showed no significant advantage over IVF in live birth, but for couples with moderate oligoasthenozoospermia, the results were significantly affected. Coming to the second study that was considered for the comparative analysis was of Enik de Vos. This was a study from 2003. This study conducted to determine the influence of individual sperm morphology on fertilization, embryo morphology, and pregnancy outcomes in ICSI. Different samples were collected. So here different samples, 662 ICSI cycles were considered for the study. And here sperms were either collected from the ejaculation, like the ejaculated sperms were collected, and in case of surgical, epididymal and testicular sperms were considered for the Kruger criteria. High fertilization rate was seen with normal sperm, and lower fertilization rates were seen in abnormal morphological sperms. Clinical pregnancy rate came out to be 32.6% for normal morphology, whereas the birth rate was 14.7% for abnormal morphology sperms. So this table basically explains that ejaculated sperm had either normal morphology or abnormal morphology. So normal morphology was seen in 72.5% of the total ejaculated sperm, whereas
In non-ejaculated sperm, the sperms that were surgically retrieved either by epididymis or testes, 65% were of normal morphology. So here, the ones that were taken from epididymal were more accurate and provided good results. So the conclusion about this comparative analysis was ICSI is an advancement in assisted reproductive technology, offering significant benefits in severe male infertility, while showing outcomes comparable to in vitro fertilization in non-severe cases. By enabling fertilization, even with limited or poor quality sperm, it has transformed fertility management for many couples. Advancements such as IMSI. IMSI is basically intracytoplasmic morphologically selected sperm injection. So here sperms are selected based on their morphological characteristics. The more they are healthy, the more their morphology is better. So those sperms are selected in these cases. And different techniques like sperm DNA fragmentation, AI-assisted embryo monitoring have further enhanced its precision and success. Although ICSI ensure high fertilization rates, clinical outcomes often parallel in vitro fertilization, emphasizing the importance of appropriate patient selection. So the implications of this comparative analysis is seen in advancements in reproductive medicine. ICSI continues to refine fertility treatments, particularly for severe male infertility, whereas it also allows for the selection of morphologically normal sperms. Safety and quality are the major concern. So it has reduced neonatal risk, such as lower NICU admission, as we saw in the table. And recommendations are further research, longitudinal studies on genetic and developmental health, comparative trials, additional comparison of ICSI with other ART methods in various infertility contexts. So these are the references. Thank you for giving me this opportunity. Are there any questions? Madam, how is this related to this tribal rights study? So there was one category, science and technology. So I presented under that category. Okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Good presentation, ma'am. Next, serial number 47, Madhu Sharma. Madhu Sharma. Next, serial number 48, Dr. Gayatri. Dr. Gayatri. Next, serial number 49, Sachin Singh. Next, serial number 50, Dr. Sri Raman. हाँ मैं हूँ Yeah, Dr. Sri Raman, sir. हाँ से yes, please start, sir. इस सेमिनार के अध्यक्ष महोदय एवं इसका संयोजन कर रहे व इससे जुड़े सभी विद्वज्जन को मेरा नमन। आज मैं जनजातीय विकास मुद्दे और चुनौतियां विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंश हैं। उनकी अद्वितीय परंपराएं, भाषाएं और जीवन शैली भारत की विविधता में योगदान देती हैं। उनकी सामाजिक संरचना काफी मजबूत होती है। परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं निश्चित होती है। अलग अलग क्षेत्र की जनजातियों के अपने लोकगीत, लोकनृत्य, वाद्य यंत्र, भाषा, साहित्य व कलाएं होती हैं। वे कई तरह के त्योहार मनाते हैं, फसल उत्सव मनाते हैं तथा पूर्वजों एवं टोटमों की कृपा पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी करते हैं। उनके त्योहारों में सामूहिकता होती है। आर्थिक रूप से वे शिकार, पारंपरिक खेती व हस्तशिल्प पर निर्भर रहते हैं। वे पारंपरिक बीजों के संरक्षण, प्राकृतिक खाद व कीटनाशक के उपयोग तथा वन व मृदा संरक्षण में कुशल होते हैं। आज औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण ने जनजातीय समुदायों को काफी प्रभावित किया है, जिससे निम्नलिखित मुद्दे व चुनौतियां उभर कर आए हैं। पहला, विस्थापन। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं, खनन, शहरी विस्तार, वन संसाधनों के दोहन आदि कारणों से जनजातीय समुदायों को अपनी पैतृक
भूमि से विस्थापित होना पड़ता है। इससे उनकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, शिक्षा की कमी। जनजातीय समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं। इनके कारणों में आर्थिक रूप से उनका कमजोर होना, शिक्षा के प्रति उदासीनता, बुनियादी ढांचों की कमी व विद्यालय की उनके गांवों से दूरी, संचार व्यवस्था की कमी, लैंगिक असमानता, कम उम्र में विवाह, भाषा की समस्या आदि हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा दर 59% है, 59%, जो राष्ट्रीय औसत 73% से काफी कम है। हालांकि मिजोरम की साक्षरता दर 82.73% है। तीसरा, निम्न स्वास्थ्य स्तर। जनजातीय समुदायों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में इतनी कमी तथा उनमें इसके प्रति उदासीनता के कारण वे बीमारियों एवं कुपोषण के शिकार हैं। वे रोगों के निदान हेतु प्राकृतिक उपचार पर विश्वास करते हैं। वहीं डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी जनजातीय क्षेत्रों में पदस्थापना से कतराते हैं, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में जनजातीय क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 41.6 प्रति हजार थी, हालांकि पूर्व से यह कम है। चौथा, निम्न आर्थिक स्थिति। जनजातीय समुदाय अब भी अपनी पारंपरिक खेती, शिकार व हस्तशिल्प पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। इस कारण जहां उनकी उपज सीमित है, वहीं शिल्प आदि अन्य उत्पाद को स्थानीय बाजार में बेचकर मात्र जीवन यापन के संसाधन ही जुटा पाते हैं। क्षेत्रीय बनावट के कारण वे सीढ़ीनुमा खेत व झूम कृषि पर निर्भर हैं, जहां ट्रैक्टर जैसे कृषि यंत्र का उपयोग सीमित है। इससे उनकी निम्न आर्थिक स्थिति है। वे पलायन को मजबूर हो रहे हैं तथा ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी आदि के शिकार हो रहे हैं। पांचवा, सांस्कृतिक विघटन। आधुनिकता के कारण उनका पारंपरिक ज्ञान नष्ट हो रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। पारंपरिक परिधान, गीत, नृत्य, हस्तशिल्प एवं गृह सज्जा का स्थान आधुनिक फैशन परक लिबास, नृत्य, गीत व सस्ते सामान आदि ले रहे हैं। पारंपरिक स्थान से विस्थापन के कारण वे आत्मसातीकरण की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। मूल क्षेत्र से विस्थापित व पलायित होकर वे मलिन सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सीरियल नंबर 51, डॉक्टर अखिल कुमार दुबे। डॉक्टर अखिल कुमार दुबे। नेक्स्ट सीरियल नंबर 52, वर्तिका पिल्ले। डॉक्टर वर्तिका। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 53, डॉक्टर मुकेश कुमार मालवी। नेक्स्ट सीरियल नंबर 54, डॉक्टर भावना बावरा। नेक्स्ट सीरियल नंबर 50। क्षमा करेंगे, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मैं कंटिन्यू करूं क्या श्री रमन? ओके सर, 2 मिनट्स में आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ ओके सर, 2 मिनट्स में आप अपना। हाँ बिल्कुल। संवैधानिक प्रावधान 342, यह राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श से किसी भी जनजाति या स्थानीय जनजातीय समुदाय को सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 338A, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण की देखरेख करता है। अनुच्छेद 46, यह राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखते हुए बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है। 5वीं अनुसूची, यह अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है, ताकि जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा हो सके। 6ठी अनुसूची, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। कानूनी प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989,
यह कानून जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पीड़ितों को न्याय तथा मुआवजा दिलवाने के लिए बनाया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा। यह अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से किया गया, जिसके द्वारा नया अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया, जिससे यह आयोग 19 फरवरी 2000 को अस्तित्व में आया। वन अधिकार अधिनियम 2006 यह अधिनियम जनजातियों को वन संसाधनों तक उनकी पहुंच के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। अन्य सरकारी योजनाएं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये विद्यालय सुदूर क्षेत्रों में बनाए गए हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना, इस कार्यक्रम के द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, यह ट्राइफेड के साथ जनजातीय क्षेत्रों में लघु वन उपज व पारंपरिक कौशल के मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह खाद्य प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र, विपणन के लिए हाट बाजार और भंडारण जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए जीविका जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न छात्रवृत्ति, पोशाक, वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं का लाभ भी जनजातीय समुदायों को प्राप्त होता है। विभिन्न सरकारी अधिनियमों एवं योजनाओं के अतिरिक्त कई गैर सरकारी संगठन भी जनजातीय समुदाय के विकास में अपना योगदान प्रदान करते हैं, जैसे सेव द चिल्ड्रन इंडिया बिहार में कमजोर वर्गों के बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में काम करता है। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी या ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका हेतु कार्य करता है। वागधारा यह राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में काम करता है। ट्राइफेड यह जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। इनके अतिरिक्त नीलगिरी, वायनाड आदिवासी कल्याण सोसाइटी, स्वस्थ स्वराज, शोषित सेवा संघ आदि कई गैर सरकारी संगठन जनजातीय कल्याण कार्य में लगे हैं। निष्कर्ष, उपरोक्त सरकारी अधिनियमों, संवैधानिक प्रावधानों, कल्याणकारी योजनाओं, गैर सरकारी संगठन द्वारा कार्यों के बावजूद स्वतंत्रता के 78 वर्षों के उपरांत भी जनजातीय समुदाय विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, उचित पुनर्वास, आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हैं। निश्चय ही सरकार व सरकारी मशीनरी की प्रतिबद्धता में कमी, जनजातीय समुदायों में जागरूकता की कमी आदि इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन जनजातीय समुदाय के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। विस्थापन के उपरांत जनजातीय समुदायों के प्राकृतिक प्रवासन की व्यवस्था, उन्नत तकनीक व यंत्रीकरण के द्वारा जनजातीय क्षेत्र की उपज को बढ़ावा देकर तथा उनके उत्पाद व हस्तशिल्प आदि के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था कर उनके पलायन तथा उनके अन्य समाज में सात्मीकरण को रोका जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर उसे उनकी आजीविका से जोड़ा जा सकता है तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु जागरूक किया जा सकता है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर इसके प्रति जागरूक कर उन्हें बीमारी व कुपोषण से बचाया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र में सड़क, यातायात, संचार के साधन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि विकास कार्य द्वारा उन्हें आधुनिकता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। उनकी भाषा व साहित्य का संरक्षण कर उनकी वैभवशाली संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। इन कार्यों के द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त किया जा सकता है, वहीं उनके अस्तित्व को बचाकर देश के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सीरियल नंबर 55 मिस भावना दीवान, मिस भावना। नेक्स्ट 56 कैलाश विठल राव। नेक्स्ट सीरियल नंबर 57 पुनीत कुमार शुक्ल। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर 58 वेद प्रकाश। यस सर, पुनीत कुमार शुक्ल। मनोज मिश्र। यस सर, पुनीत कुमार शुक्ल। यस वेद प्रकाश जी।
मैं पुनीत कुमार शुक्ल। यस पुनीत सर, प्लीज स्टार्ट सर। जी जी जी। सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजर महोदय और थारू जनजातीय शोध पीठ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम लोग जैसे जो जनजातियों पर शोध करने के लिए आए हैं और कर रहे हैं कार्य, उनको बहुत बहुत हम लोगों को एक तरीके से सीढ़ियां मिल रही हैं जिससे हम लोग आगे काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे मैं अपने शोध का जो टॉपिक है, थारू जनजातियों का आर्थिक विकास जनपद बलरामपुर के विशेष संदर्भ में। बलरामपुर चूंकि उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला एक जनपद है, जो कि पूर्व में गोंडा डिस्ट्रिक्ट देवीपाटन मंडल गोंडा का एक जनपद हुआ करता था, उसी को काट करके इसको अलग किया गया। जैसा कि थारू जनजाति उत्तर भारत के तराई क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि जिलों में निवास करती है। बलरामपुर जिले के 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजातियों की जो आबादी है 24,701 है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति एसटी समूह में से एक है। ऐतिहासिक रूप से थारू समुदाय की आजीविका पारंपरिक रूप से कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, जंगल आधारित संसाधनों पर निर्भर रहती है। जमीन के संबंध में वनाधिकार, सामाजिक भेदभाव और सीमित शैक्षणिक संसाधन उनकी आर्थिक विकास यात्रा में चुनौतियां रही। आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति बलरामपुर संदर्भ में। जनसंख्या और समाज की संरचना। अगर हम जनसंख्या देखें, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि बलरामपुर में थारू जनसंख्या 24,761 जो भारत सरकार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। थारू जनजातियों की शिक्षा स्तर बहुत कम है। उदाहरण रूप में भोजपुर थारू गांव बलरामपुर में जो है साक्षरता दर लगभग 35.53% है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में थारू जनजाति की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी स्वास्थ्य साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित रही है। अध्ययन बताते हैं कि उनकी लिंग अनुपात, बाल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य खोज, व्यवहार में चुनौतियां पाई जाती हैं। आजीविका और आय के स्रोत। पारंपरिक आजीविका जिसमें कृषि, मुख्य रूप से नर्सरी, अनाज, तिलहन, पशुपालन, मछली पकड़ना, जंगल से संग्रह, जड़ी बूटी, लकड़ी आदि को इकट्ठा करना। हाल ही में यूपी सरकार ने होम स्टे विकास, इको टूरिज्म की पहल शुरू की, जहां थारू गांव को पर्यटक के लिए हरे भरे पारंपरिक घर फुट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन आधारित आय का स्रोत मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने थारू हस्तशिल्प समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SSGS को वित्तीय सहायता भी दी है। सरकारी विकास पहले और कल्याणकारी प्रोग्राम। विशेष शिविर कैंप्स। बलरामपुर प्रशासन ने थारू बहुल गांव में कैंप आयोजित किए हैं, जहां लगभग 30 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन, आधार, नामांकन के लिए लाभार्थियों को पंजीकृत और चिन्हांकन किया गया है। निःशुल्क कोचिंग। पचपड़वा विकास ब्लॉक में स्थित थारू बहुल गांव के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा जैसे एनडीए, नीट, जेईई की मुफ्त कोचिंग शुरू की गई है। संस्कृति संग्रहालय। बलरामपुर में थारू संस्कृति संरक्षण और प्रचार के लगभग 33.59 करोड़ की लागत से थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जो कि इमलिया कोडर में पड़ता है स्थान। वित्तीय सहायता समूह। उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू समुदाय के लिए 731 SSGS गठित किए हैं और हर समूह को 30,000 रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख कमेटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF दिया गया है। चुनौतियां और अवरोध। थारू जनजाति की आर्थिक विकास की वजह सीमित रहा है। शिक्षा की दरों में कमी, जैसे कि भोजपुर थारू गांव में साक्षरता बहुत कम 35.5% दिखाई दी। कम शिक्षा स्तर, बेहतर आर्थिक विकल्पों जिसमें उच्च आय, काम, स्वरोजगार को कठिन बनाता है। और भूमि और संपत्ति अधिकारों की समस्या। पारंपरिक भूमि उपयोग और वनाधिकार विवाद। कुछ अध्ययन में कहा गया है कि औपनिवेशिक के बाद के काल में भूमि सुधार नीतियों ने थारू समुदाय को नुकसान ही पहुंचाया है। उनकी खेती पारंपरिक और सीमित संसाधनों पर निर्भर है, जिससे उत्पादन और आय सीमित रहती है। स्वास्थ्य एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुंच। स्वास्थ्य उपयोग व्यवहार बहुत विविध है और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है। ग्रामीण थारू इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्वास्थ्य केंद्र, परिवहन विकास में बाधक है।
पारंपरिक जीवन और आधुनिक आकर्षण के बीच संघर्ष। पर्यटन आधारित आर्थिक पहल, इसमें होम स्टे आने से कुछ आर्थिक लाभ हैं, लेकिन संस्कृति और जीवन शैली में बदलाव भी हो सकता है और सभी लोग समान रूप से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। बाजारों में हस्तशिल्प को जोड़ने में चुनौतियां, वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन आदि। आर्थिक विकास की दिशा और सुझाव। थारू समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित रणनीतिक सहायक हो सकती है, जिसमें शिक्षा और कौशल विकास, निःशुल्क कोचिंग जैसे कार्यक्रमों को बढ़ाना और थारू युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रेरित करना। स्थानीय स्कूलों में जनजातीय बच्चों के लिए लक्ष्य भरी शिक्षा योजनाएं, जिसमें स्कॉलरशिप, छात्रावास आदि। वनाधिकार और भूमि सुधार नीति, थारू समुदाय के लिए स्पष्ट भूमि स्वामित्व और वनाधिकार सुनिश्चित करना। सामुदायिक भूमि प्रबंधन मंडल को प्रोत्साहित करना, जिससे वे जंगल संसाधनों का संरक्षण कर सकें और आय उत्पन्न कर सकें। हरित पर्यटन, इको टूरिज्म का विस्तार, थारू होम स्टे को और व्यवस्थित करना, जिससे पर्यटन आय में बढ़ोतरी हो सके और पर्यटन अनुभव अधिक प्रमाणित बने। हस्तशिल्प, जिसमें जूट, मटमैले सांस्कृतिक वस्तुएं को पर्यटन बाजार से जोड़ना, पर्यटन मार्गों पर थारू हस्तशिल्प बाजार स्थापित करना। आर्थिक वित्त पोषण और समूह समर्थन, SHG मॉडल को और सुदृढ़ करना, अधिक समूह गठित करना, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण देना। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़क, पानी, बिजली में निवेश करना, जिससे उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो। स्वास्थ्य सेवा सुधार, थारू इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाए। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, विशेष रूप से मातृ शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देना। सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार, थारू सांस्कृतिक संग्रहालय का उपयोग शिक्षा और पर्यटन के केंद्र के रूप में करना। सांस्कृतिक महोत्सव, नृत्य, संगीत और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक अवसर, पर्यावरण और संस्कृति बने। निष्कर्ष, थारू जनजाति का आर्थिक विकास बलरामपुर जनपद में प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। जनसंख्या, आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से उनकी पहचान मजबूत है और सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे SHG गठन, वित्तीय मद, सांस्कृतिक संग्रहालय और कोचिंग कार्यक्रम। फिर भी उनकी शिक्षा दर में कमी, भूमि अधिकारों की जटिलताएं, स्वास्थ्य सेवा की सीमित पहुंच और आर्थिक अवसरों में असमानता जैसी चुनौतियां बनी हुई है। समष्टिगत आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समन्वित नीति दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें शिक्षा, भूमि सुधार, पर्यटन, वित्तीय समूह और स्वास्थ्य योजनाएं एकीकृत हों। यह न केवल थारू समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित करते हुए उन्हें मुख्य धारा में शामिल करेगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वनाधिकार के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अधिकार मांगने से न मिले संघात पाप हो जाएं, अधिकार मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाएं। बताओ धर्मराज, हम जीवित रहें या कि मर जाएं? धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर पुनीत कुमार सर, गुड प्रेजेंटेशन लगता है जैसे ना उसका सब्जेक्ट नेम लगता है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कॉमर्स से, कोई भी सब्जेक्ट। नेक्स्ट सीरियल नंबर वेद प्रकाश सर। नेक्स्ट सीरियल नंबर 59 आशीष कुमार। वेद प्रकाश प्रेजेंट सर। यस वेद प्रकाश सर, शोध छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। यस प्लीज स्टार्ट। आदरणीय सर, मैं वेद प्रकाश, शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। मेरा टॉपिक थारू जनजाति की कृषि एवं आर्थिक विकास बलरामपुर जिले के विशेष संदर्भ में है सर। यह अध्ययन बलरामपुर जनपद की थारू बस्तियों पर केंद्रित है। अध्ययन में कुल 100 परिवारों को शामिल किया गया, ताकि उनके कृषि, आजीविका और आर्थिक विकास की स्थिति का वास्तविक आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण किया जा सके। सर्वेक्षण में शामिल प्रमुख बस्तियों और गांव इस प्रकार हैं: जलगांव, खैरोली, बहरई, पिचरावा, फिसगांव। इन गांवों में रहने वाले थारू परिवारों की आजीविका मुख्यतः कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार 68 परिवार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, 23 परिवार कृषि के साथ साथ दैनिक मजदूरी करते हैं और शेष 9 परिवार कुटीर उद्योग और अन्य व्यवसायों में संलग्न है। यह क्षेत्र थारू जनजाति की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इन बस्तियों में कृषि के साथ साथ पारंपरिक रीति रिवाजों
और सांस्कृतिक पर्वों का भी विशेष महत्व है। सर्वेक्षण डेटा ने यह दर्शाया कि भूमि का आकार, सिंचाई की सुविधा, पारंपरिक खेती के तरीके और बाजार तक पहुंच की स्थिति इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि बलरामपुर के थारू परिवारों की आजीविका और आर्थिक विकास में कृषि सुधार, आजीविका के वैकल्पिक साधन और सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच आवश्यक है ताकि उनका सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। थारू जनजाति की कृषि प्रमुख रूप से धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, दलहन आदि हैं। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि थारू परिवारों की मुख्य फसलें धान और गेहूं हैं, जो उनकी घरेलू आवश्यकताओं और बाजार बिक्री दोनों के लिए उगाई जाती हैं। मक्का पशु आहार और घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ज्वार और दलहन का योगदान प्रोटीन और उर्वरक के स्रोत के रूप में होता है। इस डेटा ने यह भी पता चलता है कि अधिकांश थारू परिवार परंपरागत कृषि पद्धति अपनाते हैं और उनकी आजीविका कृषि पर काफी हद तक निर्भर है। खेती के तरीके सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि थारू परिवारों में 92 परिवार पारंपरिक औजारों का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी कृषि तथा पारंपरिक और सीमित संसाधन पर आधारित है। 78 परिवार खेती वर्षा पर निर्भर करते हैं, जो उनकी उत्पादन क्षमता को मौसमी बदलावों से प्रभावित करती है। वहीं 65 परिवार प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन आधुनिक उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण उनकी कृषि उत्पादकता सीमित रह जाती है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि थारू परिवारों की कृषि में सबसे बड़ी बाधा सिंचाई की कमी 81% है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। 72% परिवारों को आधुनिक बीज और उर्वरक की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा 64% परिवारों की भूमि का आकार छोटा और बटी हुई है, जो उत्पादन क्षमता को सीमित करता है। 58% परिवारों को बाजार तक पहुंच की कठिनाई के कारण अपनी फसलों की बिक्री और आय में समस्या होती है। ये सब उसमें तालिका दिया गया है। तालिका से पता चलता है कि थारू समुदाय की अधिकांश आजीविका कृषि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त 23 परिवार कृषि के साथ साथ दैनिक मजदूरी में संलग्न है, जबकि 9 परिवार कुटीर उद्योग या अन्य व्यवसायों से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। यह डेटा दर्शाता है कि थारू समाज की आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और सीमित संख्या में परिवार वैकल्पिक आजीविका साधनों से आय अर्जित कर पा रहे हैं। थारू समाज में आजीविका के पारंपरिक स्रोत के रूप में कृषि प्रमुख है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य गतिविधियों भी उनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 56 परिवार पशुपालन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। यह न केवल परिवार की खाद्य सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि दूध, घी, पशु विक्रय आदि से आय का अस्थायी स्रोत भी प्रदान करता है। पशुपालन के साथ ही स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का प्रयोग भी आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होता है। इसके अलावा 42 परिवारों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह गतिविधियों में सक्रिय हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत ऋण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे न केवल उनके व्यक्तित्व और सशक्तिकरण में सुधार होता है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आता है। गतिविधियां अक्सर हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, छोटे व्यापार और सामुदायिक परियोजनाओं से जुड़ी होती हैं, जो स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार पारंपरिक कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और गतिविधियां थारू समाज में आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर रही हैं। यह विविध आजीविका उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करती है, परिवारों को आर्थिक अस्थिरता से बचाती हैं और समुदाय के सतत विकास को प्रोत्साहित करती है। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि थारू समुदाय की औसत वार्षिक आय 60,000 रुपए से 90,000 रुपए के बीच है, जो मुख्यतः कृषि और अन्य आजीविका गतिविधियों पर निर्भर है। अधिकांश परिवारों के पास 0.5 से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है, जो उनके उत्पादन क्षमता और आय को सीमित करती है। शिक्षा का स्तर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वेक्षण के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 68% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 47% है। यह लैंगिक अंतर पारिवारिक निर्णय, रोजगार और आजीविका विकल्पों पर असर डालता है। युवा वर्ग में रोजगार की स्थिति भी चिंताजनक है। 34 परिवारों के युवा कृषि से बाहर जाकर दैनिक मजदूरी करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि पारंपरिक कृषि पर्याप्त आय नहीं प्रदान कर पा रही है। आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए कृषि सुधार,
स्वरोजगार, महिला और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि थारू समाज की आजीविका मुख्यतः कृषि पर आधारित है। अधिकांश परिवार सीमित संसाधनों, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा और आधुनिक कृषि तकनीकों की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन और आय में सीमित हैं। पारंपरिक कृषि तकनीक मौजूदा बदलते मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन अनियमित रहता है और आय में अस्थिरता बनी रहती है। युवा वर्ग शिक्षा और स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे घट रही है। यदि इन्हें व्यावसायिक कौशल और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि समुदाय के समग्र विकास में भी योगदान देगा। सर्वेक्षण में यह भी दर्शाया गया है कि सरकारी योजनाओं और आर्थिक लाभों की सीमित पहुंच थारू समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है। योजनाओं की सही जानकारी और पहुंच न होने के कारण कई परिवार लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के अभाव में समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार धीमा है। इस प्रकार थारू समाज की आजीविका और आर्थिक विकास में संसाधन प्रबंधन, आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप, बाजार तक पहुंच और सामाजिक सांस्कृतिक समर्थन महत्वपूर्ण कारक है, जिन्हें सुधारने में सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। थारू समाज के सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। कृषि विकास से संबंधित पारंपरिक कृषि पद्धतियों के सीमित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किसानों को आधुनिक बीज, उर्वरक, सिंचाई प्रणाली और कृषि तकनीक उपलब्ध कराना चाहिए। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और आय में स्थिरता आएगी। साथ ही कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों और जल संरक्षण विधियों का ज्ञान भी साझा किया जा सकता है। आर्थिक सशक्तिकरण, महिला और युवा समूहों को स्वरोजगार, ऋण, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह न केवल परिवारों की आय बढ़ाएगा, बल्कि महिलाओं और युवाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी योगदान देगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सर्वेक्षण और विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि थारू जनजाति का आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि आधारित है। अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए परंपरागत कृषि पर निर्भर हैं, जिसमें सीमित संसाधन, सिंचाई की कमी और आधुनिक कृषि तकनीक की अनुपलब्धता प्रमुख बाधाएं हैं। इन कारणों के कारण फसल उत्पादन में अस्थिरता रहती है और आय सीमित रहती है। साथ ही युवा वर्ग शिक्षा और स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रहा है, जो पारंपरिक कृषि पर निर्भरता को धीरे धीरे कम कर रहा है। यह संकेत करता है कि कौशल विकास, स्वरोजगार अवसर और वैकल्पिक आजीविका साधनों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने से परिवारों की आय बढ़ सकती है और समुदाय की सामाजिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सरकारी योजनाओं का लाभ वर्तमान में सीमित परिवारों तक पहुंच पा रहा है, जिससे सतत विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यदि इन योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जाए और ग्रामीण जागरूकता एवं आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, तो अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार थारू समाज का समग्र और सतत विकास केवल कृषि सुधार, वैकल्पिक आजीविका, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार योजनाओं की प्रभावी पहुंच के माध्यम से संभव है। इस दिशा में सामुदायिक भागीदारी और नीति निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अवसर देने के लिए। थैंक यू सर, अवसर देने के लिए। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good presentation, sir. Next serial number 59, Ashish Kumar. Ashish Kumar. The next serial number 60, Pradeep Kumar Raj. Pradeep Kumar Raj. Next serial number 61, Mahesh Kumar Nagar. Mahesh Kumar, sir. Okay, next serial number 62, Kangana Talukdar. Kangana. Okay, next serial number 63, Sangeeta Hira Lal. Sangeeta Hira Lal. Next serial number Sachin Kumar. The Sachin Singh. Sachin Singh, 64 serial number. Okay, 65, Priyanka Sisodia. Priyanka Sisodia. Okay, next 66,
Dr. Ravit Barta Malik, Dr. Ravit Barta. Okay, next serial number 67, Dr. Ranjita Peeth. Hello, sir. Good evening. 67 serial number. Yes, Ranjita ma'am, please start. Okay, Assistant thank you. Professor of Marketing and Management, Bangalore University. Yes, please start me. Only 5 minutes. Yes, sir. Just a second, I will share. ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Just 1 second, sir. 1 second. Hello. Just a second, sir. 1 second. I. Yeah, very good. You can see this share screen, no, sir? Yes, screen is visible. Yes, आपकी screen show हो रही है. Okay, very good afternoon. I am Ranjita from Bangalore. Today I am presenting on the how the tribal communities can empower through the Indian Bazaar concept. Okay, so first and foremost, when we are talking about the Indian Bazaar, these are the street vendors or the we can call it that their own street entrepreneurs also. How we can empower through the Indian Bazaar concept. So first and foremost, tribal communities, what is the necessity is that they have the rich cultural and the economic potential, which is untapped. The problem here in India is we are all talking about the rural untapped market. We are talking about the rural untapped potential, but we are not at all talking about this particular tribal communities. And despite their skills and struggle, but the problem with them is they have the limited access to the market, and they're traditionally they are having a challenge with their traditional livelihoods, which is actually putting them to the isolation due to their agents are not properly communicating, or neither they are having their problems when it comes to communication. So there are some of the 2 to 3 organizations from the government and other which are actually working for these people, like Tribes India. TriFed is the nodal agency working with the communities, and there are around 100 physical retail stores across the country to market these tribal products. Okay, but the problem here is whether it is original or one line product or the fake product, still we are unable to understand. There is one more Mahotsav which happened in recently in one of the state called Adi Mahotsav, where these flagship exhibitions are actually there to promote their tribal craft culture, cuisine, and commerce. And the what is the problem statement of my paper is that how the middleman is exploiting the tribal producers and how the low pricing costing. For example, we are having so many clay earrings and all which comes through, but we are really not aware how the tribal communities make originally those clay and that wooden earrings. So we are not having proper middlemen to give to the Indian bazaar. The poor connectivity and infrastructure which they are normally they don't know,
how to exhibit. Sometimes they may not be knowing how to put the stall, whether through the e-commerce or through the brick and mortar. Next is lack of branding and awareness are actually restricting this. I want to tell you, foreign countries are exhibitly using our Indian tribal arts and other things for the different brands, but we Indians have not even taken any kind of IPR for it, even though we know this is ours. There's a huge problem in that. And when it comes to the Indian bazaar concept, the hybrid digital and physical marketplace can give an immense opportunity for the tribal communities to enrich economically and financially with for their livelihood. Next, it connects the producers directly with the national consumers. I think I was listening to the keynote speaker who was talking about how many tribal communities are there. Let me simply tell you that India, being such a diverse country, is why still we are unable to, take upon our own money from our own traditional producers, where there is a big problem because we are not directly connecting to our own consumers. Next, and we have to reduce the dependency on the intermediaries. At least one tribal community should be represented by one person so they can directly communicate. So now there is a slight improvement happening, like some of the tribal producers are directly selling it through Amazon or through some of the marketplaces which recently started by some of the companies like Tribe India also started. There is one particular communities in our Udupi in the Bangalore area. They are working called E-Samudai, which is actually having around 3,000 plus vendors, small vendors also, like not perfectly for the tribal, but for the rural India. But barriers are there, like dependency of intermediaries, as I have already. But the big trouble nowadays is they are literally low digital literacy. I won't say they are completely digital illiterate. It will be wrong on my notion. So their low digital literacy is preparing a problem, and they don't know how to brand and how to standardize according to the standards of whatever. Actually, this was also one of the person who was actually talking about it. How we can improve? Actually, one conceptual model which actually I was writing about is that they can go ahead with the tribal producers, who includes we can have they can have a tribal producers community where they can have the artisans, farmers, and the minor forest product (MFB) they can have, and access to the platforms, whether it is brick and mortar or anything, and they can go ahead on the Indian bazaar model. They have to get a proper digital marketplace. It might be their own or any good NGOs or from anybody. They should have a proper logistics and training, how to brand, how to support, and how to make the payment. What kind of packaging nationally, internationally standards are there, and improved market linkages can come into picture in the mediatory, and education enhanced livelihood outcomes, and in the end they are going to have the high income. There needs a digital empowerment when it comes to how to brand it, how to do the selling, how to have their own entrepreneurship among the communities itself, and we should give a proper logistics support first and foremost. I was listening to the newspapers where they were telling some of the states are having right now the railway or the other kinds of infrastructure, transport infrastructure. So there is a high necessity for us to improve that kind of infrastructure to support the logistics. And next is the cultural promotion. We have to know where the tribal arts and natural products are really coming from, and how to promote indigenously to their own identity, not to the third party or to the intermediaries. In India, the problem is that intermediaries are marketing their products, putting their name, and tribals are falling in short of their brands. And their livelihood impact, it increases the transparency in the chain and enhances the stability of their inclusion in the society. I want to tell you, when our president got selected, we were actually searching what is the surname, where exactly it comes from, and later when we got to know so many things about them, like we were so proud that oh my god, these many are there. So that is what exactly we have to give the more stability to their livelihood and also to the other aspects of it.
and we have to support the sustainable rural development, which enhances the tribal development. My conclusion is that Indian Bazaar is one place where we actually bridge the gap between our producers, their identity, and the market. And the enhancement of their brands with respect to each and every tribal community can come up with the Indian Bazaar model. Okay, whether it is the Sarojini market to our Bangalore's Chickpete or the commercial street market, each and every market has their own name, and we go to their respective brand. So if this Indian Bazaar gives a prayer for the tribal communities, it gives them an enhancement there for their brands also, and empower the communities through the technology, and we can contribute long term for their economic and cultural stability, which is actually needed, essential for the present Indian economic well development. That's what my topic of the day. Thank you so much, sir. Thank you so much, Brijesh sir, for this immense opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Ranjita, ma'am, for this presentation. Next serial number 68, Suman Bala. Suman Bala. हेलो सर, मैं सुमन बाला प्रेजेंट सर. Yes, Suman Bala, ma'am, research scholar of Hindi, Haryana Kendriya Vishwavidyalaya. Yes, please start, ma'am. Only 5 minutes. सर, नमस्कार सर. इस मंच पर उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार. मेरा विषय है महिला सशक्तिकरण एक अध्ययन. महिला सशक्तिकरण आधुनिक समाज विज्ञान विकास अध्ययन और मानवाधिकार विमर्श की केंद्रीय अवधारणा है. यह केवल महिलाओं को कुछ अधिकार देने भर का विषय नहीं, बल्कि समाज की संरचना, सोच, व्यवहार, शक्ति संतुलन में एक व्यापक परिवर्तन का प्रश्न है. सशक्तिकरण का अर्थ किसी को शक्ति देना नहीं, बल्कि शक्ति के उन अवरोधों को तोड़ना है जो महिलाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता को रोकते हैं. महिला सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य स्त्री को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी स्तरों पर सक्षम बनाना है, ताकि वह अपने जीवन संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके. भारत एक सांस्कृतिक रूप से विविधता का देश है, जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों का गहरा प्रभाव है. प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों के कई स्वरूप सीता, द्रौपदी, गार्गी, मैत्री आदर्श के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इतिहास के विभिन्न चरणों में सामाजिक ढांचे ने महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में बांध दिया है. आजादी के बाद संविधान ने समानता के अधिकार की पुष्टि की है, किंतु व्यवहार में लैंगिक असमानता आज भी अनेक रूपों में विद्यमान है. इसलिए महिला सशक्तिकरण आधुनिक भारत के लिए केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि अनिवार्य विकास लक्ष्य है. महिला सशक्तिकरण की अवधारणा. सशक्तिकरण शब्द का सामान्य अर्थ शक्ति प्राप्त करना, निर्णय क्षमता करना तथा स्वयं के जीवन पर अधिकार. महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, जिसे वे अपने व्यक्तिगत सामूहिक जीवन के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें. इसमें 2 स्तर शामिल हैं. व्यक्तिगत स्तर पर सशक्तिकरण, शिक्षा, आत्मविश्वास, आर्थिक स्वावलंबन, अपने शरीर और जीवन पर अधिकार. सामाजिक संरचना सशक्तिकरण, समाज की लैंगिक असमानता संरचना को परिवर्तित करना, महिलाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना. महिला सशक्तिकरण स्त्रियों के कल्याण उनका कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है. यह पुरुष और महिला दोनों की साझी जिम्मेदारी है. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास अनेक चरणों से गुजरता है. वैदिक युग. इस युग में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रताएं प्राप्त थी. वे शिक्षा प्राप्त करती, ऋषि पत्नी के रूप में वैदिक रचनाओं में योगदान देती, यज्ञों में सम्मिलित होती. गार्गी, मैत्री, अपाला जैसी विदुषियां इसका प्रमाण है. उत्तर वैदिक और मध्यकाल. इस समय में स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती गई. कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कुप्रथाओं ने स्त्री के अस्तित्व को सीमित कर दिया. शिक्षा और स्वतंत्रता दोनों बाधित हुई. मध्य युग. भक्ति आंदोलन. मीरा, ललल देवी, सहजाबाई, जनाबाई जैसी संत कवित्रियों ने स्त्री अस्मिता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर संकेत किए. यह काल स्त्रियों की आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था. आधुनिक युग. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, पंडिता
रमाबाई जैसी सुधारकों ने स्त्री शिक्षा और अधिकारों के प्रति आंदोलन चलाए। स्त्री प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे कदम उठाए गए। स्वतंत्रता आंदोलन, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडिता जैसी महिला नेताओं ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने नारी शक्ति को स्वतंत्रता संग्राम की केंद्रीय शक्ति कहा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी जैसे मूल अधिकारों की गारंटी दी। इसके बाद अनेक नीतियां, कानून और योजनाएं महिलाओं के विकास हेतु लागू की गई। भारत में महिला सशक्तिकरण की जो वर्तमान स्थिति है, स्त्री शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा में भी महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबंध आदि क्षेत्रों में अग्रसर हो रही है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर अभी भी कम है। आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाएं कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उद्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं में कार्यरत हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक, तकनीकी और में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण में बाधाएं, पितृसत्तात्मक सोच, समाज में जड़ जमा चुकी पितृसत्तात्मक महिलाओं को द्वितीय भूमिका में स्थापित करती है। इसमें उनकी शिक्षा, नौकरी, स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। शिक्षा में कमी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा आज भी घर परिवार और रूढ़ियों के कारण बाधित होती है। आर्थिक निर्भरता, बहुत सी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक हिंसा महिलाओं को कमजोर बनाती है। लैंगिक भेदभाव, काम के स्थान पर असमान वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, कार्यस्थल उत्पीड़न जैसी समस्याएं महिलाओं के आत्मविश्वास और प्रगति को प्रभावित करती हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंग चयन जैसी कुरीतियां आज भी कई क्षेत्रों में मौजूद है। सुरक्षा की समस्या, महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का प्रश्न स्वतंत्रता और गतिशीलता को सीमित करता है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी प्रयास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप स्टेप, महिला हेल्पलाइन नंबर, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ योजना, स्वयं सहायता समूह, आरक्षण नीतियां। महिला सशक्तिकरण के सांस्कृतिक आयाम, भारतीय संस्कृति में नारी को सशक्त, करुण, सर्जन और धैर्य का प्रतीक माना गया है, किंतु समाज में अनेक बार ऐसी सीमाओं में बांधा है जो आज सांस्कृतिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। जहां लड़कियों की इच्छाओं और सपनों को मान्यता मिले, परिवार में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में स्त्रियों की भागीदारी बढ़े, विवाह मातृत्व की ही स्त्री जीवन एकमात्र उद्देश्य न माना जाए, माता पिता बेटे की तरह बेटियों को भी निवेश करें। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सशक्तिकरण की स्थायी नींव है। महिला सशक्तिकरण के मनोवैज्ञानिक आयाम, सशक्तिकरण केवल बाहरी अधिकारों में नहीं आता, बल्कि भीतर से उत्पन्न आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मशक्ति से आता है। जब महिलाएं स्वयं को सक्षम, योग्य और स्वतंत्र महसूस करने लगेंगी, तभी वास्तविक परिवर्तन होता है। इसलिए काउंसलिंग, प्रेरक शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता जैसे प्रयास महिलाओं की मनोवैज्ञानिक शक्ति को बढ़ाते हैं। परिवार में निर्णय में भाग लेती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान देती हैं, आर्थिक रूप से आर्थिक सक्षम होती हैं, समाज में बेहतर योगदान देती है। इसलिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मूल आधार है। महिला सशक्तिकरण वैश्विक परिप्रेक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए कई पहलें की गई है। बीजिंग घोषणा सतत विकास लक्ष्य, विश्व के कई देशों में लैंगिक समानता पर प्रभावी नीतियां लागू हैं, परंतु विकासशील देशों में चुनौतियां अधिक हैं। भारत में स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भविष्य की दशा, लैंगिक समानता पर अधिकार, शिक्षा, स्कूल स्तर से ही बच्चे में समानता की भावना विकसित की जानी चाहिए। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता, महिला परिवेश महिलाओं को आत्मविश्वास और गतिशीलता को बढ़ाता है। आर्थिक अवसरों की में वृद्धि, तकनीकी सशक्तिकरण, कानून का सख्त पालन करना, परिवार और समाज की मानसिकता में परिवर्तन। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के अधिकार देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह समाज की अमानवीय असमान संरचनाओं को बदलने की चुनौती है। जब
जब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, राजनीतिक और सामाजिकता में अपनी भूमिका निभाती हैं, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। सशक्त महिलाएं न केवल स्वयं को की रक्षा करती हैं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देती है। अतः महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रगति, सभ्यता की उन्नति का आधार है। धन्यवाद सर। सर प्रदीप कुमार राज। Thank you so much, Bala ma'am. Next number 69, Ram Rao Ganpat Rao. Ram Rao. Okay, next serial number 70, Pradeep Kumar Patel. प्रदीप कुमार राज है सर, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। जी 70 सीरियल नंबर प्रदीप कुमार जी। ये प्रदीप कुमार राज 60 नंबर में है सर आपका। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। 60 नंबर में है आपका। यस प्लीज स्टार्ट सर, ओनली 4 मिनट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्रदीप कुमार राज जी, आप करना चाहते हैं? जी सर, जी सर, यस प्लीज स्टार्ट सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर है 171 डॉक्टर राम उदय सिंह। यस सर, प्रेजेंट सर। यस डॉक्टर राम उदय सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी जी, आवाज आ रही है सर? यस प्लीज स्टार्ट सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। ठीक सर। गुड इवनिंग फॉर ऑल सर। I am Dr. Ramuday Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, Jagdam College, Chhapra, JP University. My topic abstract is भारतीय आदिवासी संघर्ष और स्वदेशी आत्मनिर्णय में बिरसा मुंडा का योगदान। ठीक है सर? ओके सर? यस हेलो, सर, ऑडिबल सर, ऑडिबल। ठीक सर। भारतीय आदिवासी संघर्ष और स्वदेशी आत्मनिर्णय के इतिहास में बिरसा मुंडा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी विरासत आज भी हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिक समय में जनजातीय समुदाय किस तरह से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। 1895 1900 के उन्गुलान विद्रोह के दौरान उनका नेतृत्व और ब्रिटिश शासन की आलोचना यह सिखाती है कि शोषणकारी विकास मॉडल का विरोध कैसे किया जाए, गलत शासन प्रणालियों को चुनौती कैसे दी जाए और विभिन्न समुदायों के बीच एकजुटता कैसे बनाई जाए। उपनिवेशवाद और आज के बाद उपनिवेशवादी हालतों को देखते हुए बिरसा मुंडा का यह विचार कि आदिवासी समाज अपनी गरिमा, संस्कृति और आत्मनिर्णय को वापस हासिल करे आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भूमि अधिकारों और शोषण विरोधी उपायों पर उनका जोर सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी संप्रभुता, इन तीनों को जोड़ता है। यही वजह है कि उनका मॉडल आज भी आदिवासी समुदायों को अपने जंगल, जमीन और संसाधनों को कंपनी और राज्यों के हस्तक्षेप से बचाने के लिए प्रेरित करता है। आज भारत में जंगलों का अधिकार, भूमि अधिकार और आदिवासी स्वायत्ता पर होने वाले चर्चाओं में भी बिरसा मुंडा के विचारों की गूंज सुनाई देती है। उनकी सोच ने नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है और आदिवासी संप्रभुता तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बहस को दिशा दी है। कुल मिलाकर बिरसा मुंडा का नेतृत्व का न केवल उरांव समुदाय पर बल्कि पूरे भारत के आदिवासी आंदोलनों पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। यह प्रभाव आज भी आदिवासी अधिकारों से संबंधित नीतियों और चर्चाओं को प्रभावित कर रहा है और सांस्कृतिक पुनर्जीवन की राह दिखा रहा है। थैंक यू सर।
Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Good presentation, sir. Next serial number 70, Pradeep Kumar Patel. Next serial number 72, Prasant Vittal Rao. Yes, sir. Am I audible? Rao, sir. Assistant Yes, sir. Professor English, Nasik, Maharashtra. Yes, please start, sir. Only 4 minutes. जी सर. स्क्रीन दिख रही है सर? हेलो. Yes, sir. हाँ Yes. जी जी. Good afternoon, respected organizers, faculty members, and fellow researchers. Today, I am presenting my research titled "Digital Voices from the Margins: Analyzing the Role of Tribal Social Media Influencers in Contemporary India." This study explores how tribal youth are using digital platforms to shape representation, challenge stereotypes, and negotiate visibility in India's complex digital landscape. This research examines the digital practices of 30 tribal influencers across several states, including Maharashtra, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, and the Northeast. The study focuses on authenticity, representation, and structural inequality. Through examples like Adivasi Janjagruti and Adivasi hair oil controversy, I explore how tribal identity is used for activism, empowerment, and sometimes for commercial exploitation. The study argues that tribal influencers occupy a transformative yet precarious position in India's digital public sphere. Historically, Adivasi communities have been portrayed through narrow stereotypes, often as primitive, isolated, or backward. But with smartphones and affordable data, tribal youth now have tools to narrate their own realities. Across Instagram, YouTube, and Facebook, they are documenting farming, traditions, dances, festivals, languages, etc. However, these expressions exist within unequal digital structures shaped by algorithmic bias and economic constraints. Digital participation does not equal digital equality. Tribal creators face significant constraints like low income levels, unstable network connectivity, lack of digital training, high data costs, basic devices that reduce video quality. Because of this, even highly talented creators struggles to compete with mainstream influencers. Their content often receives less visibility and generates less monetization. This studies by scholars like Ruby Ghosh and Nandini Chandra show how tribal communities have been misrepresented in Indian cinema and marginalized in digital spaces. Research on influencer culture highlights the pressure to perform authenticity. For tribal influencers, authenticity becomes a burden. Audiences want them to remain traditional, denying them the space to be modern or hybrid. Despite their growing popularity, academic research on tribal influencers is still very limited, which creates a gap this study aims to address. This research uses qualitative content analysis. I examined 30 tribal influencers across Instagram, YouTube, and Facebook. The selection was based on cultural relevance, community engagement, and sustained content creation. Two important cases were studied in this data, that is Adivasi Janjagruti, a grassroots digital journalism collective, and the Adivasi hair oil marketing controversy. Public videos, comments, and media reports formed the primary data set. Findings. One of the strongest findings is the emergence of tribal influencers as community journalists. Adivasi Janjagruti, for example, uses mobile videos to highlight corruption, water scarcity, and public service failures. Their work has resulted in borewells being dug, officials being held accountable, and fraud being exposed. This shows that digital media in tribal hands can create really measurable change.
Tribal influencers are reclaiming cultural representations. Warli painters, Santhal dance groups, and creators sharing indigenous food traditions are challenging stereotypes. Their content shows that tribal culture is not static. It is contemporary, evolving, and deeply creative. These influencers function as cultural ambassadors and bridges between tribal and non-tribal audiences. However, tribal creators face contradictory expectations. If they dress modern, they are accused of abandoning tradition. If they show tradition, they are exoticized. Many comments reveal surprise that tribal youth speak English or use advanced technology. This reveals the deep biases that tribal influencers must continuously navigate. The Adivasi hair oil controversy is a powerful example of how tribal identity is commodified. Marketed as a tribal origin herbal remedy, the product went viral due to celebrity endorsements. But media reports found no scientific validation, counterfeit products, misuse of Hakipiki tribe's name. This case exposes how tribal identity can be exploited by mainstream influencers and advertisers without any benefit to the actual community. Despite their creativity, tribal influencers struggle with monetization. Low-income audiences mean low ad revenue, poor connectivity, and basic devices limit content quality. Many creators remain visible but not financially stable. This digital precarity mirrors the wider socio-economic inequalities faced by Adivasi communities. Another important contribution is cultural documentation. Tribal influencers record folk tales, songs, farming practices, rituals, festivals, and local ecological knowledge. These videos become digital archives for future generations, preserving oral traditions that might otherwise disappear. In conclusion, I would like to say tribal influencers are reshaping India's digital public sphere. They challenge stereotypes, preserve culture, and hold authorities accountable. Yet, their journey is marked by structural inequality, limited monetization, and cultural appropriation. To truly empower tribal digital voices, we need ethical media platforms and, more important, responsible audiences and inclusive digital policies. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good presentation, sir. Next serial number 73, Dr. Premlata Murmu. Dr. Premlata. Present, sir. Yeah, Dr. Premlata Murmu, Assistant Professor of History, उनका झारखंड से है. Yes, please start here. जी सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैडम. जी. Good afternoon to respected organizer and co-presenters. I am Dr. Premlata Murmu, Assistant Professor, Department of History, Santhal Pargana, Mahila Mahavidyalaya, Dumka, Jharkhand. Today, we are discussing a very important and burning issue. My topic is role of Santhal women in the development of tribal economy and analytical study. The economy refers to the traditional way in which tribal communities use, share, and manage natural resources to meet their needs. It is based on subsistence, collective ownership, and cultural values rather than profit of markets. The Santals are considered to be the third largest homogeneous scheduled tribe in India compared to non-tribal section of society. Gender discrimination, unequal division of work, etc., are less visible in tribal society. Women equally discharge their responsibilities both
at home and outside with honestly. In Santhal tribe, men are considered the inheritor of property. However, in some cases, especially in the recent decision given by the Supreme Court, women have been considered the rightful owners of property. In tribal society, women freely participate in all types of economic activities, but they are kept away from some livelihood tasks. The contribution of women of Santhal tribe to the economy can be understood in following way. First is participation of women in agricultural fields. The main sources of livelihood and economy of Santhal tribe include agriculture, animal husbandry, fishing, hunting, labor in factories, labor in other states, etc. Agriculture plays an important role in the economy of India as well as the tribal economy. It is worth noting that India is an agricultural country like other communities. Agriculture is the economic center of the Santhal community. They primarily grow rice, pulses, wheat, maize, mustard, and a variety of vegetables. Their crops are grown not only to feed themselves but also for sale in the market. Women have equal participation in various farming activities such as sowing seeds, planting paddy, and harvesting. They primarily use tractors, traditional plow, and blocks to plow the fields. In many areas, social barriers exist against women plowing, but women have broken this age-old tradition. Women are not only engaged in farming but also in transporting agricultural produce to market and selling it. Currently, women are actively participating in government run employment program. They train themselves and educate other women. Women often play an important role in investment and savings. The limited availability of cultivable land among the Santhal tribe forced them to work on other people's land and migrate also. Many landless farmers depend on others for their livelihood, although the government provides guaranteed food to those below the poverty line, but this is not enough. We can see the participation of women in other economic activities. Apart from agricultural, women play an important role in many other economic activities. If we look at the current situation of animal husbandry, it has become limited among the Santhal tribe. Declining prices of livestock and the reduction in the use of oxen for ploughing have reduced their need. Nevertheless, animal husbandry is commonly seen in many villages. Women are doing important work in this direction. Many voluntary organizations and government support groups provide them training in poultry farming, pig farming, fish farming, etc., which makes them self-reliant and plays an important role in the economy. Animal husbandry by the tribes is not only necessary for the economic system, but it is also a part of their traditional religion. Furthermore, it is important that women in rural areas are connected to systems like microbanking, which helps them resolve their capital needs. A Niti Aayog report states that women are showing great interest in self-employment and are leveraging it to support their families. It also currently observed that women are working as hard as men outside the village. For example,
working in brick kilns, in the construction of large government buildings, or even migrating to seek employment outside the states. It is currently evident that many women are working in neighboring states like West Bengal, Kerala, and Tamil Nadu, playing a significant role in earning a living. The government has implemented various schemes and programs in tribal areas, the most promising of which is the Skill India mission. Promoting self-employment for women has been a priority area for the government, including initiatives like Stand Up India, which provides loan to women, including those in marginalized communities. Many Many women are associated with self-help groups under the National Rural Livelihood Mission. Thus, women participation in the economic sector is not only making them individually self-reliant, but is also playing an important role in building the economy. In last, for conclusion, in this way, we can see that Santal women work hard. Rather, it can be said that they work as hard as men, but still they are not given equal remuneration in return for their work in urban areas or factories. They are not given right, equal status even in family. They have to struggle a lot for equality, but we can say that without women in Santhal tribe, development of society or development of economy is not possible. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Premlata, for good presentation. Next serial number 74, Jagmohan Chaudhary. Jagmohan. Next serial number 75, Dr. Manish Kumar Jain. Dr. Manish Kumar Jain. सर 8 नंबर कृपया बोलने को सर नंबर 1 इज आल्सो लगिंग राइट सर आई लेफ्ट जी अभी मेरे पास लिस्ट में से सभी का नाम तो मैंने अनाउंस किया है। अगर आप में से किसी का प्रेजेंटेशन रह गया है तो हाँ अपना मेरा नंबर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 8 नंबर सर है सर नंबर 1 वन बाय वन। ओके, डॉक्टर संजय कुमार सर, सीरियल नंबर 1 है। जी ओके, प्लीज स्टार्ट सर। ओनली 4 मिनट्स सर। Okay, sir. Good afternoon to all the members present here and the organizers. I am Dr. Sanjay Kumar, Assistant Professor, PG Department of English, Magadha University, Bodh. The topic of my presentation is preserving tribal culture and identity in the face of modernization and globalization, threat, challenges, and policy response. So this research paper investigates the threats posed by modernization and globalization to tribal language, tradition, and cultural identity. It further examines policy responses and initiatives aimed at preserving tribal culture and analyzing their effectiveness and limitations. In doing so, the paper aims to contribute to the discourses on cultural diversity, human rights, and sustainable development. So in this way, the article elaboration of the article is like this one. The process of modernization and globalization has brought unprecedented change to society across the globe, offering a venue for economic growth, technological advancement, and social transformation. However, these processes have also endangered profound challenges for indigenous and tribal communities, often threatening to their foundation and their cultural existence. As per UNESCO 2019 report, tribal population defined by their unique language, customs, social structure, and worldview have struggled to maintain their cultural identity amidst the humanizing forces of the mainstream society. The literature highlights the profound impact of modernization and globalization on preserving the tribal culture and identity. Tribal identity is deeply
rooted in kinship language, ritual, and a spiritual connection to ancestral lands. However, in many cases, one of most critical concern is the loss of indigenous language, which serves as a vessel for traditional knowledge and cultural memory, as per UNESCO report 2019. The erosion of language and is accompanied by a decline of customary practice and ecological wisdom, as mainstream education and modern livelihood gain prominence. Furthermore, tribal communities face social exclusion and marginalization due to inadequate legal protection and limited political representation. In response, international instrumentation like UNDRIP and national policies seek to safeguard tribal heritage, while NGO and community efforts focus on language documentation and cultural revitalization. Living tanks, despite their initiative gaps, persist due to limited resources and insufficient community participation. Further, the loss of ancestral land represents one of the most profound threats to the survival of tribal culture. For tribal communities, land is far more than economic resources. It is the foundation of their identity, spirituality, and social organization. The forest, river, and mountain that constitute their homeland are imbued with their sacred meaning, serves as a site for ritual, and festivals are essential for the practice of traditional livelihood, such as shifting, cultivation, hunting, gathering. When economic development projects such as dam construction, mining, industrialization, urban expansions are undertaken without adequate consultation or tribal population are frequently displaced from this land. Displacement disrupts very aspect of tribal life. Forced relocation often lead to fragmentation of extended family and communities and breakdown of traditional governance structure and loss of cultural practices that are integrally linked with a specific landscape. Ritual, songs, oral history tied to the land becomes very irrelevant and impossible, and sacred sites are left behind or destroyed. Moreover, the loss of access to traditional sources determine food security, health, and indigenous transmission of the knowledge. Trauma of displacement is compounded by inadequate compensation, lack of suitable resettlement sites, and experience of marginalization is now environmental, where tribal community may face discrimination and loss of the status. The recommendation of the article. Based on the analysis, the following recommendations are proposed for the effective conservation of the tribal culture and identity. Inclusive policy design, bilingual and culturally relevant education, legal protection of cultural and intellectual property, community-based documentation, economic incentive, international transmission, international collaboration are important. So, coming to the conclusion, the preservation of tribal culture and identity in face of modernization and globalization is both an ethical imperative and a pragmatic necessity for sustainable development. While the challenges are formidable, the resilience of tribal communities and the growing recognition of their right offer hope for the cultural effectiveness. Preservation requires inclusive, culturally sensitive policy, community participation, and sustained commitment at local, national, and international level. By valuing and protecting the cultural diversity embodied by the tribal population, society can build a more equitable and harmonious world. That's all, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sanjay Kumar, sir. Thank you very much for presentation. Next, सर 8 नंबर if anyone to presentation, यदि किसी 8 को नंबर presentation 8 करना नंबर है, सर 8 सर नंबर।
जी परमानंद पाटीदार। परमानंद सर, प्लीज स्टार्ट सर। जी सर, धन्यवाद। आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय और समिति के सभी को धन्यवाद, मुझे वाचक के लिए बुलाया गया। मैं डॉक्टर परमानंद पाटीदार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, माता जीजाबाई शासकीय स्वशा शिक्षा महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा शोध का विषय है लोक परंपराएं और मौखिक साहित्य। तो परंपराएं जो होती हैं उसमें मेरा वाचन है। लोक परंपराएं और मौखिक साहित्य वे परंपराएं हैं जिनमें ज्ञान, कहानियां, गीतों और रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी बिना लिखे हुए मौखिक रूप से साझा किया जाता है। यह एक संस्कृति की पहचान, सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसमें लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोकगीत, लोक नाट्य, पहेलियां और कहावतें शामिल हैं जो सरल, संवादात्मक और लयबद्ध शैली में सुनाई जाती हैं। लोक परंपराएं किसी समाज के ज्ञान, विश्वासों और जीवन जीने के तरीकों का एक समूह है जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहे हैं। इनमें सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, पारिवारिक रिश्ते और आचरण के नियम शामिल होते हैं। बच्चों के पालन पोषण, व्यावसायिक कौशल सिखाने और न्याय प्रणाली के बारे में ज्ञान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौखिक जो साहित्य होता है उसको हम जो परिभाषित करते हैं, यह साहित्य का वह रूप है जो लिखित के बजाय बोली या गाई जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही हस्तांतरित होती है। इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि यह मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का एक साधन है। इसमें सरल, संवादात्मकता और लयबद्ध शैली का प्रयोग होता है। मौखिक साहित्य के कई प्रकार होते हैं, जैसे लोकगीत है, श्रम गीत जैसे चक्की पीसते हुए, धान काटते हुए और अन्य भावनाएं व्यक्त करने वाले गीत जो होते हैं वो लोकगीत कहलाते हैं। लोक गाथा रहती है, लंबे आख्यान गीत जिसमें प्रबंध, योजना और रस दोनों प्रमुख होते हैं। लोक कथा होती है, गद्यात्मक कहानियां जो घटना प्रधान होती हैं। लोक नाट्य होते हैं, जन सुलभ रंगमंच पर आधारित स्वांग एवं लीलाएं। इसका जो महत्व है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना। यह सांस्कृतिक विरासत को जीवित और अक्षुण्ण रखने का एक शक्तिशाली साधन है। सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। यह समाज के मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें ज्ञान का हस्तांतरण होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और कौशल हस्तांतरित करने का एक तरीका है। जिस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित करते हैं। मेरे शोध का निष्कर्ष यदि मैं कहूँ तो लोक परंपराएं और मौखिक साहित्य का निष्कर्ष यह है कि ये समाज के मूल मूल्यों, ज्ञान और इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करने का एक जीवित और गतिशील माध्यम है। ये सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हैं, सामाजिक मानदंडों को स्थापित करते हैं और मनोरंजन प्रदान करते हैं, साथ ही लिखित साहित्य के लिए आधार भी बनाते हैं। मुझे शोध भाषण के लिए समय दिया गया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Good presentation, Paramanand sir. थैंक यू सर। यदि और कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो अपना कैन आई प्रेजेंट? जिसका लिस्ट में नाम हो वो अपना प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। सर प्रदीप कुमार राज, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। आपका सीरियल नंबर सर 60। ओके सर। ओके सर, मैं प्रदीप कुमार राज, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा जो विषय है थारू जनजाति शैक्षिक चुनौतियां, लखीमपुर खीरी स्थित विकास खंड पलिया कला। थारू जनजाति पे है। थारू जनजाति भारत और नेपाल की सीमा तराई क्षेत्र की एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है जिसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं।
यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, महाराजगंज और उत्तराखंड राज्य, बिहार तथा नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र के जिलों में निवास करती है। लखीमपुर खीरी जिले का पलिया विकास खंड थारू समुदाय जिले का एक प्रमुख केंद्र है, जो दुधवा नेशनल पार्क के निकट स्थित है और नेपाल देश की सीमा से सटा है। यहाँ थारू गांवों की संख्या लगभग 47 है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 35,949 है। थारू लोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प, लोक नृत्य और पारंपरिक कृषि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आधुनिक विकास की दौड़ में वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें से शैक्षिक पिछड़ापन प्रमुख है, जो सामाजिक आर्थिक असमानता को और गहरा करता है। उत्तर प्रदेश में जनजाति साक्षरता दर 55.7% है, जो राज्य की औसत 67.7% से काफी कम है। पुरुषों में यह 67.1% है, जबकि महिलाओं में मात्र 43.7%। पलिया विकास खंड में स्थित और भी चिंताजनक है, जहां भौगोलिक अलगाव, आर्थिक मजबूरियां और सांस्कृतिक बाधाएं शिक्षा को बाधित करती हैं। थारू जनजाति का सामान्य परिचय और पलिया कला विकास खंड का संदर्भ। थारू जनजाति को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे तराई के जंगलों और नदियों के किनारे रहते हैं, जहां कृषि, पशुपालन और वन उत्पादन संग्रह उनकी मुख्य आजीविका है। पलिया विकास खंड, जो लखीमपुर खीरी के उत्तरी हिस्सा है, थारू संस्कृति का हृदय स्थल है। यहाँ के गांवों जैसे बेला, परसुआ, खजरिया, सोनहा और सुंडा आदि थारू बाहुल्य हैं। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 के बाद थारू समुदाय वन अधिकारों और विस्थापन की चुनौतियों से जूझ रहा है, जो उनकी शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। 2025 तक भी पलिया विकास खंड में सड़कें, कनेक्टिविटी, बाढ़ प्रभाव और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण विकास कार्य धीमे हैं। हाल ही के वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू सशक्तिकरण योजनाओं जैसे 371 समूह सहायता समूहों का गठन की शुरुआत हुई, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। शैक्षिक चुनौतियां, विस्तृत विश्लेषण। पलिया विकासखंड में थारू बच्चों की शिक्षा कई बहुआयामी चुनौतियों से ग्रस्त है। ये चुनौतियां न केवल सांस्कृतिक हैं, बल्कि आर्थिक, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कारकों से जुड़ी है। की चुनौतियों का विस्तृत वर्णन है। भौगोलिक अलगाव और बुनियादी ढांचे की कमी। पलिया विकासखंड के थारू गांव जंगलों और नदियों से घिरे हैं, जहां सड़कें और परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जोखिम बढ़ाता है। मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा भी असंभव है। वर्ष 2022 के एक सर्वेक्षण में पाया गया, पलिया विकासखंड के कई गांवों में प्राथमिक स्कूलों तक पहुंचने के लिए 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। स्कूल भवनों की कमी गंभीर है। कई स्कूल अस्थायी झोपड़ियों में चलते हैं। बिजली, शौचालय, पानी का प्रबंध नहीं है। लखीमपुर खीरी के थारू क्षेत्र की 60% से अधिक स्कूलों में एक ही कक्षा का उपयोग होता है, जो बहुस्तरीय शिक्षा को असंभव बनाता है। भाषाई और सांस्कृतिक चुनौतियां। थारू भाषा राना थारू उपभाषा उनकी मातृभाषा है, लेकिन स्कूलों में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा होती है। इससे भाषाई संक्रमण होता है और बच्चे अब धारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। एक शोध में 2020 में पाया गया कि लखीमपुर खीरी के थारू समुदाय में हिंदी प्रधान शिक्षा ने उनकी मातृभाषा के उपयोग को 50% से कम कर दिया। इसके अलावा सांस्कृतिक अलगाव, जैसे पारंपरिक त्योहार, मगही, होली में भागीदारी भी स्कूल उपस्थिति को प्रभावित करता है। पलिया के एकल विद्यालय जैसे निजी प्रयासों में हिंदू प्रार्थनाओं पर जोर देने से थारू बच्चों को कठिनाई होती है, जिसके कारण इस बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा की कमी और गुणवत्ता की चुनौतियां। पलिया विकासखंड में शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है। कई स्कूलों में
एक शिक्षक 50-50 बच्चों को पढ़ाता है। दूरस्थ के कारण शिक्षक नियमित स्कूल नहीं जाते हैं। निजी स्कूलों में अधिक फीस लेने के कारण बच्चे बीच सत्र में ही स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षकों को मान कम मानदेय निजी स्कूलों में मिलता है, इस कारण गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती है। 2019 में एक शोध में पाया गया कि थारू बच्चों के स्वास्थ्य, कुपोषण, एनीमिया भी सीखने की क्षमता को कमजोर करता है। लड़कियों के अलग शौचालय की कमी स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण है। लिंग असमानता और सामाजिक पूर्वाग्रह की चुनौतियां। थारू समाज में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर 23% से अधिक है। पलिया विकासखंड के गांव में लड़कियां जातिगत भेद के कारण हतोत्साहित होती हैं, जिससे स्कूल जाना बंद कर देती। हाल के वर्षों में धर्मांतरण, ईसाई मिशनरियां या उनके प्रयासों भाई कहीं से जहां से भी भाई साहब आवाज आ रही है उसको कृपया बंद कराने का कष्ट करें, क्योंकि सोच सुनने में समस्या हो रही है। भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इस समय ट्रेन में हूँ सर, बिहार से जो है मैं यूपी के लिए जा रहा हूँ, इस कारण सर थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर मैंने कहा पढ़ दिया जाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। आर्थिक मजबूरियां और बाल श्रम। थारू परिवार मुख्य रूप से गरीब किसान या मजदूर है, जहां दैनिक मजदूरी, कृषि या वन कार्य परिवार की आय का आधार है। बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों या घरेलू कामों में लगाना आम है। पलिया विकासखंड में थारू पुरुषों में शराबखोरी की समस्या है। परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब रहती है। थारू समुदाय में स्कूल छोड़ने की दर 40 से 50% है, क्योंकि माता पिता के फजूली खर्चे मानते हैं। लड़कियों की स्थिति और दयनीय है, वे घरेलू कामों या जल्दी शादी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। 2023 की एक अध्ययन में पाया गया कि पलिया के गांव में 74% लड़कियां माध्यमिक स्तर तक नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाती। सरकारी प्रयास और उनकी सीमाएं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 और 15(4) के तहत थारू समुदाय की शैक्षिक हितों की रक्षा का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू महाविद्यालय लखीमपुर खीरी स्थापित किया है और वन विभाग के होम स्टे योजना के तहत गांवों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। 2025 में थारू हस्तशिल्प कंपनी की स्थापना से आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य है, जो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि ये प्रयास सीमित है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से थारू समुदाय को न्यूनतम लाभ मिला है। पलिया में स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए मिड डे मील और छात्रवृत्ति योजनाएं, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है। थारू समुदाय की शैक्षिक विकास क्षेत्र निष्कर्ष और सुझाव। बुनियादी ढांचे का विकास, गांव में आवासीय स्कूलों की स्थापना, सड़कें और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना, परिवहन सुविधा बेहतर करना, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में लगने वाला समय कम करना, शौचालय, पेयजल, पाठ्य सामग्री, पर्याप्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपलब्ध कराना, भाषाई समावेश, थारू भाषा को माध्यमिक शिक्षा में शामिल करना, द्विभाषी शिक्षकों की भर्ती करना, भाषा अनुकूल पढ़ाई। प्रारंभ में थारू भाषा मात्र हिंदी और भाषा थैंक यू सर। सर लेफ्ट हो गए हैं। Can I speak, sir? Yes, yes. If anyone to presentation, यदि Yeah, I आप want. प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो अपना सीरियल नंबर या नाम बता के प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जिसका लिस्ट में नाम भी ना हो तो अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट हो तो। So can I speak my 66? 66 Dr. Ritabrata Malik. Okay, sir. Please start. Yeah. Only 2 minutes, sir. Yeah, sure. Thank you for giving me this opportunity. My name is Dr. Ritabrata Malik. I am associate professor in Department of Environmental Science, MIT School of Life Science, MIT University, Madhya Pradesh. Topic of my paper is natural resource management and biodiversity.
As the main theme of the conference is concerned, the tribal development, the natural resource management and biodiversity are closely linked with the local people and the forest adjacent people. Natural resource management is the management of different types of natural resource, starting from air, water, soil, and other mineral resources, everything. And on the other hand, biodiversity is the overall biological diversity, which includes the plants, animals, and the microbes. Basically, if we see that overall in our country and different parts of our country, for the development of different types of projects, different types of globalization, industrialization, we have already damaged huge amount of natural resource, knowingly or unknowingly. If I take the example of particularly the northeast, or the different types of national parks, sanctuaries, already their encroachment of the different types of industrial projects are damaging the scenario. As a result, what we see that the man-animal conflict are increasing day by day. Animals are finding it's hard to live in the forest as the forest area is diminishing. If we take the example of Delhi, it is NCR is expanding. Where I live is at Gwalior, area is expanding. That people are trying to live in these rural areas right now, and there is no rural area, and the forests are being cut. So, with the sake of the natural resource management, if we go for sustainable socio-economic development and an integrated approach, only then we can conserve. Biodiversity is at stake. Everywhere we are seeing that the forests are being deforested, the soil quality is damaging. As we are clearing the forest, the holding capacity of the soil is going day by day. As a result, there are different types of minerals are going back. And as we are spraying more pesticide, the pesticide are going into the plants and then into the soil and up to the water. So groundwater is already in stake. Throughout the world, there is a problem of this groundwater, as every natural resource are going to be finished. We, for short-term benefit, we collect different types of minerals by mining process. But as a result, for long-term thinking, if we see this, the minings are killing environment, damaging environment a lot. That for mining of iron, mining of coal, we are doing blasting, which is causing huge amount of dust, and that is finally adding to the air pollution. Simultaneously, different and these forest areas are being occupied by different tribals, different cave dwellers, and different poor people. But they are using the water source coming from that particular mountain, which is being damaged. If we take the example of North Odisha, in Keonjhar district, there is a huge problem along with the iron mining. We are collecting the natural resource by doing different process, but on that process, we are also damaging their livelihood. The water being polluted, different types of minerals are being lost, and again the soil quality is being damaged. So what we see that if we are not very much keen to integrated approach towards natural resource management with the help of joint forest management, sustainable forest management, and local management with the help of local people, local administration, and all together, otherwise we will be not able to conserve the biodiversity. And in near future, it will be a great danger for not only the different types of wild animals or domestic animals, but for human also to survive in this particular world. So in conclusion, I can say that sustainable socio-economic management is only possible only through proper integrated approach in natural resource management, and along with the biodiversity conservation, be it in local level, micro level, or macro level, or in a country level. Thank you. Thank you, sir. Thank Dr. Ravi Bhaskar Malik, sir. Good presentation. If any want to presentation. यदि और कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है नहीं तो फिर हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप में से कोई प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो मेरे पास जो लिस्ट था उनमें से मैंने सभी का नाम अनाउंस किया है। Sir, I am ready to give the presentation, sir. क्या नाम सर आपका? My name is Professor Devanand Chavan, Pune, MIT College, Pune. ओके सर, अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं है सर? नहीं सर, मेरा नाम, लेकिन मैंने एनरोल किया है सर।
ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज स्टार्ट सर, ओनली 3 मिनट्स सर, आप अपना डिटेल Yes, भेज दीजिएगा। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. प्लीज प्रेजेंट सर। देवानंद सर, आपका वॉइस बंद है। Sir. Yes, sir. Sir, 2 minutes. Huh? Sir, 2 minutes. Good evening, everyone. My name is Professor Devananda Chavan, MIT College, Pune. Sir, today my topic name is Digital Inclusion and Technology for the Tribal Development of Comprehensive Study. Sir, actually, the relevance is relevant topic. Just I'm going to focus technology for the underserved, for the indigenous communities and sustainable technology. The human rights can be inspected there. Good matching for the tribal development using the digital technologies. Sir, actually, the particular this topic just I am concentrate about digital government forecasting social cohesion and reducing of inequality. The particularly just I am going to tell about that. So many peoples, though are 2025 conferences in the Singapore, and there the working groups of specially digital diversities can be using the tribal developments societies very suitable if your research touches of communities, media's access policies, community technologies can be giving. Sir, the particular just I'm going to tell about that the always check the current call for the papers and conferences website deadlines can be changes there. The publications have it so many related can be available for the digital inclusions and technologies for the tribal development comprehensive studies there. Sir, the particular digital inclusions can be emerges as a critical component can be socio-economical development across the world for the tribal communities who often remain the geographical isolated social. The marginality technology provides the underpieces pathway for the cultural preservations. These papers explore the global landscapes for the digital inclusion among the indigenous and tribal populations. These particular tribal populations can be identify the challenges and opportunities, analyze the successful case studies, propose the multidimensional framework for the sustainable tribal development through the technology. The studies integrated of socio-technology, preservative, human-centric design principles and policy level of interventions ensure the equitability, access, digital skills, and meaningful participations of the tribal communities in the digital technology. So just I'm going to tell about that. These so many researchers can be researching particular this topic to there. So the specific just I'm focused on digital technologies have a transferred modern societies and reshaping communication governs business, learning, and healthcare of the tribal societies. The refer to the globally and indigenous peoples can be First Nations, Adivasis, the native tribals are the particular exclusions from the digital transformation due to the historical remote geography, low literacy, and infrastructure gaps. So just digital inclusion involves more than just providing the internet or the devices, it including digital literacy to culturally relevant contain affordable access and active participations in digital ecosystems there. So that now recently the new technologies when the implemented sensitivity and inclusives can be uplifting tribal communities by improving socio-economic status, access to essential services, preservation of cultural identity of the tribal communities.
So particularly, just I'm said that the global context of tribal communities and development indicator barrier of digital accesses, technological interventions, health, governance, livelihood, culture, environmental management is very important. So case studies from the India, Australia, Canada, Brazil, and Africa, these countries are totally concentrate particularly these tribal communities for the development of the particular societies. The proposed framework of the sustainable tribal digital development, the particularly this I'm concluding there, the understanding digital inclusions. The digital inclusion refer to that all individuals, including the marginable communities, can be effectively use information communication technology. It consists of the reliability, electricity, mobile network, broadcast, 5G connectivity, affordable devices. It's very important for that. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you for hearing to me, sir. Thank you, sir. Thank you very much for good presentation. Thank you, sir. If any want to presentation. और कोई presentation लेना चाहता है तो ओके, थैंक यू। ये सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोगों ने प्रेजेंटेशन किया। मैं आप सभी का धन्यवाद एवं आभार करता हूँ कि आप सभी इस हमारे वनडे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े और अभी लगभग 6 बजने वाले हैं। 6 बजे तक आप सभी हमसे जुड़े और इसमें पेपर प्रेजेंटेशन किए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आज के हमारे स्पीकर्स थे, जो हमारा फर्स्ट गेस्ट लेक्चर हुआ, उनका ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने ट्राइबल डेवलपमेंट इशू एंड चैलेंजेस विषय पे आप सभी का उद्बोधन अच्छा था। और जो आज के हमारे जो पेपर्स थे उनमें भी अच्छे जनजातीय विकास पर पेपर्स आए हैं। उसमें से कुछ हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 3 बेस्ट प्रेजेंटेशंस का भी अवार्ड देने वाले हैं। उसमें हमने अभी मेरे पास लिस्ट आने वाला है, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा। The conference Institute of Social Science and Management Study, Janjatiya Shodh Peeth Social Science and Management Welfare Association and Radiant Group of Institution जबलपुर के तत्वाधान में संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें 70+ पेपर्स हमारे पास प्राप्त हुए हैं। अभी इनमें से बहुत सी पेपर्स फुल पेपर्स नहीं आए हैं, बाकी अच्छे हमारे पास पेपर्स आए हैं। उसको हमें नेशनल जर्नल में भी पब्लिश करने वाले हैं। अगर आप में से किसी का लिस्ट में नेम करेक्शन, कॉलेज नेम करेक्शन और टाइटल में कोई करेक्शन है तो वो आज या कल तक ईमेल के माध्यम से उसे हमारे मेल पे सही भेज सकते हैं, जिससे सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेलिंग करेक्शंस तो आज कल हमें भेज सकते हैं, कल शाम तक उसको सर्टिफिकेट हम 2 डेज में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। और आप में से किसी ने फुल पेपर नहीं भेजा है तो 30 नवंबर तक अपना फुल पेपर भेज सकते हैं। उसको हम नेशनल
जर्नल पीयर रिव्यूड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल जो करने वाले हैं, उसका हार्ड कॉपी भी आपको भेजा जाएगा। आप सभी को 2 डेज में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 मंथ में आपको पब्लिकेशन का हार्ड कॉपी मिल जाएगा। 30 तारीख तक आप सभी अपना फुल पेपर भेज सकते हैं। हम फुल पेपर्स का भी बेस्ट अवार्ड देने वाले हैं, अच्छे शोध पत्र रहेंगे। अभी मेरे पास आज का जो 3 बेस्ट प्रेजेंटेशन का नेम जैसे ही आता है तो मैं अनाउंस करता हूँ। जब तक मैं कुछ लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लूंगा कि आज का ये हमारा कॉन्फ्रेंस कैसा था और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते थे। Yes, if anyone to feedback, यदि कोई आप में से फीडबैक देना चाहता है तो अपना माइक चालू करके अपना फीडबैक दे सकता है। तो इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। So, hello. Yes. Namaste, sir. It was a great opportunity that हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और इतनी दूर बैठे बैठे घर के सारे काम करते हुए ये सब हम कर पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया और वाकई में सेमिनार वाज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you very much. Sir, good evening. Thank you for giving us such a very great opportunity to us. सर बहुत से जैसे आपको एकदम रेगुलरली ऐसे ही आप कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कीजिए सर, जैसे आपने किया। हमें बहुत अच्छा लगा सर, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हो। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक के ऊपर हमें बोलने का भी चांस मिलता है, कुछ टॉपिक सर्च करने को भी हमें उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे एसोसिएशन सर पर मंथ अभी तो वीकली कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं हम। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस भी रहेगा नेक्स्ट संडे, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस पर हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके बाद भी हमारा परवी कॉन्फ्रेंस रहता है। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहें, आपको उसका भी डिटेल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। And if anyone want to feedback, okay, thank you। आज का जो हमारा बेस्ट प्रेजेंटेशन का था वो लिस्ट मेरे पास आ गया है, इसको मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ। इसके बाद मैं अपना सेशन को यहीं पे समाप्त करूंगा।
हेलो। थैंक यू। मेरे पास ये लिस्ट आ गया है आज का जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है। आज का जो फर्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन है डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, सीरियल नंबर 16 है। इसका रेफरेंस नंबर 116 है। जो आज का फर्स्ट हमारे एक्सपर्ट ने नाम भेजा है, और जो आज का हमारा सेकंड बेस्ट प्रेजेंटेशन है सीरियल नंबर 45 मिस सवरूप ए वाघमारे। और जो आज का जो हमारा थर्ड बेस्ट प्रेजेंटेशन है डॉक्टर लाभ्या प्रभास, सीरियल नंबर 3 डॉक्टर लाभ्या प्रभास। आप सभी को बधाई। Thank you, sir. Thank you very much for आप में से giving us. इसमें हम 3 बेस्ट पेपर का भी अवार्ड देने वाले हैं। तो आप सभी 30 तारीख के पहले अपना फुल पेपर भेज सकते हैं। उसको हम पब्लिश भी करेंगे और उसमें हम बेस्ट पेपर का अवार्ड भी देंगे। आप में से किसी ने पीपीटी नहीं भेजा है तो हमारे मेल पे पीपीटी भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी जुड़े हमारे इस कॉन्फ्रेंस में, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सर जी, सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चंस होगा तो आप हमारे मेल पे भेज सकते हैं। और कुछ टाइटल करेक्शन, स्पेलिंग प्रॉब्लम कल 17-18 तारीख को आपको सर्टिफिकेट व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।